कई बार थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम कुछ ऑफर्स और कुछ कोइंसिडेंट पर हद से ज्यादा भरोसा करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और स्कैमस्टर्स के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आज मैं आपको ऐसी एक क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बुनी हुई ठगों की रोमांच, धोखे और ड्रामे से भरी आमची मुंबई के गिरोह के बारे में बताऊंगा, जिनकी क्रिमिनल क्रिएटिव थिंकिंग और स्कैम के टेक्निक के चर्चे देश विदेश में वायरल हो रहे हैं। मुंबई में स्थित माटुंगा पुलिस के लिए दिन रोज की तरह था, लेकिन जो मामला उनके पास आया था वो शायद आम दिनों जैसा नहीं बल्कि बेहद अलग था। दरअसल माटुंगा में रहने वाले एक म्यूजिक टीचर ने उसके साथ बिटकॉइन के नाम पर हुई 2.43 लाख रुपए का ठगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए इसकी जांच शुरू कर दी थी। हालांकि इसे सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वही राह होती है। और वो दिन भी आ गया जब पुलिस ने कई महीनों की मेहनत के बाद मोहम्मद जाबिर नाम के 31 वर्षीय शख्स को धर दबोचा। बता दें कि मोहम्मद जाबिर वही ठग था जो लोगों को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर लाखों के ही नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगा रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे परत दर परत इस धोखाधड़ी से जुड़े सभी राज सामने आने लगे। पुलिस को छानबीन से पता चला कि बिटकॉइन के नाम से एक गिरोह लोगों को ठग रहा था और इस तरह से उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल 250 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हुए 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। इस तरह से पैसों के हेरफेर को अंजाम देने के लिए गिरोह ने अलग अलग बैंकों में 11 अकाउंट खुलवाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह से ठगों का यह गिरोह लोगों को अपना निशाना बनाता था। तो पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि गिरोह में शामिल जाबिर हर बार करीब 1 करोड़ मैसेज की लिमिट वाला बल्क एसएमएस सर्विस खरीदता था। इसकी मदद से वो एक साथ लाखों लोगों को मैसेज कर आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ लोगों को अपने ऐप आरोहस और एग्रो पीआरओ के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए कहता था। दरअसल यह गिरोह पहले लोगों को एक मैसेज भेजता था। मैसेज में बताया जाता था कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो 200% तक का मुनाफा कमा पाएंगे। इसके लिए ये मैसेज के साथ एक ऐप लिंक भी भेजते थे। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स को जोड़ा जाता था। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो खुद लोगों को पोर्टफोलियो मैनिपुलेट करके कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट दिखाता था। और एक पॉइंट पर जब गैंग को लगे कि कलेक्टिवली बड़ा अमाउंट आ जाता है तो ऑल ऑफ सडन इस एप्लीकेशन को हमेशा के लिए डिलीट कर देते थे। कुछ दिन शांत रहने के बाद एक गैंग फिर नए नाम वाली सिमिलर एप्लीकेशन बनाकर उसकी लिंक बल्क एसएमएस से शेयर करके बेचारे मिडिल क्लास इनोसेंट लोगों को टारगेट करती थी। इस एसएमएस कम क्रिप्टो स्कैम की चैन शायद और भी लंबी चलती, लेकिन ऐन मौके पर माटुंगा पुलिस ने विक्टिम्स के बैंक अकाउंट्स के थ्रू डिडक्ट हुए मनी को फॉलो करके इस पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए माटुंगा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक चौहान ने बताया कि बैंक खातों में से एक के स्टेटमेंट से पता चलता है कि उसने अक्टूबर और फरवरी के बीच बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को धोखा देकर 200 करोड़ रुपए कमाए। जांच में यह भी पता चला कि यह गैंग जुलाई 2021 से सक्रिय था। होपफुली लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद विक्टिम को उनके पैसे मिल जाएंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से समझिए और सतर्क हो जाइए। अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर किसी भी तरह का कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ठग का शिकार बनने जा रहे हैं। इस तरह से कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी से लेकर एक्सचेंज के रूप में खुद को पेश करने वाले किसी भी शख्स की पूरी तरह से जांच किए बिना कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को इन स्कैमस्टर्स को देने से बचिए। सिर्फ कॉल से नहीं, लेकिन व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या मेल से आने वाली किसी भी प्रकार की क्विक प्रॉफिट स्कीम से आप जितना दूर रहेंगे, आप फाइनेंशियली उतने ही सेफ रहेंगे। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही स्कैम और स्कैमर्स की क्राइम कुंडली से जुड़ी खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
गाईस, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय। आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील। तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ॲक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत। सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले। अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे। बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते। यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ॲप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे। आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे। नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे। हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं, जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते। फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे, कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत। सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनू शकते। नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्सपेक्षाही जास्त आहे। याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं। सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हेनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं। यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंटसाठी करता येऊ शकतं। जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे। नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल। एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात। तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे। तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे, पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे। ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ॲग्री करावं लागेल, तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल। येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही। याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल। म्हणून ह्या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही। जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत, कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत। 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ॲप्लिकेशन होतं, पण नंतर नवीन ॲप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले। लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते। जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये
देखील बरेच ॲप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ॲप्लिकेशन होतं जी या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ॲप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. Cryptocurrency market is under broader stress as investors shun riskier assets such as stocks and cryptocurrencies amid an uncertain economic environment. We have invited a special guest, Mr. Raj Kapoor. Every investment has a summer and a winter and an autumn and a spring. Miners have sold 9,500, institutions are selling. But let's look at the other side. If they are selling, somebody is buying. Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin, once said, "If you don't believe it or don't get it, I don't have the time to convince you." Looks like the same is going to be true for Indian government, as the stance that government has taken so far is very unwelcoming. And what Satoshi Nakamoto said looks like the exchanges are following the same path but omitting the option out to convince the government further and shifting their bases to other countries. That's something to think about. Hello and welcome to the viewers of Crypto TV. I am your crypto host Parvati Nirban, and today we are having a guest on the show of Crypto Masters, who is closely connected to exchanges in India and is a founder of a crypto payment gateway company known as BitBatua. Hello and welcome to our today's episode of Crypto Master, Mr. Lakshman. How are you doing? I'm doing well. Thank you, Parvati, for having me here. So let's begin, right? Sure. As we all know, the tussle that is going on due to the regulatory issue that the crypto world is facing in India, and additionally the exchanges are having a very tough time when the market is bearish. We all know the shadow ban and the difficulty that all of us are facing. So P2P is the only solution left for us? Yes, I think primarily this is the only solution and option left for end consumers and exchanges to accept UPI and give the crypto to users. So P2P is the only option. Okay. And you know that the ease of UPI based payment transfer is not there in P2P transfer, right? Yet people are willing to do it, as currently there is no other option available. What do you have to say about that? They can actually make UPI transaction, but not to the exchange, exchange UPI. So in the P2P, what happens? The people can make UPI to the users, the UPI payment, right? Right. They can still use the UPI. Right. So because you are a payment gateway in yourself, so how do you actually explain this situation and how can we better this? No, we are not a P2P, exchange provider. We are helping businesses and individuals, getting paid in cryptocurrencies. But I'm explaining you situation, based on the regulations issues and the things coming from the government side. Right. The cryptocurrency exchanges in India, I think they are exploring P2P options to allow their users to buy cryptocurrencies. Right. So how exactly BitBatua is functioning? Like, is it the same how every other P2P transfer is happening, or is there any difference, or is there any ease of transfer in comparison to the exchanges, what they are offering with their own, wallets and with their own P2P transfers? Right. So the first difference with, in BitBatua is we are not allowing people to buy cryptocurrency. So that means we don't have a UPI support as of now.
people can use our gateway to accept payment in cryptocurrency. So it will be crypto to crypto, not fiat Crypto to to crypto. Exactly. So the fiat option is not available with us. The region is saying government is not allowing, the RBI is not allowing. So what is your stance and what is your take in the same case? Are you also considering to move out or shift base in case the regulatory, doesn't come in the way which is, supporting crypto exchanges or payment gateways at the same time? So yes, until the regulators will be going out, right? We are also exploring options of setting up a base in different country. I would say Dubai. We're thinking of Dubai. So Okay. let's see. Okay. So if the regulatories are not actually supporting, so we see a lot of crypto-based company going out of India, right? That is the future. Right? Exactly. So the clarity is not for startups like us. We want to register this platform in India, Mhm. but there are no regulations how we can get the license for this crypto payment gateway. But I think we hopefully we can get the same from other countries like Dubai. Okay, so as you said that P2P transfer is the only option as of now, and we are waiting for the regulatories to, come on board and see what happens. But at the same time, right now, because this is the only option left, how safe and secure is this option? Like, how safe is the payment transfer that happens? Like, because people are using, these URLs and then they are transferring. And that's how then the money is converted into the crypto, whatever the crypto coin is available in the particular exchange. So how safe, because it is via happening, it's not directly transferring. So there are a lot of issues already when it comes to discomfort. But there is another worry when it comes to safety and security of the transfer that is happening. So what do you have to say about that? Right. So let's break this, this answer into two parts. The first answer is this: the people are, making UPI transaction to the other person, right? So Right. that is secure, which is happening on a banking network. Right. And the another person that has to, is supposed to send a crypto back to the person who made a UPI is also secure because that will be happening on a blockchain network. But this P2P is not safe because there is no guarantee, right? There is a breach of trust. There may be a breach of trust. Let's say I made a UPI, but what if the person in front of me is not gonna send me cryptocurrency? So in this case, I think exchanges will also not do much help in this. So this is not safe, I would say. Okay. So how people are planning to deal with this issue in case the regulatory comes otherwise? See, the thing is, people, they will be using P2P as long as, there will be, the issues from government side coming from, like regarding the regulatory and taxes. Right. People will be using, P2P transactions, but they are not safe, Yeah. right? Right. See, why am I asking this question is because, see, end of the day, there are people who have already invested in crypto. There are people whose money is already lying because this suddenly happened. And for this entire situation to shift and to become this to be absolutely prohibited, like you cannot do any transaction, that is a change of scenario. So if that happens, fine, we will see if that is going to happen. But at present, when the things are already in between, then how people will deal with this kind of risk, which is already involved in this transfer, right? Yes, I have identified two kind of people. The one who is holding cryptocurrencies like Luna and Dogecoins. They're not sure about what is the future of these currencies, right? So they are going to sell. They are finding different alternatives to sell anyhow. And at the other end, the people who are really curious about buying cryptocurrencies, maybe because of the FOMO, right? They are going to buy cryptocurrencies. Let's say, I just need to
buy it for 100 rupees or buy it for 1,000 rupees, try it out and explore this option, right? So they are buying cryptocurrency using P2P method. But I believe the people who are real investor are not going to use P2P. They are going to hold the cryptocurrencies and they will be waiting for the government. They will be waiting for the regulators to come out. If they have to move the funds, then I think they will be using the foreign exchanges to move the cryptocurrencies. Okay. They will always have option to withdraw funds in foreign currency, right? So foreign exchanges, they are they have the withdrawals enabled for foreign currencies. Then that is the loss of India in such scenario, actually. Exactly. The India, the income tax department will be definitely, they have put a 30% tax, but they are not sure about it. This is a loss of Indian income tax, right? Yes, yes. So, as we all know that 1% TDS is already levied at source and which is having a lot of technical challenges. So, if the exchanges have to incorporate in case this 1% TDS deduction at source, in case the regulatory come, in the favor of exchanges, but still these 1% TDS is a big problem because they need to rebuild or reform the current infrastructure as it will not comply with 1% TDS, isn't it? What do you have to say about that? Yes, exactly. They are facing challenges because they have built their system in such a way, they have architecture of their, applications a different way. Now, in order to incorporate the 1% TDS, they have to, modify the existing application layer and the architecture of their, entire system. So that is a big challenge for them from moving from one system to the another one. Right. But this 1% TDS, I think it is going to be mandatory from the government side. They are not going to put any relaxation on it. So the applications like cryptocurrency exchanges and I think the platform like us, Crypto Payment Gateway, they are going to implement it. But I believe that this will not go far. Governments, they have to sit together with the crypto players, crypto industry, and then come out with another solution. I think there could be a solution. But I want to cut you here. You know about the Bangalore meeting that happened. It is for the same reason that they wanted to actually discuss and come out with a plan, but actually nothing came out of that whole discussion. And government was disappointed. The exchanges people were very disappointed. Regulatory people, consultants, whoever was there, everybody was technically disappointed at the end of it. So it's not looking like the things are actually shaping in the right way, right? No, see, the thing is, when industry is sitting with government, right, the only agenda of putting a TDS is to trace the movement of money, right? That can be achieved if they sit together with the industry players. They will we can trace the Bitcoin, we can trace any cryptocurrency, right? The thing is, they will have to, listen to the industry and then bring a mutual solution which can benefit the industry and government as well. So the movement of money can be traced, right, without TDS. TDS, I think, is not mandatory in that case. So they will have to come up with a solution, the mutual solution. So you think they have applied 1% TDS only to track the money? Exactly. So TDS is to trace the movement of funds. Okay, so despite the regulatory issue, more and more exchanges are still coming alive, and now the economy is moving towards decentralized infrastructure, like you just mentioned about the traceability, so which is centralization, and we are talking about decentralization. Exchanges have to list various crypto tokens, currencies in the form, and also they have to work on the payment gateways. So you do exchange development, you do coin development. So what are the challenges you face in this case, and what is the role of BitBatwa in that? Sure. The problem that that is coming in front of us is I think over the period of 6 months, we are seeing there is a new token, new blockchain in the industry. Let's take an example of Ethereum, Polygon, and similar blockchains which runs on EVM, right? So they support Solidity as a programming language for smart contracts to develop the tokens, right?
So we have the resources in Solidity. Now, let's say the new blockchain, which is Solana, right, that doesn't support the Solidity. So Right. in that case, we have a challenge of, switching from one technology to another technology. Hiring resources for a different technology is again a challenge. So this is, as the industry grows, right, the technology is also changing. So this is a change from switching from one technology to another tech stack. So this is a bigger challenge, but I think we will have to keep moving. So that is the issue of interoperability, if I understand it correctly, right? Right. Which itself is a big issue, right? Exactly. And so the problems will arise, like auditing a smart contract written in Solidity, is something we have resources, but auditing a smart contract which was written in written for a blockchain, a Solana blockchain, right, Right. would be difficult for the resources who have been working in Solidity. So every time we have to look for new resources, they have experience, and that creates the demand in this, industry, and which again increase the cost. Understood. So I have, because you talked about the interoperability and how the difficulty from moving from one chain to another chain and the functioning of it is, and the auditing of these smart contracts, how difficult it is, you just explained. The vulnerability also comes at the same time in these junctions of interoperability, right? And the hacks actually are happening in such spaces. We all know about the hacks that happened, and the number of hacks happened in 2022 is pretty high, and the amount that has been stolen is also pretty high compared to 2021. So I have a list of hacks that happened when the exchange wallet was hacked. For example, Ronin network hack that happened very recently, then Poly network last year, then KuCoin hack happened in 2020. So which means the exchange wallets in this case, particularly, like if we start talking about the exchange, so exchange wallets are also very vulnerable. So if we discuss this in parts, the first part is how vulnerable is this and how to secure the exchange wallets. Like to start with wallets, and then we can talk about the chains, because there are Right. various hacks happened at the chain level and then happened at the exchange level. Right. So there are, two types of exchanges: the centralized exchanges and decentralized exchanges. Right. So for the centralized exchanges, their responsibilities is to, make the wallets secure, right? So they also need to secure the infrastructure, whereby they also need to educate their customer. However, we have seen that these exchanges, they have, different level of securities implemented. For example, two-factor authentication, right? When user withdraw the funds, they need to provide the OTP. So these kind of security layers they already built, but we need to educate the users more towards it. And the centralized exchanges, they have to secure the wallets, and they have to adopt the cold wallet for this also. While we talk about decentralized exchanges, right, where the end consumers, end users, they store the private keys. They have the 100% ownership of their wallets. They control that, so they have to be very careful, store the keys safely. If they think like they can't store the keys safely, they can opt for a paper wallet, or they can they can also opt for different key recovery services. So the key point is to take care of the private key is the primary, must be the primary goal here. In decentralized exchanges. In decentralized exchanges. So then it becomes the responsibility of the consumer. Right. So what about the responsibility of consumer is high in case of decentralized exchanges. Okay. And when it comes to centralized, because there are two-factor authentication, all these things happen, right? Whether they use email Right. IDs and whether they use numbers, whatever the ways have been developed. So what about that then? Yeah. So these centralized exchanges, they must add more security layers to their infrastructure. Let's say add IP whitelisting, add address whitelisting, right? If we, as a centralized exchange, if we had a feature like where user can whitelist the address, the chances of losing funds will be less.
I would be sending, transfer to the whitelisted address and from a whitelisted IP. So these kind of security layers, centralized exchanges has to explore and How implement. does that function? The whitelisting of these IP, and how So tough IP or easy it is? Right. So whitelisting IP is like, the internet you're using, right? So once you whitelisted your IP, that means the exchange will allow transfer only if that is coming from a whitelisted IP. Okay. If any transfer is coming from a different internet IP, will be, will be banned. It will not be allowed. But isn't it there are risks involved with whitelisting the IP as well? So that is that is why I'm saying while whitelisting the IP, the exchange will ask for a two-factor kind of a SMS, OTP, Right. and all. So Right. once that is done, that means the original user, genuine user, has done that. So next time it actually increase the security. So this is better than what decentralized exchanges are following, is what you're saying, is it? No, I'm not saying, if centralized exchanges add these security layers would be called as better exchanges than the decentralized one. Decentralized More have, secure. have their different benefits. More Right. secured? If What I add time- a point to that, are they more secured? See, the thing is, decentralized exchanges, I would say, are secured, yes, because the user, controls their funds 100%, right? But then there are different challenges in the decentralized exchanges that runs on a smart contract. Then the issues, vulnerabilities from a smart contracts, will become the challenge, right? So the decentralized exchanges have their different challenges. Yes, because see, why am I asking this question is all these hacks that have happened, it's not that in the case of decentralized one, it's only that the key has been shared and then the hack has happened. No, that's not the case, right? The Right, hacks right. have happened otherwise, and that's the reason why I'm asking you this question, because it's not only about, okay, all these users have lost their keys or they have shared the keys and that's why the hack has happened. No, the hacks have happened for other reasons and various reasons, right? So that depends, whether the hack was, the hack happened on a centralized exchange or happened on a DeFi network or DeFi protocol, right? If that happened on a DeFi protocol, then it must be because of vulnerabilities present in the smart contract. Smart contract. Okay. So that is it that might is the be other that point. smart contract, was not audited properly. Okay. It was not securely written. So there are different cases of it. Right. So it's not only the fault lies in the wallet of the decentralized exchanges. It is lying elsewhere, right? Exactly. Okay. Fine. And what are the vulnerabilities in smart contracts? Can you just elaborate few? So there are vulnerabilities like, re-entrancy, denial of service, front running, just to name a few, right? These are all, vulnerabilities which the developer, smart contract developer, has to take care while writing a smart contract. So there are two things that they can primarily do. One is secure writing, Right. second, auditing the smart contract. So, by doing these two things and following all the, best practices, I think is the way forward. Yeah, this was fantastic. So I will end our conversation here because you've already given us so much of pointers about how this can be secured, how the exchanges can do, and yes, we are waiting for the regulatories to happen. Thank you so much for coming on board and giving your time. Thank you once again. Thank you for having me here. It was such a pleasure talking to you. Same here. This was all from my side on today's episode. For more technical discussion, expert views, and current crypto scenario in India and globally, don't forget to watch Crypto Masters with me, Parvati Nirvan. Keep watching and keep enhancing your knowledge of crypto only on Crypto TV. Bye-bye. Cryptocurrency market is under broader stress as investors shunt riskier assets such as stocks and cryptocurrencies amid an uncertain economic environment. We have invited a special guest, Mr. Raj Kapoor. Every investment has a summer and a winter and an autumn and a spring. Miners have sold 9,500, institutions are selling. But let's look at the other side. If they are selling, somebody is buying.
नमस्कार, मी वैभवी सावंत. पुन्हा एकदा आपला शो क्रिप्टोची गपशप मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. तर मित्रांनो, मागील एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेतलं की स्टेबल कॉइन म्हणजे काय, ते कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचे प्रकार कोणते. तर आज आपण चर्चा करणार आहोत टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल. त्या अगोदर आपल्या माहितीसाठी रशियाने युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी आपली लढाई तीव्र करत असतानाच क्रिप्टोकरन्सीची किंमत ग्रो होताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे एकूण क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप हे $2 ट्रिलियन ओलांडले आहे. आता पाहूयात टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल. तर सर्वात प्रथम स्टेबल कॉइन आहे तेथर. तेथर हे 2014 मध्ये रिअल कॉइन म्हणून लॉन्च केलेले पहिले स्टेबल कॉइन होते. तेथर हे क्रिप्टो मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टेबल कॉइन आहे, ज्याचे एकूण मार्केट कॅप $77.5 बिलियन एवढे आहे. तेथर 428 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांना वापरण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात उपलब्ध असलेले स्टेबल कॉइन म्हणून ओळखलं जातं. तेथरची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि मार्केट लीडरचा दर्जा असूनही वारंवार होणाऱ्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमुळे आणि ऑडिट नाकारल्यामुळे तेथरला बऱ्याच लीगल सिक्युरिटीला समोर जावे लागत आहे. तेथरला $41 मिलियन एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि न्यूयॉर्कमध्ये सराव करण्यास बंदीही घातली गेली. जरी या निष्कर्षाचा तेथरच्या क्रिप्टो मार्केटमधील दैनंदिन कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरीही गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगून तेथरशी संपर्क केला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे USD कॉइन म्हणजेच USDC. USDC कॉइन 2018 मध्ये कॉइन बेसद्वारे सादर केले गेले होते, जे जगातील पहिले पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज आहेत. USDC सध्या मार्केट कॅप नुसार दुसरा सर्वात मोठा स्टेबल कॉइन आहे. त्याचे मूल्य $42.1 बिलियन आहे. USDC 294 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहे आणि अधिक व्यापकपणे उपलब्ध आहे. दरम्यान फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि रेग्युलेटर सोबत सुद्धा USDC काम करत आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बायनान्स USD म्हणजेच BUSD. BUSD हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंज बायनान्सने 2019 मध्ये लॉन्च केले होते. मार्केट कॅप सह BUSD सध्या तिसऱ्या नंबरवर असून $14.3 बिलियन एवढे आहेत, जे केवळ 103 एक्सचेंजवर उपलब्ध असून BUSD त्याच्या कॉम्पिटिटर पेक्षा लेस ॲसेसिबल आहे. BUSDच्या युजर्सना बायनान्सवर शून्य शुल्क ट्रेडिंग आणि कन्व्हर्शन प्रवेश मिळतो आणि त्याचे स्टेबल कॉइन्स लेंडिंग सर्व्हिस मध्ये जमा करू शकतात, ज्यात वार्षिक 15% पर्यंत उत्पन्न मिळतो. सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो तेव्हा गुंतवणूकदारही निश्चित राहू शकतात, कारण BUSD मासिक ऑडिट्स प्रकाशित करते आणि जे वॉल स्ट्रीट रेग्युलेटर्सनी मंजूर केलेल्या 3 स्टेबल कॉइन पैकी एक आहे. चौथ्या क्रमांकावर आहे टेरा USD म्हणजेच UST. टेरा हे ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क आहे, जे लुना टोकनद्वारे गव्हर्न्ड डिसेंट्रलाइज अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइनचा सेट ऑफर करते. कॉइन मार्केट कॅपच्या डेटानुसार मार्चच्या सुरुवातीस लुना $90 खाली ट्रेड करत होता, परंतु 29 मार्च पहाटे आशिया वेळेनुसार लुना $106.14 चा नवीन सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. टेरा लुनाची भक्कम कामगिरी शक्यतो युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू करण्यासाठी रशियन सेनेने प्रवेश केल्यापासून जागतिक बाजारपेठेला घेरलेल्या अनसर्टनिटीतून येते. अखेरीस 5व्या क्रमांकावर आहे डाय. डाय हे सर्वात लोकप्रिय कोलॅटरलाइज स्टेबल कॉइन आहे आणि मार्केट कॅप नुसार एकूण 5व्या क्रमांकावर आहे. त्याचे मूल्य सध्या $9 बिलियन आहे. डाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि 221 वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर प्रवेश केला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चरली
डाय इतर स्टेबल कॉइनपेक्षा कितीतरी जास्त तांत्रिक आहे. USDT सारख्या US डॉलर्सद्वारे थेट पाठिंबा मिळवण्याऐवजी डाय ETH सारख्या क्रिप्टो मालमत्ता लॉकअप करण्यासाठी आणि त्या कोलॅटरलवर आधारित टोकन तयार करण्यासाठी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरते. हे मेकर प्रोटोकॉलचे उत्पादन आहे जे इथेरियम ब्लॉकचेनवर चालते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला स्टेबल कॉइन बद्दल संपूर्ण माहिती ही कळलीच असेल. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. क्रिप्टोची गपशप या शो मध्ये मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. Cryptocurrency market is under broader stress as investors shun riskier assets such as stocks and cryptocurrencies amid an uncertain economic environment. We have invited a special guest, Mr. Raj Kapoor. Every investment has a summer and a winter and an autumn and a spring. Miners have sold 9,500, institutions are selling. But let's look at the other side. If they are selling, somebody is buying. नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स. उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी. लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया. जी हाँ, NFT की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए. ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है. लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टो पंक्स की लंका में आग कैसे लगी. दरअसल क्रिप्टो पंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी. 2017 में जब क्रिप्टो पंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे. देखते देखते क्रिप्टो पंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा. Jay-Z, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे. एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टो पंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप यॉट क्लब ने एंट्री मारी. अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी. जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और NFT होल्डर्स को क्रिप्टो पंक्स की खामियां चुभने लगी. दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टो पंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी. जैसे कि बोर्ड एप के NFT ओनर्स को NFT के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. लेकिन क्रिप्टो पंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे. लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टो पंक्स के NFT ओनर्स को IP, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं. क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही NFT अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है. क्रिप्टो पंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर NFT है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है. इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप यॉट क्लब ने 2 और फ्री NFTs लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया. इसके साथ ही NFT होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं. सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं.
बोर्ड एप यॉट क्लब अपने NFT होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टोपंक्स के NFT होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टोपंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव NFT प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोपंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड NFT तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड NFT को रैप्ड V1 NFT करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया। लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे NFT प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के IP को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो NFT होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू IP के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो NFT होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार NFTs का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Today we are extremely excited to have with us Mr. Abhijit Hajra. So what seems to be the future of virtual reality? In virtual reality, we generally has to wear a virtual reality headset. By wearing that virtual reality headset, we enter into the virtual world. We can obviously be in the ecosystem, feel the ecosystem and act in that ecosystem. We won't make any big promises, but we will do everything to make this work. Through all our disagreements and conflict, we hope to grow our understanding of each other and ourselves. These are the vows taken by Mr. and Mrs. Narasipuram on 15th of November 2021. Now you would be wondering what is so special about these vows that I'm standing here and talking about it. Well, then let me tell you that these are not just the vows taken during the Fairas in Hindu marriage ceremony or in any church. These are the vows actually taken on blockchain. Hello and welcome to our show of Fun Facts. I'm your host Parvati Nirvan, aka
Paro, with me having no Deva in life, but I'm glad that this couple has found each other. And not just that, they have also immortalized their marriage on blockchain. Yes, you heard it right. And I have with me this cute couple who took the vows. Let's meet and greet them. Hello, Mr. Anil. Hello, Shruti. Welcome to our show and our channel, Crypto TV. Hi Parvati. Hi Parvati. How are you? How are you doing? Good, good. How are you? So, I'm pretty excited, and let me just fire my first question. Who got the idea? Like, how did this whole journey of taking your marriage to a new platform that is on blockchain technology happened? Well, it was all Anil. It was his idea. It was his brainchild, and it was his passion. I'll ask him to convey more about it. Yes, I've been in the crypto space for a while, so I kind of been interested in the technology and how it can be used. And we got married in November last year. Yes. So as part of that, I thought that we could do something different. And I heard about this couple that did a blockchain wedding in the US. So I thought, why not give that a try? And it was especially appropriate given that given the times that we live in with the pandemic, we try to keep our wedding small and, limit the number of people as much as possible. And given the situation we're in, it just seemed appropriate to also do it in the blockchain. So that's how it came about. Did you guys face any difficulty like while executing the vows on blockchain? Like you share your journey, like how this whole thing happened. Like if anyone is looking forward to do something like you guys did, they will get a fair idea. And I'm sure you guys have inspired a lot of people. Sure. I would say just to describe what we did and how we went about it a little bit. We, like I said, we didn't want the big Indian wedding, and we didn't want to have a lot of people show up and avoid large crowds for obvious reasons. So we did a registered marriage, which is not that uncommon in India. So we went to the registrar's office and we signed the sort of offline ledger. And then, we came back home and we just got on a Google Meet. We invited some family and friends. We had a digital priest who helped officiate that Google Meet and the ceremony. And we had prepared some things ahead of time, like setting up the wallets and setting up minting the NFT and all. So as part of the ceremony, we just went through the process of me transferring the NFT which we made ahead of time to my wife's wallet. And as part of that transaction, we embedded some vows, we embedded some language in the contract itself that we were getting married. And we tried to make it a fun ceremony with a digital priest sort of saying a few things about marriage and love, and we said our vows to each other. So we tried to combine the best of both worlds, and yeah, that's kind of how we went about it. Yes, lovely, lovely. Actually, this gives me another perspective to your marriage. Like people who are having some difficulty, like in this world, to get married, they can just go on blockchain and register and get married there. So any which ways, they are married somewhere in this world. Yeah. Right, So right. yeah, actually, it's like a different perspective to how you can go about your marriage. And you guys have put that on Ethereum blockchain, if I'm not wrong. Can you just tell us about that? Yeah, so we used OpenSea to mint the NFT. And so, yeah, we use the default platform NFT, which is Ethereum. Yeah. OpenSea uses both Ethereum and Polygon, and because you are from this technological background, so I would like to ask, why did you choose Ethereum blockchain for the vows, and did you go Ethereum for NFT marketplace or Polygon? Which one? We used Ethereum. It was just
no specific reason. It was just it was a default choice. Yeah, that it was just easier, I guess. Yeah, I think gas fees are a little higher in Ethereum, but for something special like this, I wasn't really worried about gas fee. fees too Yeah, much. at least for this one. Yes, of course. You wouldn't be worried about the gas fees in this case. What's your next step? Like, what are you guys planning? Like, this question is specifically to Shruti. I want to hear this answer from you. Like, are you like guys planning now something like in metaverse, like having a child in metaverse, like being that creative? Yeah, that would be fun, like having some digital avatar and kind of do things that we probably can't like in real life, like have a really big mansion or something in metaverse. Right. And probably do interiors the way I want to do it and not like fight about it. I know. Choose your own color, pick your own stuff to decorate it and stuff. Yeah, not a bad idea. And the kid also there. What do you say? Yeah, somewhere playing it. And maybe have like a nice infinity swimming pool or something. Yeah. Just elaborate me, like hypothetically, what would it look like if you would? So yeah, probably like a really beautiful big mansion, something like what Kim and Kanye used to have. Correct. And like a big pool with a nice cute library somewhere, and he has his own office space with his computers and all the gears, Right. and probably some mining machine somewhere. Anything else you would like to speak before we close? I mean, anything you would want to go about? It's just that one thing that this whole blockchain wedding and using blockchain to get married, as technically amazing as it sounds, for me it was more like having this personalized way of declaring the love for each other. And it made it more special that he made that effort to create the image that we used for our NFT. And it's a great memory more than anything. And no matter what the gas fees, it's still worth it. Yes. It is kind of very cute, and that's why I was very curious to talk to you both of the guys, like what it would be like. And you've actually given a lot of people new relationship goals in case if you're not aware about it. No, I saw some comments on Instagram where like people were tagging their boyfriends on our like news clipping, and the guys were like, "Ab ye bhi seekhna padega." Yes, of course. There's always new things to do and to impress. Right. Yeah, and I would say like what makes it special is that one thing is that it was like the way blockchain works, it was just between the two of us, right? It was, we could do it in the way we wanted. There was no one in the middle involved. So, that was meaningful, and it's on the Ethereum blockchain, right? So now it's a permanent immutable record of, of our immutable, exactly, and public record of our of our relationship and of our union. So I think that's special. And high amount of security and safety and trust, like what blockchain offers. I'm sure this marriage is gonna offer the same. Right. So lovely. And no one can change that. No one can change that, yes. That's the most beautiful part. Because that will involve the consensus of how many, like thousands of people? Exactly. Right. Yes, so we Yeah. cannot change it, yeah. Yeah. Absolutely amazing. Well, this was a lovely chat, very interesting and something very new. I must say you guys have created a new landmark in terms of what couples can do more together.
It was a lovely time to have you on our channel. Thank you very much for taking your time for our viewers. I wish you well and a great future together. Thanks once again. That's all from my side. This was a fun chit-chat interview on blockchain. I'll bring you more entertaining and interesting facts on what's happening in the blockchain space. Till then, stay tuned and keep watching Crypto TV. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee, and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work by following a simple protocol: if, when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action when predetermined conditions have been made and verified.
These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed. That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved, and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV.
Today we are extremely excited to have with us Mr. Abhijit Hajra. So what seems to be the future of virtual reality? In virtual reality, we generally has to wear a virtual reality headset. By wearing that virtual reality headset, we enter into the virtual world. We can obviously be in the ecosystem, feel the ecosystem, and act in that ecosystem. Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I'm Manoj Zara, and Ruchi, let's get started with the top headlines for today. Yes, for sure. Cryptocurrencies are set to end the week with small gains as investors book profit amid mounting economic uncertainty and profit taking. Bitcoin climbed to 6-week high amid optimism that the ongoing weakness in the US economy may force the Federal Reserve to raise rates at a slower clip. Federal Reserve Chairman Jerome Powell earlier this week said that the central bank will hike its rate by 75 basis points in September after unveiling a similar hike earlier this week. However, future hikes may be smaller and data-driven, Powell hinted. The US economy contracted for 2 straight quarters, widely understood as an indicator that the economy was in recession, which however was refuted by US President Joe Biden and US Treasury Secretary Janet Yellen. तो यहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, मनोज जो हमने देखा। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट हाइट की, आप ये सेक्टर को बहुत वाइडली आप फॉलो करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? So in fact एक बहुत बड़ा एक सीक्वेंस था ये वीक में। मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले वेडनेसडे को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आई थी 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की। उसके बाद में हमने देखा कि मार्केट ने एक अपसर्ज देखने मिला था। तो ये एक रीजन इसके लिए था बिकॉज दैट वाज द इवेंट वाज एक्चुअली प्राइस्ड इन 100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन था, 75 बेसिस पॉइंट्स आई एंड दैट वाज समथिंग व्हिच मार्केट हैज वाज एक्चुअली ये इवेंट को पूरा एक प्राइस इन कर लिया था। जीडीपी के नंबर्स आए यूएस के, और वहां पे लेकर हमें तो पता ही है कि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी हम हमेशा बताते रहते हैं कि देयर इज अ बिग कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट एंड द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से फॉलो साथ में चलते हैं जी। All right, let's move on. Former Finance Secretary of India, Subhash Garg, is in favor of government having a discussion with the crypto industry rather than cracking down heavily on the entire digital sector. Garg was in the view that killing crypto would harm prospects of the country and its potential use in several sectors. So, Subhash Chandra Garg, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़े कंसर्न से जा रही है, उनको कंसल्टेशन करने का जरूरत है। मे बी सेंटर कैन टेक इट अप इफ थिंग्स टर्न आउट टू बी राइट, बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देयर आर ब्रॉडर कंसर्न्स एज फार एज एक्सचेंजेस तो हमेशा बता ही रहे हैं कि यहाँ पर उनके वॉल्यूम्स कम हुए हैं, वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं बिकॉज टैक्सेशन को लेकर और टीडीएस जो इंक्रीज हुआ था, मे बी दे आर नॉट हैप्पी with the government and they want to renegotiate as far as the how to increase their customer base and get them back, you know. So that is something, and every exchange will try it, and they are actually suffering as of now.
इस एक्सचेंज की आप बात ही कर रहे हैं, क्रॉस टावर एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से ब्लॉकचेन और जो ये टेक्नोलॉजी वेब3 टेक्नोलॉजी इतना बढ़ेगी, उससे जो ये डिजिटल एसेट की जो पूरी इंडस्ट्री है वो इन अ डेकेड यानी अगले 10 सालों में $262 बिलियन की हो सकती है, और उससे Fantastic. हाँ, और उससे जो है इंडिया को बहुत फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं वी शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट. All right. Yeah. So moving on, the International Monetary Fund is of the view that the rise of cryptocurrencies does not pose a threat to global financial stability, noting that the current sell-off has dampened any fears. According to the IMF, the market correction in cryptocurrencies has been modest and has been little influence on the overall financial sector. तो यहाँ मनोज आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये बहुत ही मतलब स्टेटमेंट इट कम्स एट अ टाइम व्हेन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट इज एक्चुअली अंडर broader stress. I had read this news, couple of days back, और उनका एक कहना ये है कि जो इंटायर इकोसिस्टम में जो टेरा लूना कोलैप्स हुआ था, फिर उसके बाद में ये सब हुआ था, उससे जो ब्रॉडर मार्केट से उसको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है. और इनफैक्ट वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो वॉर जो हुआ है, उससे लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न ग्लोबल इकोनॉमी को हुआ है. इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद में एक स्टेप 2 था, उन्होंने वो एट्रीब्यूट किया हुआ है. एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो कोलैप्स हुए थे और जो बैंक्रप्सी हुई थी, उसका ये मार्केट में ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट नहीं है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. बट things might change if there are more bankruptcies or if there is any other concerns. You cannot expect what's happening in this cryptocurrency market, because the Terra Luna collapse के बाद में बहुत कुछ चेंज हुआ है, and day in day out यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है, and only time will tell that if they are looking at the right direction. वैसे जो IMF की जो रिपोर्ट है या फिर जो उनका कहना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट यूरोपियन सिस्टमैटिक रिस्क बोर्ड का जो कहना था, वो कहता था कि कहीं ना कहीं ये कंसर्न है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का इफेक्ट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा. That's what there are different opinions, and different market participants है काफी अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभालते भी हैं, and we have to respect their view as well. Of course. Moving on, Meta Platforms posted a second quarter loss of $2.81 billion in its Facebook Reality Labs division, which comprises its augmented and virtual reality operations. According to its earnings report, FRL generated revenue of $452 million in the second quarter, down from $695 million in the first quarter. So Facebook जो Meta actually जो formerly known as Facebook है, उन्होंने काफी losses भी suffer किए हुए हैं. और इनफैक्ट ये तो क्वार्टरली अर्निंग्स है, एंड see basically their intention is to focus on this development which is known as metaverse. Right. और उन्होंने लगभग जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो स्पेंड्स हैं, उन्होंने 10% बढ़ा दिए हैं to $3.6 billion. It's a huge advertisement expenditure which company is overseeing. और उनको एक बहुत बड़ा competition भी है. You're talking about Twitter. जो actual competition है उनका TikTok है. So when you say that कि this is something they are actually looking in the right direction as far as Meta is concerned, because losses हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, because ऐसे decisions it take time, say maybe 1 year or 2 years के बाद में उसका impact देखने मिलता है. Once this picks up, then you will see the real impact. इनफैक्ट जो इनका रेवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर में, दैट इज $28.4 बिलियन, जो और मेटा का कहना है कि अगले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में और कम होगा रेवेन्यू. लेकिन फिर भी इन्हें ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि वो फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ रील्स एंड मेटावर्स, लाइक यू सेड, क्योंकि टिकटॉक का अगर कंपटीशन है तो वो रील से ही है. इंस्टाग्राम का रफली अराउंड $1 बिलियन का रेवेन्यू है. जी. So that is something which is not a concern as of now, but if we see the meta kind of a thing, Facebook is the different entity, because since it's a tech stock, cryptocurrency market, technology क्षेत्र में technology sector को काफी track करता है, and it's only time will tell that कि उनका कैसा है कि metaverse में, और उनका decision कितना सही है right. वो देखना पड़ेगा. Let's moving on. According to crypto analytic company PeckShield, Solana-based Nirvana Finance was attacked, causing its own DeFi protocol token ANA and the NIRV stablecoin to drop in value by 90%. In addition, hacker stole $3.5 million in the flash loan attack. तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि ये हैकर ने क्या किया कि $10 million का USDC फास्ट लोन लिया और उसको ANA इशू किए उन्होंने, और बाद में कन्वर्ट कर दिया. हाँ, उसमें कन्वर्ट कर दिया. और जब
रेट्स बढ़े तो 13.5 मिलियन डॉलर्स में उसको उसने ANA को जो है So that's so what he did is actually converted and वो pump prime, this is known as pump priming the artificially उसको jack up किया prices को and then he booked and he converted everything and he left. हाँ, तो अपना लोन भी पे ऑफ कर दिया 10 मिलियन का, और जो बाकी के बचे थे पैसे वो अननोन इथेरियम वॉलेट में डाल दिए, उसको कन्वर्ट कर दिया डाई में। तो अभी फिलहाल जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो सारी ट्रांजैक्शंस है, ट्रेडिंग है, वो रोक दी गई है। So अभी ये hacks and cryptocurrencies ये काफी complicated subject है, it's I mean Beanstalk protocol जैसे इतने बड़े hacks जो होते हैं, आप it happens only in 13-14 seconds, it's ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर कोडिंग के हिसाब से होता है। एंड आप अगर हर एक हैक को अगर स्टडी करने जाएंगे तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, मे बी अ टेकी कैन एक्सप्लेन दिस फॉर अस। नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग दिस फॉर आवर व्यूअर्स। Moving on, lawyers representing bankrupt crypto lender Voyager Digital have said that no customer will be fully compensated for the value of crypto under the bailout offer made by Sam Bankman-Fried-led FTX, called an offer a low ball bid. So whenever such things happen, such bankruptcy होती है, और यहाँ पर Sam Bankman-Fried जैसे कोई भी इन्वेस्टर आके बेल आउट करते हैं, तो वो यूजुअली इट हैपेंस एट अ lower price पे होता है। That's the reason why they are calling it as a low ball offer. Right. So it becomes difficult for any entity who is suffering from a bankruptcy to pay. Say for example, if you have invested or maybe आपका exposure वो exchange के पास में 100 rupees का है, तो आपको 100 rupees नहीं मिलेगा because they are actually selling their company for maybe 40 rupees or maybe 30 rupees or a throwaway price. So this is the statement which is coming in, and maybe this can be a strategy to jack up the price, offer price, or maybe इन्वेस्टर का राउट से वो कुछ उन लोग कहना चाहते हैं कि आप आपका प्राइसेस बढ़ाइए। हो सकता है इसी वजह एक्चुअली जो वॉयजर डिजिटल के लॉयर्स हैं उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि सैम बैnkman-Fried के देयर वाज अ सीरीज ऑफ ट्वीट जहां उन्होंने कहा था कि वॉयजर डिजिटल के जो भी कस्टमर्स होंगे उनको 100% पे बैक होगा, लेकिन अब लॉयर्स कह रहे हैं कि सैम बैnkman-Fried ने ऐसा इसलिए किया फॉर ओनली टू जनरेट पब्लिसिटी, सो व्हिच कुड बी ट्रू इन अ मैनर। Moving on, the UK Law Commission, an independent body tasked with reviewing and updating the law, wants to extend the country's property rules to cover crypto and non-fungible tokens, according to a consultation paper published Thursday. In another regulatory news, the legislation that could establish US regulations for stablecoins has formally been delayed until after the August congressional break. तो यहाँ जो तो आप तो सबसे पहले ये सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी एंड NFT का कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है? तो यहाँ पे फिलहाल जो है ना UK बहुत ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनना चाहता है और वो ग्लोबल क्रिप्टो हब बनना चाहता है, और इसके बहुत सारे उन्होंने जो है इंडिकेशंस दिए हैं। अभी उन्होंने जो भी NFTs हैं या डिजिटल एसेट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पर्सनल प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ का जो है दर्जा दे दिया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, अब अगर उनको कोई भी लॉसेस होता है फ्रॉम हैक और स्कैम, तो वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं उस पर। तो इस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव मूव जो है हम देख रहे हैं यूके की तरफ से, और यूके जैसे कि हमने कहा कि स्टेबल कॉइन्स भी वो अपना लाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ा सा हम डिले देख रहे हैं। अगस्त के बाद जो है उसके ऊपर थोड़ा काम, आई थिंक फाइनल things will start moving. Right. All right, moving on, Coinbase, a leading cryptocurrency exchange based in the United States, is reportedly facing increased scrutiny from the SEC as the number of tokens listed on its platform grows. The SEC will look into whether the exchange allowed American customers to trade cryptocurrency assets that qualified as unregistered securities. Meanwhile, Cathie Wood of ARK Investments sold roughly around 1.4 million Coinbase shares amounting to $75 million. So ये एक बहुत ही बड़ा एक I had met her in Miami and she is actually a very big cryptocurrency के बहुत ही ज़्यादा supporter है और for भी है, और in fact if you will watch her videos, she is actually a long-term investor, and if she is selling her shares, that means this is actually a cause of concern. और ये SEC अगर Coinbase के पीछे पड़ा है, that means वो development में there is something which is negative as far as the exchange is concerned, और that is the reason why the investor got worried and sold her shares. Actually SEC ने 9 ऐसे coins को नेम भी किया, आइडेंटिफाई भी किया, जैसे कि AMP है, DDX है, DFX है, RGT, इस तरह के 9 डिजिटल एसेट्स को उन्होंने कहा भी है कि ये अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज ने डिनाई भी किया है वो कि ऐसा कोई अभी आपने चोरी की है, तो वो आप तो बोलेंगे नहीं कि हमने की है, तो आप प्रूव करो या तो फिर
हमने की नहीं है ऐसी। जो लीगल चीफ हैं इनके ऑफिसर है, उन्होंने इनफैक्ट पिटिशन डाल दिया ACC के खिलाफ फिलहाल। Let's see. Yes, moving on, Coinbase released the first part of its Bored Ape Yacht Club featured movie on July 26th. The movie is called the Digen Trilogy. Coinbase shared the first part of the movie titled Run the Chain on Twitter. और उनका ये कहना है कि जो है वो कई कस्टमर्स की जो है NFTs को वो शोकेस करेंगे सेकंड और थर्ड मूवी में, लेकिन उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी जो NFT मार्केट प्लेस है उसके ऊपर। तो एक अच्छा आई थिंक इनिशिएटिव है। अच्छा, ये बहुत अच्छा एडॉप्शन बढ़ रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, आई मीन UK is doing something and this is actually a move which will help NFT adoption. Actually. All right, that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Dara. And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great weekend. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IERC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उठाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लग ही गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था,
लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था। इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्रीकृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था। अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि FBI अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली CBI को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि FBI ने इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही US प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए CBI से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है। मुकदमा कोर्ट में है और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। ओह हाय, आप आ गए। आजकल क्या है ना, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे अंदर का आर्टिस्ट आजकल बहुत एक्साइटेड है। मैं अपने इस मास्टरपीस पर काम जो कर रही हूँ, इसे जल्दी कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि मैं इसकी NFT बनाऊंगी और फिर मिलियंस कमाऊंगी। अरे लेकिन इससे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि इसे मैं किस डिजिटल वॉलेट में स्टोर करूं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो वॉलेट में सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि NFTs भी स्टोर की जाती हैं और इसके लिए 2 तरह के वॉलेट्स यूज होते हैं, कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अगर आप एक कस्टोडियल वॉलेट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी प्राइवेट कीज पर फुल कंट्रोल नहीं मिलता। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि कोई एक्सचेंज या फिर कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर आपके बिहाफ पर आपके एसेट को स्टोर करते हैं और आप अपनी प्राइवेट कीज एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कुछ गलत या खतरे वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये डिसीजन पूरी तरह से आपकी नीड पर डिपेंड करता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ऐसे में अगर आप अपनी प्राइवेट कीज मिसप्लेस कर देते हैं तो आप अपने वॉलेट का एक्सेस खो देते हैं। वहीं अगर आप कस्टोडियल सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं तो अपनी कीज के साथ साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आपकी प्राइवेट कीज को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भी कस्टोडियल की होती है। तो अगर आप अपनी एक्सचेंज का पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो कस्टोडियल सर्विस का कस्टमर सपोर्ट आपको उसे रिकवर करने में मदद करता है। सो कन्वीनियंट है ना। और अब बात नॉन कस्टोडियल वॉलेट की। एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट में होल्डर के पास होता है प्राइवेट कीज का फुल एक्सेस एंड कंट्रोल। जिन यूजर्स को अपने फंड्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए
उनके लिए नॉन कस्टोडियल वॉलेट परफेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि अपने वॉलेट को सेफ रखने के लिए कीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अगर किसी वजह से आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो कोई उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कई ऐसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स और एप्स हैं जो यूजर्स को अपनी कीज सेफगार्ड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। इतना ही नहीं, Tor.us जैसे वॉलेट प्रोवाइडर भी हैं जो सोशल मीडिया लॉगिन के थ्रू यूजर्स को की सिक्योर करने की सेफ्टी और कन्वीनियंस देते हैं। तो चलिए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए स्टडी करते हैं कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट के बीच मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहले प्राइवेट कीज, थर्ड पार्टी ओनरशिप और वॉलेट होल्डर ओनरशिप। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी, accessible to register accounts, accessible to anyone. Point number 3, transaction cost, typically higher or typically lower. Point number 4, security, typically lower, typically higher. Point number 5, support, typically higher and typically lower. Point number 6, KYC, yes and no. अब तो मैं पूरी तरह क्लियर हूं कि मुझे कौन सा वॉलेट चाहिए। And now that even you know about custodial wallets and non-custodial wallets, make a wise decision. अरे मैं तो भूल ही गई बातों में कि मुझे तो अपना मास्टरपीस कंप्लीट करना है। Time for me to go. लेकिन आप मेरी यानी कि रुचि शर्मा की ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. With only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more Crazy Coins with Kunal. There will be bear markets about twice every 10 years and recessions about twice every 10 to 12 years. But nobody has been able to predict them reliably. We are facing a bearish market situation at the moment in crypto, and it can turn into a Great Depression. Can we predict? Not really, as nobody can precisely.
Three Arrows Capital CEO Zhu Su must have not predicted the current market scenario for sure. Anyways, today we are here in the studio again with the technology expert on blockchain on the show of Crypto Masters. But before that, let me welcome all the viewers of Crypto TV. Here's your host Parvati Nirvan along with the guest Shrishti Asudani from Delhi, who is a blockchain leader and has her expertise in various use cases of blockchain like financial services, supply chain, healthcare and payments. Hello and welcome to our show. Thank you, Parvati. Pleasure to be here. Great. So let's begin with the questions. Yeah, sure. Yeah. So the first and the foremost, because we know that the Ethereum merge is the hot topic currently in the market. We have been waiting for Ethereum merge for a very, very long time, and we are continuously seeing the delays that are happening, right? So can you actually tell us like the why these delays are happening? Also your understanding about the merge. So Ethereum merge, if we say what is essentially is, so Ethereum is one of the leading blockchain networks, right, as you know, after Bitcoin. And the challenge that we are facing with Ethereum, with the current version, is one is the limited throughput which it is having. Right. And second, again, is from a sustainability point because of the computational power involved with the proof of work mechanisms. Right. So essentially, this is a move. It's a starting move and a part of a phased move to move into a proof of stake consensus mechanism, where the mining which happens in proof of work would be essentially raised by change to staking with the proof of stake mechanism. Right, their consensus mechanism. The consensus. They are upgrading that. They're moving to a different consensus mechanism. Right. So what essentially merge is, it's a part of the entire phase of movement of Ethereum mainnet from proof of work to proof of stake. And it's a very small part of it where, so the phase one is like the beacon chain, right, where we are essentially moving from a monolith architecture to a modular architecture. Right. And we are differentiating the execution part and the consensus part of it more from a data availability and a bandwidth standpoint for the network. Right. So last year only we have been hearing from 2021, and we were expecting around January, February this merge to happen. It got delayed and further got delayed, and then we were expecting it right now, like it's just gonna happen. And again we hear the announcement. So why do you think? I mean, if generally what we hear is there are bug fixing that they require, but why this is taking so much of time? Why these developers are or the community itself are not coming to reach that point where the merge can actually happen? So what we need to understand here, that the volume that we're talking about here is somewhere around 1 million transactions per day, and it's a live network. So we are responsible not only of the transactions, but there is more than $3 billion of transactions happening and value store of value already on the Ethereum network. Right. So a part of the merger would involve maintaining the live network, which is Ethereum mainnet, and of course also the upgradation to the beacon chain, which is there. So that's why, to avoid the technical errors, this is something which is happening in a phased way. And so of course they are moving with a check on the Ropsten, one of the testnets network which is there. But Ethereum, the ETH 2.0 or Serenity, which we call, is focused more on the security aspect, and that's how it's been positioned. So of course the volume and the transactions happening, I think that's the reason why the merge is taking, and there are some delays which are happening. Okay. So anytime soon, what do you think when they actually would come out with the Ethereum merge? I think it's Vitalik and his team would be in a much better position to answer that. But then, of course, with August, I think it was the scheduled is for the merge is August, and for the sharding part, where actually we will see a benefit. But that is also delayed, right? Of course, that has to. I mean, it's also on a delay where it's scheduled to be done on 2023. But yes, of course, we are all waiting. It's a gigantic network actually, so it would be done in some time, and we're all waiting for the
benefits of the same. Right. So do you think by any chance this, because there are a lot of layer 2 solutions, if we talk about Ethereum is the first platform rather after Bitcoin, like actually as a platform, the first platform to offer smart contracts. So do you think they are trying to provide layer 2 solutions and that's the reason of the delay by any chance? No, I don't. I would not agree to that because so I'll just put it in a small thing. So how Ethereum has actually planned a movement from proof of work of proof of stake. Their consensus mechanism. Yes. So is in a one part is the beacon chain, which we talk about the merge. Yes. The second is the shard, where we'll have another chain, which will be the shard chains, but we'll have 64 shards. And the third would be like a docking, where both the networks would come to a consensus mechanism, which is there. So this is how they've planned it, and this once the implementation of shard would happen, that's actually where the scalability and the transaction throughput would come. And layer 2s would be essentially scaling the network. So the shards is actually a layer 2. So this would be a part of that. So So after the merge, what we will see is more layer 2 solutions from Ethereum itself. Yes, definitely. You'll have to look out on more L2 solutions. So merge, the benefit would of the merge would be more from a data availability and increasing of the bandwidth. So efficiencies would come more and it's estimated to be somewhere around 99% in the network bandwidth and the data availability. But the actual benefit which we want to see in the reduction of the cost would come post the implementation of the shards. So we're only able to actually figure it out once that happens, right? Once that is implemented, definitely. Definitely. Great. So why do you think these different kind of blockchains like Polkadot, Cardano, they are offering and they are better at offering layer 2 solutions than Ethereum? So Parvati, how it is that these are different approaches, which and it's really good names that you've taken. One is Cardano, and you've very popular blockchain solutions. Yeah, and Polkadot. These are all both are ex co-founders of Ethereum. Right. So we talk about Charles Hoskinson, or you talk about Dr. Gavin Woods for Polkadot, and the implementation of POS has already been done in these. So Cardano is one of the first POS blockchains which is there, and Polkadot essentially is working on the interoperability. And when we talk about Polygon, like you said, is one of the leading side chains. So it's already working on the scalability factor. So essentially, all of them are working to make it more scalable, so that the retail users have a better experience, and we're not waiting for the transactions to be recorded and the state to be maintained over the network, where it's a huge network in Ethereum. Right. So with the Ethereum merge, we have ETH 1.0 currently as a coin, and with the merge will come ETH 2.0. So what is this particularly coin will offer that is not being there in ETH 1.0? We need to understand between ETH 2.0 and ETH 1.1 what the difference would be is essentially with the way we would handle the transaction throughput. So when we talk about in ETH 1.0, it's somewhere around 15 to 30 transactions per second. Currently. Currently, and there's a promise of nearly 1 lakh transactions per second with the Ethereum scaling to POS consensus, but then again that would come again in a phased manner. So yes, definitely. So what that means, the increased number of transactions means a more adoption of the Ethereum network, which means more utilization of the tokens. When we talk about ETH 2.0 as compared to ETH 1, and how the supply demand mechanics works, this would definitely come with an increase of value to Ethereum. So you think it will increase the value of ETH platform with respect to the ETH 2.0 coin? Yes, essentially it would mean that only, because if we are having a promise of say 1 lakh transactions per second, where we'll have a scalable network where more DApps would be working, and with the kind of work which is happening on the layer 2s, this would definitely mean that there would be an increasing promise of value for the native token ETH 2.0. But this is the promise that is coming from Ethereum sides or Vitalik Buterin, if we say. Well, what are your views? What do you think they are able to achieve 1 lakh transactions per second? I think that would,
already there are chains, blockchain networks who are delivering solutions. So like we talk about Cardano is already working on a 250 transactions per second, and with the latest upgrade, that would again increase phenomenally. So I really trust, the foundation, Ethereum Foundation, and of course even the partners like Consensus who are working on the protocol engineering part of it. And there's a lot of good work which is being done. So I think there's a lot of good scientific research and mathematical proofs when they say that they will be able to scale to such large transactions. So you believe that, right? Yes, I do. Great. Yeah. Now, as we talked about Ethereum merge, so I also want to talk about Vasil hard fork, which is happening in Cardano. So do you want to share like some views on that or shed some light on this merge? So like we spoke, like with Cardano, like the founder is focused more, on the scalability part and making it more decentralization, and they are working in a completely different way. They started with the POS mechanism, and with the latest hard fork, which is Vasil hard fork, they're done. That's very good enhancements which are happening. One is of course the cost of the transactions would decrease. That would be more because they are making the transaction data that will be put on the blockchain network smaller. It will be more decentralized because an on-chain data storage would be facilitated, and of course more scalable with their implementation of Hydra. So and then there is a lot of network connectivity and scalability features with respect to the how they are going to do the pipeline testing and the logging which is being done. Okay. So what the founder proposes, Charles Hoskinson, is that definitely this would mean to a much larger adoption of Cardano in the DeFi realm, where more and more DeFi apps would be hosted on Cardano. So we have recently witnessed a very big event in the crypto history, that is Terra Luna crash. What do you think were the shortcomings and what are the takeaways from the technological aspect? So with the Terra Luna crash, as we call, it's like one of the big events are happening. But the stablecoin itself, the algorithm stablecoin, the mechanism is quite separate from the way the other stablecoins are operating. What essentially a stablecoin does, or it maintains the volatility part of it. Now, what's happening here is that it's being pegged to its own reserved assets. Right. Which is Luna, which is the native coin, which is ensuring the security part of the Terra network, which is there. What has happened here is, of course, has been initiated by, it's unknown, and there's a lot of talk about that there are big players involved, whales involved for the crash, where it's an impended move, and it's a kind of mechanism where things have been made so that the Terra stablecoin moves into death spiral. Okay. So it's like that. So basically what has happened, that the reserved asset, which is Luna, the value of it has diminished so much that it's become almost unsustainable to maintain the peg. Yeah, almost nearing zero. Nearing zero. So that's how it happened, where people were like, okay, now this is a dip we should buy, this is a dip we should buy. But in 4 days it was almost zero and gone. And that's like a big question on retail users, that you say it's a stable coin, and yeah, it puts a question mark. And I have a question for that also, because because of the stable coin, like now that you have mentioned, so because the stable coin, and we know that what happened with the Celsius recently, they froze all the account and withdrawals. So where does a stable coin stand from that perspective, if we actually look at it? Because it to the users, the customers which are going and using and doing the transaction, it is such a first of all disbelief, it comes as a shock, and then there is a lot of discomfort. So where it makes a stable coin stand? What do you think? So what we need to understand here, Parvati, in the first way, these stable coins is one of the digital assets that the crypto industry per se is conceiving. Apart from, we have CBDCs and you have NFTs and other tokens right there, and the mechanisms that's governing the stable coins is not new, right? Is this something? It's the old concept. It's the old concept which is available in money markets, and we see all these fluctuations in forex trading. And they made the coin stable.
Yeah, And then- it's a marketing term. It's first of all, it's not stable and it's not a coin. It's a smart contract. So yeah, so it's a way to position that okay, this is what we're doing. We're trying to make it more easy for you so that you're abstracted of the volatility and you're pegging it to commodity. Say it's a fiat or a gold. So of course, this has a deep impact on retail users but what we also need to understand, the impact is only not on crypto, right? You talk about the bear markets. We are seeing how the stock market is being affected. So it's a community-wide global. They're going hand in hand. Yeah, it's going hand in hand. So everybody is affected. It's a correction which is happening across the markets, and crypto, like you said, like you introduced, this is something like eventually in the previous years also it has come up because in a sense the technology has a great value to offer. And when we talk about currency as such, like an asset like stable coin, there's a lot of work, we are trying to achieve something really new. We are trying to innovate. It needs a lot of stamina to get new financial models. We've been, you understand the payments and the banking industry, how deep the infrastructure and the techs are. So this is a creation of a new financial services or a new technology innovation. So with the upcoming regulations and the regulatory bodies coming where up. do you see the future of stablecoin now after this? For the future of stable coins, it's definitely going to be not going to go away because there would be a mechanism required for making it more easy and seamless for consumers to go. But then there would be other mechanisms also where banks are having CBDCs. Don't you think that it puts more questions on the stability of stablecoin itself after all these events that are happening recently? Yes, of course. There are questions, and there are also questions Doubts. on about the organizations as such, and there is a differentiation that you need to do with the awareness of the industry between the legitimate models and some projects which are not legitimate. So that's a kind of due diligence that also needs to be done from the end customer or the retail user. Right. So what do you think, how does it position in the market, stablecoin? What will now users have to look upon if they have to now invest in stablecoin? What do you like, not exactly we actually give investment advice, but just for the understanding of the viewers? So I would like to say here that when we talk about stable coins and say stable coins or altcoins and cryptocurrencies as such, there are many which are there. I would feel that you need to really study the project. You need to see how the governance is happening, how the mechanisms are, who the founders are. There's a lot of due diligence that needs to be done, and there's a lot of good work which is being happening on the regulation standpoint also. So to make this more sustainable, and we are moving towards that. There's a gradual movement towards that. Because big organizations are failing, so it definitely put a lot of question marks at the same time. And at the same time, currently we are at a stage where the market is also not really, it's not bullish. So another thing here, which you also need to know, that even in the financial markets, these rundowns happen where big players are wiped off in a day because of the manipulations or the speculations that the whales are doing in the financial market. So you think it's something like that happened with Terra Luna yes, and then yes, with of Celsius? course. Celsius is completely different. They have gone for an insolvency, and what kind of insolvency, I have not gone deep into that. But when you talk about Terra, absolutely, it's a manipulation, it's a speculation which is happening by the big whales, and this is something which already happens in the other markets. It's just that it's not transparent. Since it's blockchain, you can actually see the movements, how the acquisition of funds has happened, how the liquidity has been removed. Yeah, you can track it. So it's just that it's come into notice, but it's something which is prevalent for sure in the other markets. Great. So thank you so much, Shrishti, for being here, taking your time out, and part of this discussion. I'm honored to be part of this initiative, and it's a great platform, and you're doing a great work at Crypto TV. The kind of awareness you're bringing to the audience is phenomenal. Oh, thank you so much. Yeah. Thank you. And I would also like to thank the audience of Crypto TV. We at Crypto TV are committed to bring more deeper insights into understanding the various aspects of crypto world. With the promise of bringing more such detailed discussions, I, Parvati Nirvan, is signing off for now. And don't forget to like, share, comment or subscribe Crypto TV on YouTube, Facebook or Instagram. Thank you so much and bye-bye.
रुचि, व्हाट्स अप विद यू? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। You are daydreaming? Yeah, I'm daydreaming. This is a crime. It is a crime। पर पता मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ Okay. और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया। मैडम, आपके मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आटे वाले की पर्ची आई होगी। हाँ, क्योंकि मैं 80 से ऊपर चला रही थी। Very true. So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी सोच लिया है, तो बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं। तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट में अभी लिया, गुच्ची का। हाँ वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका। तो सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहाँ पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स। सो आज हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या क्या things that are required. We have also understood that a crypto wallet बनाने के लिए KYC and basic simple चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना, अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज। Yes, exactly. चाबी रहती है इसके अंदर। तो ये चाबी आपके घर की नहीं है, इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप यू कैन गेट इट बैक, चाबी वाला। बट दिस इज द की व्हिच यू विल लूज ऑल योर मनी। Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ, public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address, that is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing, but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete, and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बताइए। मेरा ना दिमाग बहुत, तुम तो जानते ही हो, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अगर यही मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No, because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. Oh my God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं, जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टोकरेंसी। आई वांट टू नो दैट। सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट। सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स। सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेफ नहीं होंगे। सेफ नहीं है, इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम। एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड। और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक कंसर्न होता है हॉट वॉलेट्स में। तो मतलब हॉट वॉलेट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है। So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही इतना, मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point, देखा? I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो
आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, आप उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं. यू कैन स्टोर इट. देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, X and X. Okay. तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर. एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन योर प्राइवेट की. यू हैव टू स्टोर इट, यू हैव टू स्टोर इट इन अ लॉकर. हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली. या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड. आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूं, मुझे ज्यादा इजी है. लिख लूंगी फिर रख लूंगी. Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए. हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं. तो उसके लिए एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मैं ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हम बताते हैं कि इट इज ऑलवेज सिक्योर टू कीप अ two-way authentication. One, it comes in your email. One, it comes as an OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? So how to keep it safe and secure? Two-way authentication. There is always advisable to keep a two-way authentication. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? This is the most important aspect because hackers जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं. They are organized criminals. So in fact they can get into your browser, they can steal your money easily and you will not even come to know. So it is most important that you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो, या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है? नेवर यू आर सपोज्ड टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना OTP किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. So this was our tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर कैसा पासवर्ड बनाओ कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा, एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते ना, अगर हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन, वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा, ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है. थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स का, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज कर सकती हूँ सिक्योर? Very valid point which you have raised, because that means you are thinking over how to double your investment. So it is always advisable not to use public Wi-Fi because they can divert you to some of the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहाँ से आपका सारा डेटा उनके easily within seconds आ सकता है. They can steal your money with a blink of an eye. Oh my God. And it's gone. That means it's gone forever. Nothing is safe. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, that is safe? Of course, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links, download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course. There are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid such attacks or cyber crime attacks, or maybe some hackers, they are really smart, as we have always telling the hacker का एक बहुत बड़ा, हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also.
जिनका अभी जैसे डीफाई के फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में लगभग 600% से ज्यादा उनका साइबर क्राइम बढ़ गया है. दैट मींस दे हैव स्टोलन रफली अराउंड $10.5 billion वर्थ. चलो मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं है, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मैं मेरा फ़ोन तो यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ. दैट इज सेफ. आपका फोन यूज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क सो दैट सच एक्टिविटीज डजंट रिपीट. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. बट हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग दैट्स दैट्स अ बेसिक हाइजीन लेवल व्हिच वी मेंटेन. इफ यू आर पार्टिंग आल्सो देन डेफिनेटली you have to ensure that you don't reveal your secrets, just like you are not supposed to reveal your cryptocurrencies. हाँ बिल्कुल absolutely. अच्छा, कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, if I tell somebody, a friend, my brother, my sister to handle, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी. तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि टू वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको टू वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसे लेके भी ऐसे ही भाग जाएंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. और अब आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली, एक गुच्ची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा. Of course, that is something which you have. I mean, choices is yours, but definitely you have take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and रुचि शर्मा. Thank you. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. Technological advancements in the digital space have revolutionized every aspect of our lives, from shopping to collaboration with colleagues to keeping it in touch with friends to entertainment to managing our finances. Since the dawn of internet, identity management has been a key concern with billions of dollars being spent on usability, security, and privacy. The identity and access management market is expected to grow from $8 billion in 2016 to $16 billion by 2022, representing a 15% CAGR. Despite this huge investment, managing digital identities continues to be plagued by 3 C's: cumbersome, costly, and challenging. To understand the aspects of digital identity in detail, we have invited a strong panel for you. Our first guest is an author, blockchain influencer, tech GCPIT leader. Let me introduce you to Devjani Mohanty. Ma'am, welcome on the show. Thank you so much. Our second guest is Ravikant Agrawal, Vice President Strategy at Polygon. Ravikant sir, welcome on Crypto TV. Thank you for having me. And our third guest is Saeed Mushir Ahmed, founder and MD at FinStep Asia, and he is also an advisor to Stellar Development Foundation. Sir, welcome on the show. Thank you for having me. Our fourth guest is Prasanna Lohar, Chief Innovation Officer at DCB Bank and a founding member of India Blockchain Forum. Prasanna ji, welcome to the show as well. Very good morning, Manoj and Crypto TV team. Looking forward. So my first question is to Devjani, ma'am. So what is digital identity? And if you can just explain this for our viewers with some examples. And what's the issue
with the traditional identity to begin with? Well, digital identity is any data, any personal data that can identify someone online. So it is something like your user ID or password or biometrics, whatever you are using for identifying yourself. It can be used for registration, getting access to online data, authorization, authentication, even deregistration. So for any kind of business relationship, you need digital identity. So Ravi sir, what's your opinion what about to digital see- identity? If you can just explain this for our viewers to begin with. When we talk about digital identity, we are talking about a set of validated digital credentials that are used in the digital world, right? So this digital credentials could be different types of attributes or activities that uniquely represent an individual, right? So it could be your unique identifier, your vaccination code, your biometric, your social media activities, right? I think this is getting very interesting in the identity space, where now we have certain capabilities where even without disclosing some of these identifiers, you can still prove yourself. So if I'm an Indian resident, I don't need to showcase my passport. How can I still do that? Those are the innovations that are happening in the identity space. How can we represent in the digital world? Lovely. Bhushir sir, what's your opening remarks on the digital identity? If you can just highlight that, sir. I think digital identity is becoming very native, right? So we are moving from a world which was heavily paper-based. And so we carried our passport, we carried our license on us physically. And now we are moving to a world, especially in India, driven by the India Stack and other digital platforms, to a digital identity. So your Aadhaar is digital. You could technically, in many places, like I'm here in Hong Kong, I check in just using my ID card. I don't have to use my passport. So a lot of other things that digital identities, it's where we are moving from a paper-based identity process to a digital-based identity process. Few keywords which I've picked up, Prasanna ji, is paperless, and there is lot of work that has been done in this segment. What's your opinion on this? Yeah, I think great views by Debjani, Ravikant and Mushir out there. So I think if you go back 30-40 years back, right, life was so easy, right? So no need of any identity. It was just a single PC and use all of your accounting operations. But now as we move forward for a network-based application down there, now social media, I think that's how we need to look at digital identity, your own single source of the truth. How do you really prove yourself? Digitally you are present and you have a unique identity. I think that's a game all about, and it has a different form factor, as our experts will explain here onwards. Yeah. So as we are talking about digital identity, let's begin with the first question, technical question to Ravi, is what is self-sovereign identity? If you can just explain this, and how does digital identity provide trust to external partners like clients, government organizations? If you can just highlight that as well. Sure. So I think, when we talk about self-sovereign identity, primarily we are talking about identity where a user is in control of their identity. He controls in terms of who has the access to those set of information. In case if the user wanted to restrict the access to certain party, he should be able to do that. In fact, if there are reasons for him to withdraw the access, he should be able to even control that. So I think self-sovereign identity is a new set of innovation where we are, trying to give control back to the users. When you're talking about trust, I think, this is a very fundamental concepts related to digital identity. In my view, there are 4 different pillars that one should be, talking when we talk about a trust for identity. How can we have verification and authentication with a high degree of assurance? Fantastic. Second one, it should be unique. Third one, it should be driven with the user consent. And the last but not the least is protecting user privacy and ensuring that there is a control maintained by the user to protect his own data. Right. Ma'am, what's your opinion about, as we are talking about a broader aspect as far as digital identity and the road ahead, what's your opinion on this? Well, I mean, definitely we are moving towards identity which is more decentralized in nature. Currently, we have already seen that how FIDO has acquired the market. But FIDO is a little different from decentralized identity, especially self-sovereign identity. So these models are different. But in future, I would also like to see that it's moving more towards confidential computing model. That means that you are not sharing the data
even in the way that currently we are doing in self-sovereign identity, you are not sharing even the data in dynamic way. You are doing it through some third party, and those organizations who are using your data can use only in the way that you want them to use. Fantastic. They cannot even pass it on further to other organizations. So confidential computing is somewhere in the picture in the road ahead. So Mushir sir, as we are talking about digital identity, and as Debjani ma'am has already highlighted about the privacy factor as well, what's your opinion on this? With digital identity, you can, you are giving away your identity in the sense that anybody can then transfer it, right? As much as Prasanna was mentioning, you would carry your passport to show it, there's a Xerox, somebody to actually use it later, it's much more harder for transferring those documents. For the digital, you can, easily, it's portable. It's the positive of it and the negative. So you have to provide strong security for such instances. So I think the portability of digital identity is a great element. And then as we go and talk more about how blockchain can be used to protect using different layers, including permission layers, then you can, make effective use of digital identity with protection and privacy. Prasanna ji, as we're talking about digital identity, blockchain ka use nahi ho, aisa ho nahi sakta, and this is actually a link, between a broader audience as well. Yeah, I think what we have seen in last 20-25 years with the rise of internet since 93-95, a lot of business models are dependent upon internet. But what internet doesn't give, something like a confidentiality or data transparency, data integrity, or a trust aspect, which typically people say these days, I think blockchain is the internet 2.0, and which will really surpass all those challenges. I go with what Ravikant said about self-sovereign identity, right? Typically, a strong verification followed by uniqueness of that identity mechanism, followed by the data privacy, and the last but not the least, the consent. That's how I go with Debjani ma'am. I think consent management can be really built very well on self-sovereign, or you can talk about a good digital identity with the help of a blockchain. Yeah. So my next question is to Mushir sir, is as we are talking about, as Prasanna has highlighted about concept management, so what will be, in that aspect, what will be the role of DIDs in self-sovereign digital identity, if you can just highlight that? Yeah, I think they play hand in hand, right? When you look at self-sovereign identity, it's a form of DID, where you as a owner, you have full ownership of your identity. You will then share it on a consent basis. So let's assume I need to share with, I'm taking a loan, say from Bajaj Finance as an example, right? And then I need to share my date of birth. So I can share it with them. It could be only for them, they can have access only to verify it through the blockchain, and then that could close, right? So they no longer have access, they verified it and it's done. So a bit like I take my passport to the bank, they see my passport, they verify it's original, and then I take my passport back. They no longer have access to it, and then they verify, the person there says, I've verified it, which is all being done on the software on the blockchain. So through this, you can actually be able to manage your consent layers in terms of what data you want to provide, whom you want to provide it to, and you can track. This is the most important thing. A lot of times, Debjani ji mentioned this as well, you don't have tracking of who has your identity and your data, right? You may give it to one party, they have fine print saying this can be shared with our partners, with regulators, and it can go on and on, right? The Cambridge Analytica is a classic example. So, over 4 billion people have been, their identities have been hacked or been targeted globally. So I think this is an important element, is you then know who is having access, because you're owning that identity and the access to it. So nobody can get access unless you allow them to have that access. So Ravi, a few keywords I've picked up, what Mushir sir had already highlighted, is users can select what kind of information and how much information they want to pass on. So what's your opinion on this? So certainly, I think that's going to be the fundamental difference when we are talking about the self-sovereign identity. I think that is going to be fundamentally changing. User controlling their data, user maintaining the privacy to the level they wanted to, provide the access for. So it's going to be fundamentally crucial. We must have here the directional change that previously Facebook, now Meta, has taken for their, big platform Facebook. Right, so they are now concentrating on privacy as the key concept for the next few years. Sure. Right, that has given an idea about how important privacy become for the users. So, ma'am, as we are talking about digital identity and privacy is actually the point which we are discussing. What's your opinion about the role of DIDs, in digital identity? If you can just highlight that.
Yeah, using digital identity, you can share your data in traditional way. That means you can share all your data, or you can share is in a selective disclosure mode. We already discussed about it. Or you can share it in a zero knowledge proof way, where you can just say that you can prove cryptographically that whatever information I'm providing is true or not. That means, Oh, let's say fantastic. that you want to check that you want to assure somebody that you are an adult. So you don't need to reveal your date of birth to somebody for doing that. So you can just cryptographically compare your date of birth with someone who is recently 18, and you can prove that you are an adult. Or the similar kind of check can be done for salary, like when we apply for a loan, let's say, that then we have to provide our salary, right? So we don't need to do that. So the bank, it would be happy enough to get assurance that our salary is in a particular range, not exactly what is the salary. So those kind of checks you can also do with the decentralized identity architecture. Perfect. So, Prasanna ji, as we are talking about few keywords, yet again, as we are talking about, how much users can share an information with the other party, but there is something, which ma'am is highlighting about is how you can prove your data is correct. Yeah, I think that's how the power of ZKP man was speaking about. And at the same time, what we could see, the way we have created our identity system followed by digital identity system, it might go under some river, right? Say example in India Stack, and we have UIDI. And on top of it, we are now building a consent layer. Typically, I think I will not be surprised somebody says, yeah, let's build it on blockchain, where we have an opportunity to share something as a part of those 14, 15 parameters. I can just share one of them that may be for a time bound. I think that's the beauty all about digital identity, self-serving identity, and touched upon on blockchain kind of a technology. Yeah. So, as we are talking about digital identity, my next question is to Debjani ma'am is, a UK-based platform offers customers onboarding through digital identity. You're talking about True, right? So True is a identity ecosystem, a decentralized identity ecosystem. So the digital identity for various platforms, as we are talking about, and so you think that the future of apps will allow access through digital identity only? Yes. So my question is to everyone. To begin with, we will start with Debjani ma'am. Yeah, I think it's not only digital. We have to think about various different aspects. Like, let's say today you ask me to create an architecture where this privacy is also possible, and portability is also possible. So many different things are possible. But is it something that people can use? Is it something that people from every part of the society can use, and every corner of the world can use? That also we have to think about. So when you say digital, it also should have some components of physical. So like, let's say that I'll talk about True, that is a decentralized identity system in UK, using which the healthcare professionals, because in UK they work on a rotation basis, so using that identity, they can prove who they are to different hospitals while working in rotation. So that can work on a physical basis and as well a digital basis also. So that can be use cases where there could be scenarios where even if, let's say, the technology is good enough, but it is not something that people who are elderly, let's say, or not that tech savvy can use. So we have to think about so many different aspects of it. So we have to come up with an architecture, with a solution that everybody can use. So that is something we are still working on. ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड।
So Ravi sir, my next question to you is, as we are talking about this aspect, and as ma'am has already highlighted that we need a solution to this. So what makes a good digital identity as far as you are concerned, and you have been working with Polygon on several projects as well. So is blockchain useful? What are the other solutions apart from DID? If you can just highlight that. No, sure. So I think as we discussed about, some of the good attributes that make a digital identity really valuable. I think the verification and the authentication at a high assurance, right? So even if you are using in the government sector or you are using in the private sector, fantastic, it should have the same standard, whether you are applying it for admission in a college, opening a bank account, or applying for a job. It has to have the same kind of an assurance wherever there is a verification required. Again, from a the other perspective, like it has to be unique within a particular system, and even a system should uniquely give you an identity which represent only one individual. When it comes to the consent and the privacy, I think those are also very important aspect, as we discussed, that it has to provide the user privacy at the discretion of the user. Now, when it comes to why blockchain is needed, I particularly feel that blockchain raises the bar for which we are talking about the privacy enhancing aspect. So that's where blockchain comes very handy. It provides the unlinkability between the secured identity, right? So if I'm using my email ID, every time I, let's say, book a flight ticket, go to a hotel, and then go to a restaurant, there is a linkage possible where I can indicate that this person, we can create a digital avatar of a person and indicates that this person has moved from place A to B, stayed in a hotel, ate at a restaurant, and so on. That kind of a unlinkability between, the different activities can be done, which can again be substantiated with the help of blockchain. So Mushi sir, what's your view on this? Look, with the blockchain, you have, as both Ravi and Debjani has mentioned, that you can do a lot of different things in terms of verification. You have full control. We are moving in a world where data localization and privacy is becoming fundamental to anything. This started with the GDPR regulations in Europe, and now we are moving to something similar globally. Now, with the blockchain, we have to remember that it's not a lightning rod. It is not a solution to everything else. It's just a newer way of controlling and doing things. Networks can also be hacked, not the blockchain itself, but the networks could be hacked and data could be leaked. So I think it's going to be very important that the blockchains that we use or the networks that we use are having strong security credentials and cybersecurity credentials in particular, and are being, in a certain way, you may start seeing governments authorizing certain networks to be allowed to run digital identities, right? Now, we're going to have a two-tier model going forward. One, which will be government verified, government certified in some senses, and non-government certified, which will be used for everything else. For example, you could be using it for regulated mandates where identity is required to be checked, but it's not because the government needs it, right? So you could then use any type of blockchain which can verify yourself. So that, I think, is going to be the beauty of it. A key element is going to be how interoperable are these going to be and are able to converse with each other, given that there are going to be many protocols. And I do feel that the bridges and the connectors between different blockchains are going to play a vital role for a smooth transactions as well as smooth process between the consent layer, the privacy layer, and then the approval layer. So Prasanna, as we are talking about this aspect, what makes a good digital identity, as what Ravi has already highlighted, that a single parameter or single identity is required. But as Mushi sir had already highlighted, that blockchain will play a crucial role going forward. What's your opinion on this? Yeah, certainly. At this moment, I could see that a lot of knowledge is flowing on a digital identity with the conversation with Debjani, Ravikant, and Mushir. And going forward, I think what I can see that blockchain is going to be one of the answer for implementation of better digital identity. A good digital identity today, maybe in India, we can talk about Aadhaar, right? So wherein if you talk about it is supported by government, which is a unique, but there are some additional values as Ravikant was speaking about. How do we really make sure that it is unique and there should not be any duplicate copies of those Aadhaar, right? And followed by the other aspect, which is consent management, which is getting developed. So I think and the last but not the least aspect, which I'll talk about, which is interoperability. Today, India might have its own
Aadhaar, how this same person can operate in another country, right? I think some of the projects like Digital 2020 could really help. Like Germany is really building on a similar platform. So let's look at how we can have a blockchain-based digital identity, but moreover, blockchain has its own challenges or a maturity cycle where interoperability will play a major role. I think interoperable digital identities will be the future of a digital identity. Yeah. So Ravi, as we are talking about this aspect, the follow-up question to what Prasanna has already highlighted, as he has already mentioned about Aadhaar and its broader use, roughly around 1.3 billion odd population. So can you recommend, if Aadhaar is already there, Aadhaar to hai aur wahan pe successfully implement bhi ho chuka hai. So how India should use digital identity? Any recommendation or any projects Polygon has taken, to take this initiative forward? When it comes to India, we pretty much have similar problem related to identity, what we are seeing in the other part of the globe. However, they are at a different scale, right? And we also have few more layers within the paradigm if we try to differentiate based upon education, monthly income level, or let's say access to internet, right? So if when it comes to, digital identity, as we have been discussing, Aadhaar, DigiLocker, eSign, I think those has differentiated India. And we have a lot of age when it comes to digital identity compared to the rest of the world. I mean, the way I see, India can certainly leapfrog basis this kind of a foundational layer that we have for digital identities, creating like a utopia scenario connecting different parts of the journey for a citizen. For example, getting a digital identity right in the hospital for a kid. From there on, when there is a need for vaccination, there are automatic notification from the nearby hospital, because they know the age or let's say the time period for the kid. Moving on, let's say how many schools should be open in a periphery, depending upon the age group of the kids. From there on, moving to what kind of job opportunities are there, basis the credentials that a person has acquired. From there on, let's say it could be the medical facilities for the senior citizens and so on. So the entire journey can be connected based upon the type of data that can be there for the individuals. And again, there has to be privacy maintained for this one. So I believe this kind of layer would be very, very fundamental. And what we are doing at Polygon is adding certain types of project, especially in the virtual world, how this kind of identity play a very critical role, whether it is, giving a voting right to an individual, whether we are talking about transferring the digital identity related assets from one person to another person, will management and so on. So there are different aspects that we are connecting at. Fantastic. So few keywords, Debjani ma'am, I've picked up, what Ravi has highlighted is this transfer of its ownership as a digital, of digital assets to others as far as virtual world is concerned. And there are several projects which the company is taking as far as digital identity concerned in the medical field, or as far as schools, as far as the education sector is concerned. So what's your view and opinion on this? Yeah, of course. I mean, I also work with EarthID, which is a decentralized identity solution. So we are also finding a lot of interest in the edutech sector. We are actually going to production with a couple of projects in that space outside India, and mostly, in Middle East countries or Australia. There are so many different areas, not only in India, but outside, we can find it. On the top of that, there is a new sector which is pretty interested in this area, which is neobanking. So neobanks are some digital banks, who are associated with a traditional bank. So let's say that the users who are already there, already affiliated with a traditional bank, without any further investment, they can directly get access to the neobank if we can create this kind of solution. So this is one sector where we are finding a lot of interest. So Bushir sir, what's your opinion as we are talking about a broader recommendation as far as India is concerned? Prasanna has already highlighted about Aadhaar and broader initiative which India should adopt. There is something which is coming out, the project which is taken up by Polygon and EarthID as well. What's your view on this? I mean, look, India is very unique globally in terms of having mapped, almost 90%, 95% of our population onto a digital identity that can be used, right? Sure. And it's just a matter of regulations in terms of consent, etc. And it's all mapped out. So you have to be very balanced in the use of, do you really need blockchain for a lot of activities? Maybe, maybe not. But currently, I don't think for all applications we need blockchain. I think there is a 3 to 5 year period where we can then start deploying.
because scale is going to be a very important element for most blockchain projects. And when we're talking about 1.2 billion people, and this is not going to be like one check every day, it's going to be billions of checks that are going to be used for a variety of different applications. So I think there is a utility. I see it as starting with smaller use cases, property checks, a bunch of other things, maybe for a few loans, etc. You could link it for more high value transactions. Whereas for smaller value transactions, I think Aadhaar is more than enough. We also have to be very mindful that less than half, about 800 million people, so 80 crore people are on the internet, but 60 crore people are not yet on the internet technically, right? So the use of digital identity also has to be powered with access to internet. If you don't have that, then you're going to struggle with use of blockchain, right? You can use Aadhaar ID because you're just entering the number and that can be verified. But with blockchain, you do need a connection to internet. So we need to build bridges which will be helping with the off-chain, on-chain element when there is no internet connectivity. Yeah. So Ravi, my next question is to you is, as Mushir has already highlighted, there are roughly around 80 odd crore people who are using this internet facility, and the services we are offering is roughly around for 80 odd crore people. But there are still 60 odd crore people that are not using internet. But for them who are using this internet facility, scalability and speed has always been an issue with blockchain. So do you think decentralized blockchain-based identity would be verified quickly with fast transactions? And since you are a huge organization and working on this aspect very closely, so what's your view on this? So certainly, the type of innovation and development happening in this space, I'm sure that if we are talking next year, we will not be talking about the throughput and the scalability. I think this is the problem. This is a problem that is getting addressed. Let's say at Polygon, we are aiming to scale Ethereum to 1 billion users. Right, so that is the type of scaling that we are aiming for without sacrificing decentralization or security or speed. Let me tell you the rationale behind why we are confident in terms of our talking for this steep number. So we believe that making proof generation more efficient has been one of the most important challenge for scalability. Now with the ZK rollups and the ZK solutions out there, if I take one of the example of one of the solution within Polygon umbrella, which is Polygon Zero. 2 years back, generating a recursive proof used to take at least 2 minutes of time. Now the innovation that has gone out, we are able to generate the similar kind of recursive proof in 170 milliseconds. And this is just on a single laptop. If you try to scale it up with the hardwares and the innovation that is going on, I'm sure that the scalability that we can achieve is like infinite. Fantastic. Yeah. So with this, we anticipate that proving time and cost will continue to decrease substantially in the near future, and we will not have this concern in terms of scalability for blockchain. So ma'am, what's your view? Say what Ravi is highlighting is, some process which used to take roughly around 120 odd seconds is taking 170 milliseconds. So what's your view as far as the growing technology aspect is concerned? Yeah, I mean, this is news to me. In fact, this is wonderful because, we also did some NFR testing and we found that, whatever you said is absolutely true, that, blockchain ecosystems are usually slower than centralized ecosystems in general. But if Polygon can achieve it, because we also work with Polygon. So we are a product. Fantastic. And Polygon is one of the blockchains that we use. So if we can get that kind of scalability, then it's wonderful. But I would also like to say that blockchain is there going to stay, definitely. But at the same time, we would also have a centralized ecosystem. Yeah. Both of them would coexist. And on the top of that, we would also have confidential computing. So together, these three can give rise to a lot of new use cases. And perhaps in future, let's say in India, we got 1.3 billion people in India. And let's say that we are going for something like a general election on blockchain, let's say from remote election. That means the user can vote from a remote location and use blockchain because blockchain has got its own capabilities. Perfect. Previously, I thought that perhaps we do not have a blockchain ecosystem to answer to that. But yeah, if Polygon can do it, then wonderful. But at the same time, we would also need a centralized repository because
the centralized repository would be used for deduplication. Let's say that somebody is applying for Aadhaar, then that should be some centralized repository where you can check that the person has not created a Aadhaar ID previously, right? That should be some check somewhere, right? So centralized repository and blockchain would coexist. On the top of that, for matching the sensitive data, we can either go for zero knowledge proof, or we can also go for confidential computing. So all the three can be used together. So Mushi sir, as we are talking about time taken as far as confirmation is concerned, for users it's roughly around 4 to 5 minutes on the block as we are confirming any transaction. But here we are, Polygon, who is confirming that they have scaled it down to 170 millisecond. So what's your view as far as this race towards faster transaction is concerned? It's wonderful if it can be achieved, right? And I'm sure Polygon's working to make that scalable and achievable for the billion users that they're talking about. Speed is definitely a criteria. I do put a word of caution. Sometimes we overplay speed. My background, I come as a high frequency trader, right? My trade used to take 170 milliseconds to go from India to the US and back. And we were very sensitive to 200-300 millisecond changes. But when you are doing things like identity checks, etc., I think there is, 1 or 2 seconds or up to 5 seconds is actually a fairly acceptable time frame. If you were doing it in person, you spend minutes. If you're doing it online, the ... is roughly 10 to 20 seconds for verifications. Sure. So I think we don't need a race to zero or race to, instant in terms of under a second. If it can be done, it's great because it can have a lot of applications which don't require full identity checks and partial identity checks. So it'll be wonderful, but I don't think speed at that level is necessary currently. With 5G and 6G in the future, that will become very important to be inbuilt. Yeah. So Prasanna, what's your view as we are talking about such a great initiative with technology giant, as far as a huge company, an initiative which Polygon has taken? What's your view on that? I think it's an opportunity for many companies. Polygon is one of them, and they are doing very fantastic. And what we would say that Ethereum accelerators companies, right? Polygon, or there are many more, right? The Cosmos or Solana. I think all these platforms has an opportunity to really see what all the use cases they can bring on to the citizens of the world. But at the same time, what Mushiri said, right? So it has to be a cautious approach, rather a practical approach, doing a proof of concept, pilots for a particular use cases, right? Right. If I talk about some of the use cases in India-centric, it's already, MIT is already working with some of the banks on video KYC on top of a blockchain, right? Wherein we could see that if it is get rolled out, all the bank account can have a unique identity and if these customers want to open another bank account in another bank, I think they can really use this platform. And similarly, I think payment platforms, right? Typically, these days we talk a lot about central bank digital currency, and many countries has already started pilots, implementation, and that too on a blockchain. What is that? We have to look at interoperability aspects, centralization aspect, the way Debjani has spoken about, or blockchain is there, but let's understand nitty-gritties of a blockchain technology, what comes as an adoption, right? Tomorrow's identity system gonna be an invisible system. Right. Today we may talk about billions of people, but I think tomorrow we have to talk about those machines, wearables. They also gonna have their own identity, which will be backed up by a human identity. I think world is gonna be more beautiful. I think that is why we need to do a lot of research. I think blockchain will be a game changer in that aspect. Yeah. Cryptocurrency market is under broader stress as investors shun riskier assets such as stocks and cryptocurrencies amid an uncertain economic environment. We have invited a special guest, Mr. Raj Kapoor. Every investment has a summer and a winter and an autumn and a spring. Miners have sold 9,500, institutions are selling. But let's look at the other side. If they are selling, somebody is buying.
Next question is to Ravi. There are so many different protocols in DIDs. Is it possible to achieve interoperability with DID in the future? If you can just highlight that very quickly. Sure. So I think, interoperability is going to be a very key aspect. Especially there are different ways wherein the digital identity has been considered to be, becoming interoperable. Universal Resolver has been one of the initiative where, you can resolve the DID methods across any different implementations, out there. However, I wanted to emphasize a little bit more on the digital identity that we are talking. I think we are, if we are thinking identity is only the KYC information, I think we are not broadening the identity scope, right? When I'm referring to identity, I'm talking about identity in multiple ways, right? So it could be your data, it could be your asset, it could be as simple as that I'm a Mumbai Indian fan, right? So I think those kind of attributes or credentials are also part of the identity. And when we are talking interoperability in the digital world, we are talking about, this many aspects of an identity. It could be your digital assets, it could be your digital data, it could be your consent and so on. And interoperability across different networks is going to be very crucial. And there are various steps that are being created in order to make sure that the data can be easily shared across different networks. So ma'am, what's your view very quickly, if you can just highlight that this, as Ravi was highlighting, that it's beyond KYC. What's your view on that? Yeah, sure. I mean, there are standards like W3C, using which you can create DIDs on different platforms, be it on Polygon, be it on Polkadot, be it on Ethereum or Hedera Hashgraph. You can create DIDs. But what I have found that many organizations have already created it. And if you want to achieve interoperability today using those standards, it's really difficult because, you cannot change your business model. You have already created that product. True. So I think the right way of achieving interoperability is the same as how the B2B, it has been done in the B2B space. Like, let's say, if you want to make Hyperledger Fabric and Coda interoperable, then you introduce bridges between them, just like what Mushir said. So, so the same, I think, is a practical solution in order to achieve interoperability between different kind of DID solutions, so that you are not touching the existing business. So you are just creating mediators. Correct. Which can operate between them to change one format to another rather than changing everything from scratch. Fantastic. Mushir, you want to take over from here? Right. And look, identity, for me, what Ravi mentioned, very important, that it's going to be not only about KYC, there's going to be a lot of other elements. And identity can be anything. Your Google ID is now used for check-in and many other places. Right? Your Apple ID is used for verification because there's an underneath layer. So, for example, if it's a Polygon ID, and I know that Polygon ID is a trustable ID, then I just need to verify that the Polygon ID is valid. I don't need to verify the underlying data because I trust Polygon to have done the the work already. So that provides you an additional layer. I am very conscious about tech inclusion. I do believe in many emerging markets that is left out, and being able to bridge not just between blockchain layers, but being able to bridge between blockchain and non-blockchain rails is going to be important. So if I don't have a blockchain-based identity, be it a DID or a self-sovereign identity, and I'm just carrying, say, my Aadhaar card, how can I be part of this network and not be excluded, right? Yes, you can then create a layer, but can you do it without having to create a self-sovereign identity is going to be a good challenge that I think we can overcome, but that will be an important element for people who still don't trust digital and still want to maintain some form of physical element. So yeah. Over to you, Prasanna. Yeah, I think very good views by Ravikant, Debjani and Mushir. I think there are a lot of attributes of digital identity. Some of those attributes inherently comes to you while you're born, your date of birth, where do you live, what's your name and so on. Then there are some other attributes which are given by government, right? It's Aadhaar or PAN. And now these are the third party attributes based upon your interest and based upon where you have really registered yourself, like you have some example like Apple ID or Polygon ID or Google ID. I think as a combination, how user will have a control of a self-sovereign identity. I think that's how will be the game here onwards. Yeah. We are ending our panel discussion, with couple of questions. Last couple of questions is so Ravi, what will be the role of digital identity security in metaverse? If you have, if you can throw some light on it, or are there any projects which Polygon is, currently working on? Yeah, certainly. So, I think digital identity is basically a user gateway, and it's a foundational layer
to access and interact with any Web 2 or Web 3 application. And now we are talking about metaverse. So I think that becomes even more crucial because, we are talking about a totally virtual world where users are interacting. So identity plays a very critical role there. So if I look at from a virtual world, there are different touch points that a user would be doing. And this internally helps in terms of enriching the digital identity for an individual. So for instance, if a user is interacting with several tabs, he's building up his digital reputation. Fantastic. This digital reputation also gives access to repurpose this identity for different accesses, airdrops, and events like that. Right. In fact, the current world where we are talking about whether a user is whitelisted or he is not a whitelisted, but we don't have a different grades in terms of engaging better with the user. With this digital identity, what we are doing in the metaverse is we are also enabling user engagement at different tiers. So user would be able to access different services and companies would be able to engage with their customers across different levels based upon the reputation that they create. So, ma'am, if you can just quickly highlight, what will be the role as far as the outlook is concerned in the metaverse? Sure. So I'll give you a very small example. Like a user is visiting a mall in metaverse. So user has got an identity, the mall has got an identity, and all the shops within that mall have got their own identity. And if you are purchasing something which is unique, that means all of this whatever items you are purchasing, they would be NFTs and they would have their identity. So that means that everything that you are dealing with within metaverse would be having their own identity. Sure. But that could be much more in future. So I'm just that much I can say as of now. So actually there are a lot of things that can be done in this space as far as metaverse is concerned. Mushir, what's your opinion on this? I agree. I think there's a lot. Metaverse in itself, we put it as one bracket, but there are a bunch of multiple different interactions in different platforms. So virtual worlds and AR augmented worlds, I do see digital identity play a role when let's take Accenture as an example, right? They're building what's called the nth floor on the metaverse, and they're going to be doing onboarding of 150,000 of their employees. So if you want to come on board, you just need your Accenture ID, which is validated, you enter and it's done, right? It's a similar thing for many other enterprise use cases where the identity can play a role, which again, it's your corporate ID. And I think Ravikant mentioned that very nicely, which is it's not only your your personal IDs in terms of your verifiable government IDs, but many other identities that you can use to interact. That's going to be quite interesting. Again, similar stories. People don't understand the metaverse so well. So, being able to showcase protection for them. I think education is going to play a very big role, which is ensuring people know how to handle their identity on the metaverse or any virtual platform will be very key to safeguard their identities, because that could be easily reused and replicated very quickly with somebody else. And there's no control because somebody in other part of the world may be using it potentially if they get the details. So you want to make sure that people are able to use, have their own keys that protect them well. Yeah. So education will play a vital role. Absolutely. I think if you go back in early 2000, right, the way we used to create a lot of Yahoo Messenger IDs, right? It was a liberty to play around that, right? And a lot of fake profiles. Even at social media also, we have seen the challenge of fake profiles and so on and so forth. So while we are entering into Web 3.0, as Ravikant and everybody has said, it's very, very crucial how we are entering in a pure way, better way. I think that is how better digital identity, good digital identity on a metaverse will be very, very helpful. Primarily, we are a bit far from actual metaverse use cases, right? There is a lot to do. I think with the 5G adoption, quantum computing, I think that will be an actual reality. But while we are entering into that virtual reality kind of exercises, I think we should have to have a better, interoperable, good digital identity ecosystem. So Ravi, as we are talking about this aspect, I'm talking about NFTs as a broader market, and we have seen a boom in this segment in 2021. So as far as digital identity is concerned, we are, as far as NFTs are concerned, so we are talking about phygital, aspect of this NFT. So what's your view? Is there any aspects you want to touch upon, or any projects you are undertaking as far as your the Polygon initiative is concerned? Sure, there are several of them, and I think without giving your name, primarily I talk about the use cases, the way they are evolving. So, for example, it is again going back how we can make the customer engagement more interesting. So, for example, as NFT holder, let's say if I hold 5 board apps, finger crossed in the previous price rate, if I'm holding those five board apps,
how can I be given a privilege access to, let's say, an airport launch, right? So I think those are again very interesting use cases where, let's say, I'm holder of those 5 board apps as an identifier, but I'm not even disclosing it to the airport launch. Still, I'm able to prove that, yes, I have these 5 NFTs and I get certain accesses, right? So I think there are very interesting use cases that are coming out where, we are trying to leverage basis the NFTs that are involved. How can we provide better engagement with the customers, whether it is the shoe that are being sold along with the Adidas launching their own shoes, but along with that, they are also launching NFTs, which gives user again to show off that they hold this particular new model shoes, which are limited in numbers, let's say only 500 of those shoes. And then again, flaunting those shoes in the Nike enabled metaverses. So Ravi, as we are talking about, this 5 board app yacht, NFTs, which you spoke about and the access in the airport lounge. But since if you are holding a 5 board app yacht, NFTs, you are already rich. You don't need any kind of shops, as far as airport lounges are concerned. I mean, certainly freebies are anyways invited. Yeah. I was just kidding. Yeah. All right. So moving on, last question to you, ma'am, is NFT and this, the phygital thing which we are talking about. Is there any aspects you want to touch base upon? Yeah, I mean, that could be NFTs related to identities. I'll give you an example of maybe, that could be more use cases in future, but for as of now, let's say there are 2 organizations who are entering a deal of collaboration, and out of that collaboration, certain NFTs are generated, just like shares as of today, right? Shares are generated. Each share is different. So each share is an NFT, and that can be sold in the market just like shares. So identity is handled here, and also NFT is handled here. This is a potential use case, but there could be many, much more. So perhaps with time we will come to know. Bushir sir, what's your quick take on this? So like NFTs, everybody loves NFTs, but I think not everybody is going to have the value jump that Bored Ape Yacht Club has or the CryptoKitties has. And then there are crashes now, right? We're seeing that with quite a few of the NFTs. But yes, identity, I mean, concerts is something that somebody mentioned here, or, going to football games or anything else, right? Now you have that as a verification, you're part of that club, right? Quote unquote, and you can then utilize that as you build forward. So NFTs, there's a lot of hype around art and collectible NFTs. For me, the real future of NFTs lies in real asset verification. So for example, your properties or any other transactions that you want to do, that becomes an NFT, or as we mentioned about concert tickets or membership clubs. And if you are going to tie a digital identity to that from a blockchain perspective, that becomes a combined element, right? So you don't have to validate anything else, but being part of that special club, that's your ID card. The NFT is there for you to process that. So the NFTs themselves could be your identity in some senses, and then you could create a layer that is a consent-based layer on what details need to be shared from the NFT about yourself. Yeah, I think a wonderful discussion today. I think last but not the least on NFTs. I think NFTs has made a lot of noise in last couple of years. But I think we yet to look at what all those prominent use cases can really helpful for every citizens out there, with attached with a better digital identity and the use cases, the one we spoke about with Debjani, or the real use cases which is backed by some real asset, how fractionalization of real estate could be, or bonds. I think there are a lot of use cases coming up, but I think what NFTs bring on advantage is that it's secure, we can trace the way you will not able to do that in a Web2 world. I think that's the future all about, but we need to see how efficiently we can implement NFTs. Yeah. So one last question, as we're talking about digital identity, moving away from the digital identity, my last question is to everyone. To begin with, Ravi, we have seen a broader carnage in cryptocurrency market as far as the market prices are concerned. We have seen this Luna episode and the damage it has done to investors. Is there any advice you want to give to our viewers, how they should deal in such situation, and what is the way forward from here on? Ravi, if you can just highlight that. Yeah, I mean, irrespective of talking about the price speculation, I would say that, unlike what happened in 2020, 17 or 2018, right, when there were a lot of paperware instead of the real use cases or the infrastructure that we now see, I believe this technology is going to sustain. We would see that a lot of it would go out of the road, but we would see more mature use case coming out. There are a lot of infrastructural things that has gone up.
the technology is more matured. So, I mean, from our perspective, we are very bullish that this time period would give us to come out with more solid use case and fundamentally make Web3 story more stronger. Very quickly, top 3 things to look going forward. What's your take on that? I think digital identity certainly comes on top of it. User interaction has to improve, and that user experience is very important. And third is educating the users to move from Web 2 to Web 3. Ma'am, what's your quick take on the crypto market as far as the volatility is concerned? And is there any opinion about the Luna episode which happened? And you want to suggest anything for our viewers? See, the thing is, I'm a solution architect. I do not trade in crypto, but we use crypto because if we are working on a blockchain layer on top of others, then definitely you have to think about how the market is going, where the market is moving towards. So perhaps it's not the right question for me because I'm more towards the technical side of it. Sure. Yeah. So Mushir, is there any opinion you want to give about the episode which happened and we have seen a broader market sell-off? What's your view? Look, there's been a lot of conversation around here, but the key element here is I'm not going to talk about whether stablecoins or others need to be issued by private parties or by central banks. What is very important in this episode is due diligence, right? And governance. I think that's two key things that come through. Perfect. One, in terms of due diligence and understanding how they work. Algorithmic stablecoins are not an easy concept to understand, whereas fiat-backed stablecoins like USDC or USDT Tether are more easier to understand. So you're doing your due diligence in terms of understanding what's happening, what is the process in place, what will be the governance. And secondly, when I said governance, in terms of looking at where is the money, do they really have it? Is their audit done, etc., is going to be fundamentally important. Fantastic. We talk about why blockchain was started and why crypto started. It was about trust, right? There's an element of how can you build trust without needing intermediaries. And this is another element where you need to be able to trust that. Where I think some of the stablecoins have failed is to show that transparency in their end-to-end transparency and where the holding is, etc. Saying like Tether came out saying, oh, we cannot disclose where our treasury holdings are, who's holding it, etc. But that should have been something that's fundamental to this ecosystem is transparency. And so going forward, I think when you are looking at the crypto markets, ups and downs are part of the market. This market is up hundreds of percent as compared to a couple of years back, but 50% down or 100% down. 70% down for a lot of the cryptos in the last 2 weeks. So it's a high risk asset class. If you want to invest in it, do your due diligence, read up, don't blindly trust. Greed is not going to take you anywhere. If you are somebody who believes in blockchain, etc., then you're not investing in these tokens for speculative elements. You want to own these tokens for the utility they provide, right? Like we're talking about Polygon identity. So if you want to own the Matic, you're looking at that so that you can enable activity on the Polygon blockchain. So you should be aware of the utility element rather than the speculative element. Yeah, I think very good views at the end of a discussion you spoke about, Luna. Just imagine that these kind of events are occurring on a daily basis. What's going to happen to that particular crypto industry, right? I think that's how we need to look at how banking industry operates, right? It's quite regulated. Anything happens to your money, it's well taken care, right? I think crypto industry or crypto exchange need to learn a lot, right? What Mushi spoke about the governance aspect, right? Or a compliance aspect. How do we manage the dispute kind of aspect? I think there is a lot to do while technology is gearing up and technology is improving day by day. I think processes, compliances, governance also another part which a customer needs to learn. These are also important, and as well as those service providers who are offering those cryptos or crypto exchanges, they need to also learn these are the important aspect apart from trading and all, right? So I think they need to learn from some of those regulated entities. The beauty of technology remains out there, but with the better compliance, better regulation, I think we'll not really have that kind of incidents again and again on a daily basis. Yeah. So beauty of the technology. To add one thing here, I totally agree with you. The utility is something that we should be concerned about. Like let's say that I work with a couple of projects in Switzerland for their money market where the banks are actually working in different currencies and they are converting their money from one currency to another, and they're using Ripple for that. And you can convert that within 3 seconds. So it doesn't matter what is the price of XRP, which is the Ripple's cryptocurrency, whether it is very high or very low, it doesn't matter because you are using that cryptocurrency network for only 3 seconds. So the fluctuations doesn't really matter. So one needs to understand that how exactly you are using that blockchain or that particular crypto as a utility rather than
speculation. So that's the word coming in from our panelists, that digital identity, as far as its outlook is concerned, there are a lot of work that has to be done as far as this project is concerned. Thank you so much, Ravikant Agarwal, for being on our show and educating our viewers about this technology and its way forward. You spoke really well about broader technologies that are actually, you guys are working on, and the initiative as far as digital identity is concerned. Thank you so much. And thank you so much, Debjani Mohanty. You spoke really well about the Earth ID initiative, and you gave a broader perspective as far as digital identity is concerned. Mushir Ahmed, thank you so much as far as, the broader view you have given as far as the entire market scenario is concerned, and a broader view on the global aspect as well. Thank you so much. Prasanna Lohar, thank you so much for organizing this. Your last words on that. Thank you so much, Ravikant, Debjani, Mushir. They are global influencers. Through this series, we look forward to bring on many more influencers and educate all of our viewers on actual Web3 and blockchain technology and relevant use cases. So thank you so much once again, Crypto TV, for bringing this episode. As usual, wonderful job. So digital identity is very crucial as far as Web3 is concerned. Investors should always look for a better opportunity and way forward as far as their personal data is concerned, because digital identity has a long way to go. Thank you so much for being a part of this panel discussion. This is Manoj Dara signing off from Crypto TV. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Today we are extremely excited to have with us Mr. Abhijit Hajra. So what seems to be the future of virtual reality? In virtual reality, we generally has to wear a virtual reality headset. By wearing that virtual reality headset, we enter into the virtual world. We can obviously be in the ecosystem, feel the ecosystem, and act in that ecosystem. क्रिप्टो करेंसी आज के दौर में दुनिया भर में मौजूद इन्वेस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हाल के समय में इसका इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल से उबरने के लिए भी किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो से जुड़े कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल और इम्पैक्टफुल रियल लाइफ इंसिडेंट्स और मूवमेंट की जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 20 साल का एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी, जिसे रशियन इन्वेजन के चलते महज एक यूएसबी ड्राइव लेकर, जिसमें सिर्फ $2000 के बिटकॉइन थे, अपना देश छोड़ने का कदम उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, उसी की तरह कई लोगों को जब अपना देश इमरजेंसी में छोड़ना पड़ा, तब पेन ड्राइव और कोल्ड वॉलेट में स्टोर्ड क्रिप्टो ही उनके लिए उम्मीद का सहारा बने। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है अफगानिस्तान की रहने वाली एक टेक कंपनी की सीईओ रोया महबूब का।
पिछले साल तालिबान द्वारा देश पर कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई थी रोया, वो भी ऐसे समय पर जब उनकी कंपनी में काम करने वाली अफगानी महिलाओं के पास ना तो बाहर जाकर काम करने का अधिकार था और ना ही बैंक अकाउंट का एक्सेस। ऐसे में इस मुश्किल की घड़ी में इन अफगानी महिलाओं का सहारा बना क्रिप्टो। रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन में तनख्वाह देकर उनकी मदद की। क्रिप्टो का रियल लाइफ ऑल्टरिंग यूज केस रशियन इन्वेजन के टाइम पर पूरी दुनिया को समझ आया, जब चारों तरफ वॉर का माहौल है, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स बंद हैं, एटीएम्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं, लोकल करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट डाउन है, ट्रेडिशनल और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स डाउन है। तब यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया भर के लोगों ने क्रिप्टो में डोनेशंस भेजी। According to Digital Transformation Deputy Ministry of Ukraine, Mr. Alex Bornyakov, यूक्रेन को अब तक करीब $100 मिलियन की क्रिप्टो डोनेशन मिल चुकी है, जिसका उपयोग वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाई और हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। यूक्रेनियन गवर्नमेंट बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट और डोजकॉइन को बतौर क्रिप्टो डोनेशंस अपना रही है, जबकि कुछ नॉन प्रॉफिट और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कम बैक अलाइव, यूक्रेन डाओ, एंडाउमेंट और यहाँ तक कि कीव इंडिपेंडेंट भी क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही है। लोग क्रिप्टो डोनेशंस का उपयोग वॉर टॉर्न कंट्रीज और नेचुरल कैलामिटी से पीड़ित लोगों की मदद करने के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोरोना पैंडेमिक जैसी मुश्किल की घड़ी में अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो अर्थ की 6% सरफेस को कवर करने वाले ब्राजीलियन अमेज़न जंगल को डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए 1987 में स्थापित द रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन ने क्रिप्टो कम्युनिटी की मदद से $100 मिलियन का क्रिप्टो डोनेशन एक्वायर किया, जिसका उपयोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेव द चिल्ड्रन दुनिया का पहला इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने फिलीपींस में टाइफून हयान से आई तबाही के बाद 2013 से बिटकॉइन को डोनेशन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इस तरह से पिछले साल इस ऑर्गेनाइजेशन ने #HoldHope कैंपेन के जरिए $5 मिलियन से ज्यादा डोनेशंस हासिल किए, जिसका उपयोग यूक्रेन के वॉर टॉर्न इलाके के बच्चों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक के दौरान इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने $1.5 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की, जिसमें कोविड-19 रिलीफ फंड के रूप में इंडिया को भी $1 बिलियन का डोनेशन मिला। लेकिन जहां माया यानी क्रिप्टो है, वहां माया जाल भला कैसे ना हो। रिसेंटली ऐसा भी कई केसेस में सामने आया है, जहां स्कैमर्स ने फेक क्रिप्टो डोनेशंस, वेबसाइट और एडवर्टाइजिंग के जरिए यूक्रेन के नाम पर लोगों को लूटा। इतना ही नहीं, पैंडेमिक के दौरान भी डार्क वेब पर कई फेक कोविड-19 चैरिटीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घोटाला किया। सो किसी भी चैरिटी या एनजीओ को क्रिप्टो डोनेट करने से पहले उस एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स थरोली चेक जरूर करें। बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग यूएसए क्रिप्टो में डोनेशंस देने पर डोनर्स को टैक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्रिप्टो डोनेशंस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन होप इन फ्यूचर इंडिया में फिएट करेंसी की तरह क्रिप्टो डोनेशंस में भी टैक्स इंसेंटिव मिले, ताकि और ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स क्रिप्टो डोनेशंस के थ्रू जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने आए और कदम बढ़ाए। लेट्स होप क्रिप्टो अडॉप्शन के साथ साथ क्रिप्टो डोनेशन का रेट भी बढ़ता रहे और क्रिप्टो का उपयोग सिर्फ बेटर बैंक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेटर इंक्लूसिव सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए भी किया जाए। आई होप हमारी स्पेशल स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरीज देखना ना भूलिए। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अब क्रिप्टो स्कैमर्स का जाल भारत समेत राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक गिरोह जो क्रिप्टो के माध्यम से स्कैम कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। ये गिरोह लोगों को ऑनलाइन लोन्स का वादा करता है और क्रिप्टो में निवेश करने के लिए वो धन का उपयोग करता है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 4 लोगों को एक गिरोह को ऑनलाइन लोन की सुविधा के बहाने लोगों को धोखा देने और विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त फंड का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान दीपक पटवा, सुनील कुमार खटीक, देव किशन और सुरेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस मामले की शिकायत पीड़ितों में से एक ने की थी, जिसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था, लाइट योर अप्लाइड लोन इज अप्रूव्ड, यू कैन चूज लोन लिमिट रेंज फ्रॉम ₹2 लाख, प्लीज लॉग इन टू ऐप। मतलब आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आप 2 लाख रुपए तक की लोन लिमिट चुन सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। पीड़ित व्यक्ति ने इस गिरोह के झांसे में आकर लिंक को ओपन कर अपनी बेसिक डिटेल्स अपलोड की। इसके तुरंत बाद उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें उन्हें लोन अमाउंट का 5% एडवांस रूप से जमा करने के लिए कहा गया, जो कि कंपनी के नियमों के अनुसार बाद में वापस कर दिया जाएगा, ऐसे कहा गया। 3 ट्रांजैक्शंस में कुल 40,000 रुपए जमा करने के बाद उसने व्हाट्सएप पर जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चलता है कि यह अमाउंट मध्य प्रदेश के नीमच जिले के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। आगे ये भी पता चला कि 2 दिनों के भीतर कथित खाते में 75 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर कर दिए गए थे और उस पैसों का उपयोग करके विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस अपराध में कुछ सस्पेक्ट्स को चिन्हित किया गया और उन पर तकनीकी निगरानी की गई। इसके बाद वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सक्रिय पाए गए। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में छापेमारी की गई और तकनीकी विश्लेषण के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर चारों आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यूट्यूब के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी का विचार आया था। वे टेलीग्राम ऐप पर कुछ चाइनीज नागरिकों के संपर्क में आए जो ऑनलाइन लोन की सुविधा के बहाने निर्दोष लोगों को ठगते थे। वे बैंक अकाउंट्स की खरीद करते थे और अकाउंट्स ओनर्स को 1.5% का भुगतान करके रजिस्टर सिम कार्ड और आगे टेलीग्राम के माध्यम से धोखा देने वालों को प्रदान करते थे। गहरी जांच से पता चला कि आरोपी ने यूपीआई के माध्यम से अलग अलग बैंक खातों में ठगी का पैसा प्राप्त किया और फिर बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर उस पैसे से USDT खरीदकर इसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी दीपक पटवा को USDT में कमीशन मिलता था और बाद में हवाला के जरिए अपने खातों में उसे रिडीम करता था। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह भी पता चला है कि कथित व्हाट्सएप नंबर का IP एड्रेस चाइना का था। उस नंबर से संवाद करने के लिए दीपक चाइनीज भाषा में प्राप्त संदेश का हिंदी में अनुवाद गूगल ट्रांसलेटर की मदद से करता था। अपराध में इस्तेमाल किए गए 15 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड के साथ डोंगल, लैपटॉप, टैबलेट और 20,000 रुपए का अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और पीड़ितों की पहचान की जा रही है। तो दोस्तों, दुनिया में जितने प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज है उतने प्रकार के क्रिप्टो क्राइम्स और स्कैम्स हो रहे हैं और दुर्भाग्य से आगे भी होते रहेंगे। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे स्कैमस्टर्स को तो पकड़कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन बेहतर तो ये होगा कि ऐसे स्कैमस्टर्स के जाल में कोई भी विक्टिम ना फंसे और ये बिल्कुल मुमकिन है। इसे आप और हम मिलकर पॉसिबल बना सकते हैं। इस डेली ऑनलाइन लोन स्कैम के सारे विक्टिम इस स्कैम से बच सकते थे अगर वो फॉरवर्डेड मैसेज में आई लिंक पर क्लिक करके फेक लोन पाने के झांसे में न आते। तो मैंने क्रिप्टो क्राइम्स के कई एपिसोड्स में कई बार कहा है और आज भी दोहराऊंगा कि नो मैटर व्हाट, फॉरवर्डेड मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, ईमेल्स, टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में आई हुई लिंक्स पर क्लिक ना करें।
आपके क्लिक करने से कोई शातिर हैकर आपका अकाउंट जीरो कर सकता है या फिर इस केस की तरह आपको फेक लोन देने के प्रलोभन में फंसाकर आपसे पैसे निकलवा सकता है। अगर आप भी अपने ऑनलाइन बिहेवियर में जैसे मैंने कहा वैसे थोड़ी सावधानी बरते, स्पैम मेल्स और मैसेजेस की लिंक पर क्लिक न करें तो बाय डिफॉल्ट आप कई क्रिप्टो स्कैम्स और क्राइम्स के विक्टिम बनने से बच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो स्कैम्स और क्राइम से जुड़ी स्टोरीज के साथ मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे। पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीने हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे। हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल। याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल। मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल। ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन ॲक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या ॲक्सेप्टन्सला गती येणार आहे आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे। सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे। पण आपल्याला माहित आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात। समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं। मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं। समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे। 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात। जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो। त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदलात
त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही, या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते. एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है. बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पिछले एक साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी. उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी. लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है. दरअसल एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस ओपनसी पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी एनएफटीज मिंट करने की कन्वीनियंस थी. लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ओपनसी और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को. हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च की. जी हाँ, ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है. ओपनसी ही नहीं, और भी कई एनएफटी मार्केटप्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं. जैसे कि डेविएंट आर्ट ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं. इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म लुक्सरेयर पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है. तो कभी कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में एनएफटी को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं. चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं. आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी एनएफटी एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट एनएफटी कलेक्शन की थी. उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं. कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है. एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है. और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% एनएफटी ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% एनएफटीज को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं. तो यानी
इन NFTs की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। NFT की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छू मंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स NFT प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है NFT की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो NFT फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली NFT के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस NFT के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये NFT रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlyNFT नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक JPEG इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दे और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं। तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं। बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल NFT की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
हाय, क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथिरियम बद्दल जाणून घेऊया. इथिरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथिरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच. इथिरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे. गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत. इथिरियम हे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो. इथिरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे. हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते. हे ॲप्लिकेशन इथिरियम नेटवर्कवर चालवता येतात. इथिरियम आर्किटेक्टचे 2 पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी आणि इथिरियम ब्लॉकचेन. इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटेरिन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते. तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला. ब्युटेरिनला गणितात रस आहे. त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते. इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाराशिवाय. हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे, जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात. इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत. वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच. उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो. इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात. इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात, कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है. आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी. हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है. इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है राइट. अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के 2 शेर राइट. वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी 2 शेरों का राज चलता है. बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है राइट. क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है.
अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस? यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथेरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथेरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथेरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथेरियम तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथेरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथेरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथेरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथेरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथेरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे? अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं। हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट,
2022 में जो इथीरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथीरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मीन्स 2022 में इथीरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Welcome to the world of crypto. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability.
This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for Ghost-Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर. अरे क्यों? मेरी बात सुनो. You will be so impressed and so proud of me. चलो बताओ आपकी क्या बात है. मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे. That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है
मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a सातोशी के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना अपनी जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड। हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं चलते। और वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलियनेयर, या द एक्सीडेंटल मिलियनेयर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में। उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा, वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर, जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी। टीचर की डांट आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं, नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप एक कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना, चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए US।
ओके, वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी, और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था, और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान, और वहां से लेके ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल यूएस ने उनको बैन कर दिया था। और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बाइनेंस यूएस कर दिया, और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। Wow, that's amazing. और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, और अमेरिका से मुझे याद आए बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसिडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो। टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है, और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे UFO भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं UFO कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है, क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका decision खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us. क्रिप्टो की मेल डोमिनेटेड दुनिया में वुमनिया भी अपनी जगह बना रही है बॉस। ऑलरेडी आईटी वर्ल्ड में विमेन का कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। और क्यों ना करे भाई,
पायलट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपना परचम लहराने के बाद अब क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हमें बराबरी करनी है, यानी कि जगह तो बनानी ही होगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय, मेरा नाम है यशस्वी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और इस स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस के बारे में, जिनकी अचीवमेंट्स को देखकर शायद इंडिया की पोटेंशियल क्रिप्टो क्वीन भी इंस्पायर हो जाए और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में अपना सिक्का जमा दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। फर्स्ट पियर्स क्रिप्टो क्वीन का नाम है हेस्टर पियर्स। जैसे इंडिया का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की सेकंड टर्म कमिश्नर है मिस पियर्स। जिसे हमारे घर में चाहे कितने भी लोग कमाने वाले क्यों ना हो, पर मम्मी के अप्रूवल के बिना कभी बजट अप्रूव होता है। वैसे ही पूरे अमेरिका के स्टॉक्स और क्रिप्टो के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को इन मम्मी के डर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अरे मियाँ, तभी तो इनका निकनेम है क्रिप्टो मॉम, ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस क्रिप्टो मॉम ने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और येल लॉ स्कूल से पढ़ी है वकालत और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन की ये है तुर्रम खान। इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया अधूरे नॉलेज के साथ क्रिप्टो को लेकर के नेगेटिविटी फैला रही थी, तब मिस पियर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ा ही सेंसिबल अप्रोच अपनाया था और कहा था कि यूएस एंड दुनिया वाले एज फार एज क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड, वी कैन डू मच बेटर। जैसे यूएस अपने डॉलर से वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस एसईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। 2025 तक हेस्टर पियर्स यूएस एसईसी की कमिश्नर रहेंगी। तो लेट्स सी ये क्रिप्टो मॉम क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या इंकलाब लेकर के आती हैं, क्योंकि इनके नॉर्म्स का इंडियन क्रिप्टो बिल पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। लेट्स होप कि क्रिप्टो मॉम का मूड जो है वो एकदम तरोताजा रहे, ताकि हम इंडियंस को भी अच्छा खासा फायदा हो सके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन, महबूबा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाती हूँ। अरे आपको कहा था ना कि स्पेशल सीरीज है, जानना चाहते हैं इन फियर्स क्रिप्टो लेडीज के बारे में, तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। तब तक के लिए दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग आउट। Keep watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. वापस यहीं आना अगर क्रिप्टो क्वींस के बारे में है जानना। Today, we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. It is trying to rewrite the history by the way we are writing our ledgers. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. So crypto markets are in turmoil. Liquidity has dried up with the central bank's hiking rate, due to which trading activities in cryptos has fallen and so have their prices. Market participants believe that the primary reasons behind the present crash are macroeconomic factors and weak global cues that are also weighing stock markets down globally, as the result of the global market shrunk to $1.23 trillion from $3 trillion. So to discuss the reasons that are responsible for the fall in cryptocurrency markets and road ahead, we have invited two special guests. Let me introduce you to Sharat Chandra, Vice President, Research and Strategy, Earth ID. Sharat, welcome on Crypto TV. Thank you, Manoj. Thanks for having me. And our second guest, Mr. Samrat Kishore, Regional Head of Enterprise Ethereum Alliance. Samrat, welcome on Crypto TV. Thank you. Thank you, Manoj, for having me again. All right. So
So my first question is to Sharath. Since we are discussing about the broader concern in the cryptocurrency market, we have seen the markets slowly and steadily coming down because of few reasons. Can you just explain to our viewers why this cryptocurrency market is in concern and what are the reasons behind it? If you can just begin with, sir. Sure. So if you look at the correlation between equity and the crypto markets, so the 90-day correlation between equity and Bitcoin is at an all-time high. It's as high as I think 4.9. Now, this is one factor. So there's a strong positive correlation how equity markets are moving and how they are responding to global macro events, beginning from the Russia-Ukraine crisis to Fed tightening the quantitative rates, right, and also hiking interest rates. So, and if you look at inflation, so we are witnessing a decade high inflation, right? 4-decade high in US. If you look at India, we have CPI index number as high as 70-month high, right? Exactly. So inflation is also one of the biggest drivers. So what investors are doing, they are trying to move their assets away from high growth or tech stocks or from crypto to a more assets where there's some sense of stability, let's say commodities for that matter, gold, right? And the way commodity prices are also going up, it's another reason why investors are taking their assets away from risky assets like crypto to commodities. That's one more reason why investors are kind of looking for more safe haven towards commodities and gold rather than crypto. So Samrat, the first reason is money moving from the risk assets to somewhere it is safe. So what's your opinion? What's your opening remarks on this? No, definitely. I think Sharath gave, he kicked it off very well with the statistics. There is definite view that, investors are wary of riskier assets. There are a lot of people whose, the risk appetite, the risk capital that they used to allocate towards various parts of the portfolio, that has gone down. So I think that's one reason. And let's not just talk about retail investors. If we were to also look at institutional investors, even they are very wary of returns that they can potentially generate from, let's say, crypto markets. There's one more statistic which I was seeing when I was studying the correlation of the two markets. I think one thing which was really intriguing to see is a lot of people are now also taking deliveries of commodities, like for example, gold or silver. People don't just want to invest in futures and options; they also want to take deliveries, which means that they see that they're probably going to lock the investment in for quite some time, and they still want to get returns on their investment. So they want to take deliveries and keep it somewhere safe. All right. So few keywords I picked from this opening remark is higher interest rate, rising inflation, and a higher correlation between the cryptocurrency market and the stock market. So moving on, there was one event which has disrupted the entire mood, or for that matter, the entire cryptocurrency market. Was under concern, was the Terra Luna episode. So Sharath, when we speak about this stablecoin Terra USD, which has lost its peg, and it has actually exposed the destability in the concept of stablecoins. So what, according to you, is your opening remarks on this event, on this black event rather, which has actually disrupted the market mood, and from there markets have never risen. So what's your opinion on this, Sharath? Right. So I think we have to take into cognizance the different types of stable coins, right? So when you look at stable coins, they're fully collateralized or fully backed stable coins, like say USDC for that matter, and algorithmic stable coins which don't have any underlying backing. So the pegging or peg to the US dollar is backed only by, or let's say driven by the algorithm, right? Now, if you look at Terra Luna, right, so there's a history behind Terra Luna. So the founder of Terra Luna, Do Kwon, was also associated with Basis Cash, a failed project, right? A failed algorithmic stablecoin project. Now we have also seen multiple failures of algorithmic stablecoins. So there's one stablecoin called Iron, where one of the prominent Shark Tank investors, Mark Cuban, he lost his money there. So we have seen that these crypto, let's say, entrepreneurs, they're not able to get the algorithm right. So what I would like to state that algorithms, it's just a matter of time. If you get the algorithm right, we might see a very fruitful or feasible stable coin in the near future, because we are already relying on different algorithms for different purposes. We use algorithms for even video KYC, right? You do liveness checks, right? So we can't dismiss algorithms, but it's just a matter of time whether the crypto industry or crypto or tech entrepreneurs can get the algorithm right. Now, what happened in case of Terra Luna was 3 major trades led to the depegging of Terra Luna. So it started as early as May 7 when
Terraform Labs, they moved close to, I think, 150 million of USD from 3-pool exchange. What happened after that? There was a second big trade where I think close to 85 million worth of USD was also withdrawn. So this led to a more vulnerable situation when it comes to pegging of USD. And then there's a massive sell-off, right? So, and again, both prices of Luna as well as USD collapsed. So that was one of the major reasons. And now when this crisis happened, it was also kind of coupled with the ongoing Russia-Ukraine crisis. Fed was already announcing interest rate hikes, right? So it was all a cumulative effect, and which snowballed into a bigger crisis of Terra Luna crash, which also led to further fall of Bitcoin prices. So few keywords. Combination of many factors. Yeah, please go ahead, Sharad. Yeah, what I'm saying, it was a combination of many factors, starting from how some of the whales manipulated the prices of Terra Luna, led to the exodus of USD from the main pool, and again, major sell-off, and then the crisis which followed. So, Samrat, few keywords I have picked from what Sharath has explained about the entire Terra Luna episode is manipulation, multiple factors behind the fall, Russia, Ukraine, and to add to what Sharath has said, that we have seen roughly around 80,000 bitcoins being sold by this universe to just to protect what they have promised. So, what's your opinion on this? No, Manoj, I think Sharath has pretty well articulated what events led to the crash, and I totally believe. In fact, I was talking to somebody the same day when it was all happening. It was all unfolding in front of our eyes, and I said, "This looks like it is orchestrated. You know, there are people behind it, and who've got clear intentions of doing this. What is happening? So it was not an incident for sure, as far as my understanding was, and honestly, this is all just my research and my opinions which I'm expressing here. So it's no institution is behind it. But then, so that's one. And let's also talk about a little more bit of future. Since you said, is it a collapse of stable coins? So I would definitely say it is not. It's a concept which is much more worthwhile. It has got much more firepower than just one algorithmic stable coin collapsing because of some people ganging up together. So, as Sharath also pointed, there are these different kinds of, stable coins. You could look at asset-backed or even fiat-backed stable coins. There are fiat-backed, stable coins as well, where, you have cash or cash equivalents, which are backing the crypto tokens. Or I've even worked with projects where, gold is backing those crypto tokens. So their value is as fragile as gold value, and gold value will not have very wild moves like the crypto world. The cryptocurrencies, which are, so it's still a much safer bet than going into, say for example, a meme coin. You go to Shiba, you go to Dogecoin. It's much stabler than that. Much more, there's a higher degree of confidence on stable coins. I would still say that for just for the investors. I mean, but as it is true for any cryptocurrency, it could go up, down, sideways. Who knows? Totally depends on what's the market sentiment, what are the whales thinking about that particular token, and yeah, I think that's where it is. So I would say I would still not lose my trust on stable coins. I have not changed any of my holdings after this incident. All right, no change in the holding, Sharath. That's what Samrat has mentioned. But few things which I have picked up is he has suggested that the stable coins can be backed by gold. That is what the safest thing is. So one last thing on this segment on stable coins is how can such incidents be avoided, Sharath? If you can just highlight that. Right. So I think that's where we have to look at what are the reserve assets and be transparent about those reserve assets. All right. So if you look at other stable coins which kind of depegged during the Terra Luna crisis. So I think DAI also depegged, right? And DAI also depegged, and similarly, there's one more stable coin, I'm not getting the name right, but if you look at Tether for that matter. Tether, right? Tether. US dollars, right? USDC. So Tether is fully licensed or federally licensed by the US authorities. So if you can license or let's say regulate stable coin issuers the way we regulate banks and impose the same levels of due diligence checks, right? So that they have the same kind of reserve assets, the way banks are supposed to maintain cash reserve ratio, right? So look at the reserve assets, look at the quality of reserve assets. So if you look at USDC, right, they are saying that they have the most liquid reserve assets in terms of short-term US Treasury bonds, which you can easily convert into liquid form of money. So that is one aspect. And now let's not write these stable coins off. So let me quote some of the global references where
Japan has already initiated a stablecoin bill where they're looking at how they can ensure investor protection and how they can mitigate financial stability risks. If you look at Australia for that matter, so ANZ Bank has launched something called AUD or Australian dollar-backed stablecoins, right? In UK for that matter, the Chancellor, Rishi Sunak, he announced that he will include stablecoins in UK's payment regulation. So stablecoins, fully collateralized, fully backed, or fiat-backed stablecoins definitely have a future in terms of promoting innovation in payments, right? Because they can ensure real-time settlement of payments, right? So stable coins do have a future. Algorithmic ones, we are not there yet. It's just a matter of time if some entrepreneur gets the algorithm right. If you get that right, that itself will lead to so many, I would say, possibilities in terms of payments, DeFi, financial inclusion. So Japan, Samrat, Sharad mentioned about Japan, Australia and UK, and he has also recommended about fiat-backed stable coins. What's your view on that? Definitely. I mean, as I just said, the degree of confidence just goes up and down with, what is the real underlying asset which is backing that particular stable coin. I think with algorithmic stable coins, I would just say one thing. It is like the seatbelt. It is like aviation safety. There's one crash and then there's, we learn something out of that crash and then we do things better. So it's considered something like that. The whole crypto market has actually learned and evolved in that fashion, over these 10, 12 years of history. So I think this is just going to go a long way. I mean, you remember the days when, the big, what was that exchange called? Sharad, do you remember what was that first exchange called, which collapsed on Ethereum? Quadriga exchange. Mt. Gox. Mt. Gox. Mt. Gox. All right. So there was this Mt. Gox thing, which gave us a lot of learnings. How smart contracts could go wrong. So apparently that Mt. Gox ka wo kuch wahan par in log ne, they have also found out that those who have stolen. Oh yeah, I mean that's a different story altogether. Eventually in the crypto world, you get to know where the money has gone. We just don't know who the people are behind it. So it's easy to track, where it is flowing. I think, but what I wanted to say is definitely we're going to come out of this stronger. And as Sharad said, some entrepreneurs are going to figure things out. I think it is just about more public scrutiny. People just hear our name, stablecoin, and they just go behind it blindly. They don't consider it. They don't consider types. So I think the investors need to be more educated and informed about the various types of stablecoins. What is the real stability, quote unquote, stability behind that token? That needs to be very closely looked at. Fantastic. As moving on to the other topic, we are talking about Bitcoin dominance, Sharad. So although Bitcoin's market share fell by roughly around 20% in 2021, and investors began to look at other alternative assets, such as alternative investments in cryptocurrencies such as Ethereum, Solana, and Polkadot. So BTC remains the most heavy crypto assets. So even in the midst of falling crypto markets that has seen multiple altcoins decline in the value recently, BTC dominance has increased from 41% to 47% in March itself. It's the highest level since November 2021. So will this dominance continue? If you can just highlight that, boss, because if BTC is gaining back its mojo, that means it's a positive for the entire cryptocurrency market. What's your opinion? Right. So I think BTC dominance, in my own personal opinion, will continue, and that will be the major driver of, let's say, another bull run. We might be a couple of months away from the next bull run, but BTC dominance will eventually lead us there. And why? I'll give you some other not directly or relevant factors why we have to look at BTC in terms of payment as well. If you look at, there's a concept of Lightning Network or layer 2 solution of enhancing Bitcoin payments. And let me give one more statistic where in US, close to 10 million crypto cards are being used, and most of them are using the Lightning Network for making faster payments, especially in US. So Bitcoin, in terms of, there's a wider criticism of Bitcoin that it's not scalable enough, but layer 2 solutions like Lightning Network are making Bitcoin adoption more mainstream in terms of payments. So that will also be one of the major drivers in kind of pushing the dominance of Bitcoin forward. So Samrat, lightning speed is something which Sharad has highlighted, which is actually the key for the success. Yeah, totally agree. I think so. The first thing is,
it will regain dominance for sure. I think I said the same thing in the last episode as well when we were talking, which is, two things. One, people moving away from relatively more riskier assets into now, liquidating their riskier bets now into back into Bitcoin, and just sort of looking at it from an investor's perspective that, yeah, I'm still in positive. If I entered Bitcoin at the right time, then I'm still in positive because Bitcoin has still held a very, very high level as compared to where it is coming from. As far as the the Lightning Network is concerned, I totally agree with this. It is going to push retail adoption to the next levels. A lot of companies are now also looking for ways to hold Bitcoin on their balance sheet. I think so. So it's a mix of many things which will lead to dominance of Bitcoin. You also asked me that question about whether it is going to beat Ethereum. I remember having answered that question that not in the next 10 years. so yeah, definitely it's very different, and the utility of these two are very, very different. So I just that's how I see it. Yeah. All right. So Sharath, one follow-up question on that. What are the important tech events in the cryptocurrency universe you are tracking? If you could just highlight a few of them for our viewers, so that they can this will help them make important investment decisions. Right. I think the major one is Ethereum's movement from proof of work to proof of stake, Ethereum 2.0, and the testnet merge happened successfully. That will also lead to a wider debate about, let's say, layer 2 solutions and then what will be the role of Ethereum 2.0. So let me maybe shed more light here. So we can't, so Ethereum is going to be the default settlement layer for financial services. Fantastic. Or for the internet. That's my personal belief. And these layer 2 solutions will have their own space. They will not be able to kind of chip into Ethereum's dominance because Ethereum will be the underlying settlement layer. Now, when it comes to layer 2 solutions, let's look at, let's say, Polygon for that matter. So Polygon aspires to be the building block or AWS for Web3, right? But we might see newer protocols coming up which will solve up different scalability challenges, right? So when you look at scalability, there's a concept of roll-ups, how you can roll up multiple transactions and then commit to the block. So there's a wider experiment going on there, innovation going on there. But Ethereum's dominance will still be there, and maybe Samrat can come in and throw more light on that. Why will that be? So what Sharath has highlighted, Samrat, is कि Ethereum is actually saying that कि यहाँ के बादशाह हम हैं. So Ethereum definitely for the DeFi world, I had said the last time as well, Ethereum was the one which gave the world smart contracts. Ethereum is the one which gave the world DeFi capabilities, right? So it's not going anywhere else. What I see it is, as Sharath also pointed out, it's going to be the global settlement layer. And so imagine it to be like, just in common terms, imagine it to be like moving more towards B2B than B2C. Right. So while individuals may not be transacting directly with the Ethereum layer, they would prefer going via the layer 2 solutions for both, transaction speed optimization as well as cost optimization. But eventually the layer 2s are also rolling up there. The layer 2s are also offering many more capabilities. I mean, Sharath brought up Polygon as well. Beautiful example of what all a layer 2 could do. And if they become the AWS of the Web3 world, look at what the token could do for the holders. So, that's also something which the investors, and you said the investors need to be more aware of what's going on. So I think that's also one critical aspect which the investors should see in a token, that where is this company which has created this token, it's heading, what is the vision, what are the products that they have delivered and they are planning to deliver. So Polygon had a clear roadmap set. They created some things, and the things which they did not create, they acquired companies to deliver that, but they still delivered it, right? So that's a beautiful thing which happened in layer 2. For the Ethereum dominance, Manoj, I can definitely say it is going to be the platform of choice for definitely for DeFi and. Will you think which is somewhere around 17.5%? Will you think that it can match up to a level, or it can bring this Bitcoin to its level? So markets may so one is the tokens, the people who are holding tokens, that's one parameter, definitely a good parameter to look at. But then there are the other applications, how many applications are currently using that one platform. Sure. So Bitcoin Perfect. is not a platform with an application use, right? I mean, Ethereum is more of a platform which applications are built, and then those applications are driving Perfect. adoption. So I think
that is going to be a magnifying factor for its adoption. All right. So Sharath, we are Can I moving add from one this. more point? Yeah, one more please. point to what Samrat said was, so even in these bearish times, right, if you look at number of unique wallet addresses adding per week on Ethereum, they are into thousands now, close to 30 to 40,000 unique wallet addresses, which reflect Ethereum. So it will be a function of what is the developer activity which is still happening on Ethereum. That will be another major driver, how a platform would flourish or how the adoption will play out. Right. So all right. I think sorry Manoj, just one point. Yeah, please I think go the ahead. last time, the ESG concerns are going away from Ethereum network. That's also a big plus for enterprise adoption. I mentioned last time also. So it's a clear win for the Ethereum network where with the shift from proof of work to proof of stake, it becomes more carbon neutral, it becomes more environmental friendly, and hence the company then go ahead and start deploying it. Perfect. So Sharath, we are moving from this Ethereum 2.0 to a topic which is actually I wanted to understand about the growth of the crypto ETFs. So one of the most significant advances of the crypto ETFs is that they provide exposure to cryptocurrencies without the added cost of its ownership. So what do you think is the strategy for crypto adoption? And if you can just explain this for our viewers. I think when it comes to a major or mainstream adoption of crypto, it will happen only through institutional participation, and these crypto ETFs will be enablers of that. So the same brokerage account, you can hold your stocks, bonds, you can also invest in crypto, right? So they're simplifying or making the use of holding crypto assets much more easier to even a layman or who is not a tech savvy or literate enough to hold crypto assets, right? So that is one more part, and it also gives a wider exposure of crypto assets. So you can have a fund which is which manages your crypto holdings. It's linked to a index. So that's one more area where mostly high net worth individuals or institutional players will take that route compared to holding or having custody of digital assets on your own, because it comes with an added risk, right? If you're having a custody of your assets, you may not have the right skills to protect it, right? So ETFs will also take care of, let's say, hacking of those assets, right? Make it more simpler in terms of ensuring safety and security of digital assets. Sure, Samrat, a quick view on this. Yeah, this is an excellent way for individuals and institutions both to get into and dip their toes into the investment of cryptocurrencies. I do think there's one critical aspect which Sharath highlighted, which is also on the security related to your holdings. How do you protect what you hold, because in the crypto world it's a wild west, right? But at this time, there is also one more important aspect for the investors to look at. It is what are the currencies, what are the tokens which are comprising of one ETF. So when you're looking at investing in an ETF, you should definitely go drill down deeper. It's just like a mutual fund where people are investing money and then there are underlying stocks. Sure. So people should look deeper into ETFs as well. So Sharath, you mentioned about institutional adoption. My next question to you is, Morgan Stanley in a recent report has said that increased trading volume share of the crypto institution versus the retail volume has contributed to the high correlation between the Bitcoin and equities. And also noted that the increased involvement of institutions, which you have already highlighted, which are sensitive to the availability of capital and therefore interest rate, has contributed in part to the high correlation between Bitcoin and equities. So in short, institutions are coming towards this crypto universe. At the time, you also mentioned about gold-backed stable coins. But there was a point when cryptocurrency used to follow this hedge against inflation, and it was having a hedge against inflation tag. But now slowly and steadily, as the institutional investors are coming in, they are losing it. What's your opinion on this? So I think honestly, the narrative of crypto assets or Bitcoin being inflation hedge was flawed from the very beginning, because now it has been established that there's a very strong positive correlation between these two equities as well as Bitcoin, right? If there's a negative correlation between two set of assets, then you can treat other as a hedge against inflation, right? But since they're positively correlated, the narrative of inflation hedge doesn't hold any ground. Fantastic. What's your opinion, Samrat? So definitely the institutions which are investing money are more and more sensitive towards the
towards the returns that they're generating in the shorter and the longer term. So, the various institutions which are coming in have different investment horizons, different targets for returns that they need to generate. I think they are looking at it from the point of view that this is a new avenue for their diversification, which they have successfully, a lot of companies have successfully capitalized, definitely. But at the same time, I also feel that these are companies. So, for example, hedge funds. I mean, 2/3 of the hedge funds are going to fail. There's a big news all over that there are hedge funds now mushrooming only because of such risky assets coming out and people believing in these investments. So if they, if let's say, if you ask them to bet on anything, they would start betting on anything. I mean, that's also one big problem, right? You give them any risky assets which can eventually generate a return out of a bet, they will start investing there. So it's a wait and watch situation as far as I am concerned. But definitely, the ETFs have actually they are driving adoption left, right, center. So Sharad, since we're talking about institutional investors, we're talking about Mota Paisa. It calls for a better regulation landscape. So my next question to you is, the Indian government has introduced taxation on digital assets in its 2022-23 union budget. So which has led to an optimism in the industry that it is on a path of regulation and clarity. So are we really talking about regulation and clarity, or are we talking about something else? I think let's be hopeful here, and let's look at even the recent or to be announced to be released crypto consultation paper will throw more light on regulation. Sure. Because we have taxation in place now. Now it makes sense for the government to regulate the industry rather than drive the talent outside the country, right? So regulation is the way forward, and let's hope the crypto consultation paper paves the way for regulation. So we do understand and respect of what the government has decided on this. But Samrat, my next question to you is, a lot of entrepreneurs, as Sharath is very optimistic about the taxation part. So a lot of entrepreneurs who operate from India, but have registered their offices in more favorable regulatory geographies such as Dubai, or for that matter, many other countries. You operate from Singapore, Canada, yeah. So I'm and I can say this with confidence because I'm on the board of two companies. One of them is in Canada and the other one is in Singapore. Both have crypto models. So it's a happy sad situation. I would say on one side it's Indian guys who are innovating, creating new products and which are meant for the global stage. But at the same time, India is losing revenue in terms of taxation, which could have come from this company. People getting paid, etc. People are getting paid in cryptocurrencies. Also, the Indian. So it's not only so the current regime has put a tax, but that tax does not really take care of operations of a company, right? It's just on if you made money on speculation, you get to pay some tax. That was anyways the case, right? You were paying. So what I really do intend to see, and what I really would be happy to see is, if a crypto company is given the kind of welcome which they're getting in, for example, places like Dubai, where they are welcoming you with open hands. You've also been there recently. You would have seen the environment, which is so friendly and welcoming for crypto world right now. I would say, very basic example is, I may still be, charging TDS. Okay, that's easy. I can get my accountant to do the TDS part. But are companies in India getting a payment gateway? Sure. The answer is no. So these things need to be sorted. All right. A lot, and so it will not only be the regulation for the crypto company. It will also be the regulation for the other companies supporting operations of the crypto company. For example, the payment gateway and the banks. So all right. So Sharath, my next question to you is, Samrat mentioned about happy and sad moments. So let's focus on this happy situation wherein you spoke about the consultation paper on crypto, which is almost ready. Will the government release it this year, or will it wait for the global consensus to come on common ground? Right. If you look at the public statements of government representatives, right, so they are saying that we will look forward to how the regulation is shaping up globally. So we've seen some development in the US where some of the senators have already rolled out a bill
with respect to crypto, right? Cynthia and a couple of senators as well. So we have a precedent now. There's already a bill in the US, let's say Congress for that matter. Now, we can't actually try and imbibe all the elements of that bill. We should be having our own approach, and crypto consultation paper can be a step forward in that direction, right? And so if you look at even stable coins, so we have a precedent now. Japan has already shown how you can regulate it. Fantastic. So even in terms of stable coin, right, we have a, let's say, a precedent or template to follow. For regulation also, I think US has already shown some way. Now it's up to us how we can fine-tune, tweak our model and make it more relevant to our domestic circumstances and move forward with regulation. We should not be losing this opportunity of becoming or playing second fiddle to countries which are positioning themselves as the next global crypto hub, Dubai for that matter. Dubai, Singapore, UK, they are fighting for positioning their country as the next global crypto hub. Why should we lag behind just because we are dilly-dallying on regulation? I think we should move forward and then even also position ourselves as the next crypto hub. So, all right. So this brings us to our last segment, which is the rapid fire question. Samrat, you know the format. So let's begin with you. So my first question to you is, very quickly you have to answer in a line or so, so that we can cover all the questions. So my first question to you is, GST Council mulling 28% tax on Bitcoin and other cryptocurrencies. Will India levy GST on cryptocurrencies? Samrat? Yes, on the services of buying and selling cryptocurrency. What about you, Sharad? Happy about it. Yeah, agree with Samrat. So on services, they are, I think we might see a GST of 28%. So Sharad, will the 1% TDS on crypto to kick off from July 1st, or you have a different idea about it? Will the government roll back? I don't see the rollback happening. The government may rationalize it because community members are engaging with the government to move it to 0.01%. Samrat, your quick view on this. My view is it is going to be, it's going to take some iterations to get it right, because there's also a confusion around how do they calculate the gains. All right. So Sharad, will we see a spot Bitcoin ETFs in 2022? What's your opinion? I don't see it happening anytime soon, right? We might see a bill in the US Congress first, right? Once that is done, then definitely yes. What's your opinion, Samrat? Will it come in 2022? No. All right, that's a flat answer. All right. My last question to you, Sharath, is, will we see more stablecoin collapse like Terra Luna? If yes, if you can mention few. So a couple of them have already depegged, like for example, DAI for that matter, right? So algorithmic stable coins are prone to failures. They will depeg it and they might collapse as well. But fiat-backed one or collateralized ones have a promising future. Fantastic. Your last take on this, Samrat. So definitely algorithmic stable coins are under a scanner, and they will. So even if the investors are moving out, I think that's a sign of failure. All right, that's it. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction. Sharath, thank you so much. Samrat, thank you so much. You guys really spoke well about what is the future of cryptocurrencies and the way forward. We spoke really well about Bitcoin and the way forward, institutional adoption, ETFs, and what stable coins as a roadmap will look like. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction and taking part in this interaction on Crypto TV. Thank you so much. Thank you. All right, that's all there is in today's interaction. This is Manoj Dara signing off. Stay tuned on Crypto TV to watch such interesting interactions. Thank you so much. Hello everyone, you're watching your favorite series, Tip of the CryptoBug. I'm Vinita Chatterjee. Today we are going to discuss the real life use cases of smart contracts. How does smart contract benefit you or me or any of our friends or family members? Let's find out in today's episode. But first, let's find out what are smart contracts. Well, in our day-to-day lives, we all need some sort of a contract to make sure that our promises are kept intact. But what if I tell you that there is a concept called smart contract? Smart contracts can be defined as a paperless,
digital code that offers a set of promises on predefined conditions that the two different parties have agreed to. In simple words, the parties can set a condition that can start an action or a series of actions when met. Smart contracts actually have the potential to make our world more democratic. Yes, you heard me. In fact, the whole concept of smart contract applications has unquestionably revolutionized the way we live our lives. Experts believe that smart contracts would be around long after everyone has forgotten about some of the leading crypto coins. Smart contracts use the blockchain technology to facilitate the exchange of money, property, information, or anything that people deem appropriate to initiate a smart contract for. The beauty of decentralized nature of blockchain technology is based on peer-to-peer transactions. That means that these smart contracts don't require anything in the way of a middleman. Traditionally, individuals or institutions such as banks and solicitors were required to facilitate legally binding contracts. We all know that, right? But now, let's see what change the smart contracts implement in our lives. Smart contracts allow individuals to bypass this costly and often slow middlemen and agree on the contract directly. Well, doesn't that make you feel that smart contracts are going to simplify all of our lives? It truly does. In today's episode, we are going to discuss the top 10 real-life use cases of smart contracts. Let's find out. Number 1. Trade finance. Trade finance stands to benefit immensely from the introduction of smart contracts. Recently, Santander Innoventures said that it believes that blockchain technology will lead to more than $20 billion worth of savings per year by the year 2022. A huge amount of these savings will come from smart contracts, automating approval workflows and clearing calculations that at the present time are incredibly labor intensive. Not only will this automation help to reduce work hours, but it will also dramatically reduce errors and the time taken for these calculations to take place. Records. Our next use case of smart contracts are in keeping records. Nearly every foreseeable industry in the world will be able to use smart contracts to help improve the speed and security of its record keeping. One industry in particular that stands to benefit enormously is the healthcare industry. Currently, the world's healthcare computer systems hold hundreds of millions of patient medical records. Despite the fact that these healthcare organizations have invested huge sums of money on security, still, the current access and storage methods are far more vulnerable to cyber attacks compared to the blockchain-based technology. Blockchain technology could allow the entire databases of personal health records to be kept secure. An added bonus is that the technology also facilitates the use of private key. That means only certain individuals can gain access. Some of the other blockchain smart contract use cases include their use in issuing prescriptions, storing receipts, general stock management, storing test results, and so on. Property ownership. Smart contracts have two huge uses when it comes to the property market. First, they can be used to record property ownership. Since the use of smart contracts is faster and more cost efficient, this makes them a much better alternative to existing systems. It also means that they can be used to record the ownership of all types of property from buildings, lands, to phones and watches. Number 2, elimination of any kind of middleman. Within the housing market, smart contracts can remove the need for expensive services such as those provided by lawyers and housing brokers. This new technology also means that for the very first time, sellers have the ability to handle transactions completely by themselves without the need of any middlemen.
Mortgages. The property market also stands to benefit from cheaper, faster and more secure smart contract-based mortgage transactions. Not only will this allow buyers to get into the property quicker, but it will also help to make the entire process a little less of a headache. Smart contract mortgages would allow both the parties to digitally agree to the sale before processing the payment. Once this is done, the contract would update the property ownership details to reflect the change of ownership. Since the process would require unique key code authorization on behalf of the original owner, it will make the whole process more secure and reduce instances of fraud. Insurance. The next sector that stands to benefit from smart contracts is the insurance sector. The insurance industry spends tens of millions of dollars each year on processing claims. Not only that, it actually loses millions of dollars to fraudulent claims as well. Aside from supporting the initial insurance policy, smart contracts could also help to improve the process of claim processing in many ways. They could allow error checks and determine payout amounts based on the set of criteria that takes into account the kind of policy that was held by the individual or the organization. Once again, reduced processing times, a dramatic reduction in errors, and cheaper costs are among the main benefits of smart contracts. In longer term, smart contracts could be used in tandem with Internet of Things enabled vehicles to allow for the pay-as-you-go insurance policies and the immediate activation of claims after an accident. Information such as driver licenses, driving records, accident reports, and policy details could be immediately processed to facilitate speedy payouts that would benefit both the parties. Medical research. The medical research industry will benefit from similar advantages as the healthcare industry. First of all, highly sensitive data such as patients' records could be transferred between departments, research centers, after having been securely encrypted via blockchain technology. Since many of the patients participating in medical research have sensitive medical conditions that they often wish to remain private, keeping these records secure is very essential. Likewise, medical research companies have enormous amount of data which includes test results and new drug formulas that they need to keep safe. This could be secured with the use of smart contracts, should they need to divulge any of this information to a third party for any reason. Voting. Well, smart contracts can be the smart formula that can be used for elections. Allegations of fraudulent activities have occurred in many elections of the past. Despite using computer systems that in some cases cost millions of dollars, fraudsters find increasingly imaginative ways to manipulate them. Well, here comes smart contract as a smart savior. Smart contracts are a simple and cost-effective solution to this problem. They can be used to validate a voter's identity and record their vote. This information could then be used to initiate an action after all voting had ceased. Since the blocks within a blockchain are impossible to alter once they have been recorded, manipulation of this record would be very difficult. Peer-to-peer transactions. Smart contracts can be used for a whole range of peer-to-peer transactions. This reasoning is what led to the creation of the Ethereum project and other such companies. Users of all shapes and sizes could use these platforms to create and agree on smart contracts. These contracts then remain active until a set of agreed conditions are met. Once the smart contract is happy that all the conditions have been met, it then allows the remaining portion of the agreement to be fulfilled. Typically, this is the transfer of money, but this isn't always the case. So far, smart contracts have been used for everything from launching ICOs to selling goods on the internet.
Various companies are also using smart contracts to secure services of development teams and other outsourced companies. The possibilities of peer-to-peer smart contracts are literally endless. Theoretically, this could replace many of the existing roles that are currently fulfilled by currency. Product development. Another exciting use of smart contracts is to keep a ledger regarding the stages of development of a product. A huge part of the appeal of smart contracts is their ability to keep information secure and to prove its origins. A company that has invested huge amounts of money into developing a project obviously doesn't wish for the information to be stolen. Generally, the only route to justice when information is stolen is a lengthy court process, something which most companies don't have time and money to go through. Now, when it comes to intellectual property such as ideas, you don't need to look as far as the never-ending patent claims between Apple and Samsung just to see how important being able to prove ownership really can be. The list of industries that could benefit from this new technology is huge, given the fact that smart contract support and secure product development. The kind of industries involved could range from a small startup to a large tech company such as Microsoft or Amazon. Stock taking. Supply chains are another area of business that can benefit from blockchain-based smart contracts. Internet of Things devices could be used throughout the supply chain to record each step a product takes. Smart contract supply chains could theoretically, virtually eliminate in-house theft, as managers would be able to trace a missing product back to the exact time and place that it went missing. On huge supply chains, such as those found in large warehouses, these smart contracts would enable managers to see real-time stock levels and the time it takes for a product to move through the supply chain. Managers could use this data to adjust stock levels and develop new working practices to improve delivery times. For supply chains that operate in several different locations or companies, smart contracts could do all of the above and even initiate automating reorders and payments for order already received. Such information as contained in these contracts could also be used to help with determining up and coming busy periods and even which products to stock at different times of the year. So we see smart contracts are the most exciting thing to have come from the blockchain technology so far. Smart contracts really do have the power to take our lives out of the hands of institutions such as banks. Since we can use smart contracts to exchange something as simple as labor or more complex things such as loans, they will gain in popularity and the number of these services will grow exponentially. The technological advantages of smart contracts will help to speed up transaction times, lower costs, and even make processes much easier and stress-free. And when smart technology is present in the cars we drive, things we use, and help determine the choices that we make, the world could be a much more secure and a happy place to live. For all this interesting content from around the world of digital currencies and blockchain technology, keep watching your favorite channel, Crypto TV. Like, comment, share, and subscribe. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Cryptocurrency prices are mimicking stocks and bonds like never before, penalizing investors who acquired Bitcoin and other digital assets to diversify their portfolio. Because central banks increased the supply of fiat money in 2020 and 21, crypto prices surged, and now the Fed is tightening, crypto and equity markets are correcting lower.
રઈસમાં શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી NFT નો ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી NFTs એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી NFT જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક NFT ક્રિએટ કેમ ના કરું? સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી NFT લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ NFT. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ, તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4,100 એક ટોયલેટ પેપર રોલની NFT ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર NFT USAની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ચાર્મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ NFTની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે. NFT એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી NFT ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મિન કંપની ઈચ NFTની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસ રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ, ચેરિટી કરવાનો આ જરા અતરંગી રસ્તો છે, નહીં? તો આ કંઈ નથી. નેક્સ્ટ વિયર્ડ NFT નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ NFT નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન NFT. આ NFT વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક NFT આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી NFT બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે 1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી ક્રેઝી, રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે.
સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની એનએફટીને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7,65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો. તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાઝ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ, અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ. ઓકે. થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ એનએફટી નું નામ છે સેલ યોર સોલ એનએફટી. Yes, that's why I called it weird. Recently 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને એનએફટીનો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની એનએફટી મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ એનએફટી માર્કેટ પ્લેસ ઓપનસી ઉપર પોતાના સોલની એનએફટી લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ એનએફટી સેલ કરવામાં આવી છે. એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાનશેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ એનએફટી સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે, જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા ક્રેઝી જ કહેતા હતા જ્યારે તેને ઇલેક્ટ્રિક કાર અને રીયુઝેબલ રોકેટના કોન્સેપ્ટ્સને દુનિયા સામે પહેલીવાર મૂક્યા હતા. આજે એ વર્લ્ડનો રિચેસ્ટ મેન છે. સો સ્ટે હંગ્રી એન્ડ સ્ટે લિટલ ક્રેઝી ફોર સક્સેસ. અને આ મંત્ર સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. આવી વિયર્ડ, એક્સાઇટિંગ અને ક્રેઝી સ્ટોરી સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. In today's episode of Digitally Unplugged, we will explain the common questions and myths of crypto investors as far as taxation is concerned. Our first guest, Mr. Indy Sarkar, co-founder TaxCrypt. Taxation was always seen as something outside of the crypto universe. It has created an element of uncertainty, lots of questions, but it might evolve over the next few years. And our second guest, Mr. Raj Kapoor. Wherever there is uncertainty, there is a market reaction. And in this case, it's been a very adverse reaction. Let's not complicate the matter. Taxes are important. However, clarity around them is even more important. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स,
और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। Hi, this is me, Yashasvi Acharya. DeFi or decentralized finance is an umbrella term representing a collection of financial products and services created and offered over the distributed ledger technology. The intermediation of financial institutions is denecessitated by these protocols with the use of cryptographic proof of transactions. These protocols also make use of advanced tools like programmed smart contracts and tokenization to design innovative financial products offered to participants of the blockchain peer-to-peer network. The DeFi ecosystem appeared with smart contract-enabled blockchain platform Ethereum going live in 2015. And today, by end of November 2021, has proliferated to more than 250 protocols with over $100 billion in total value logged in these protocols. The DeFi ecosystem is rapidly innovating and emerging with wonderful new products, which is disrupting the financial products and services marketplace. These products include stablecoins, decentralized exchanges, decentralized lending and borrowing platforms, decentralized asset management tools, decentralized autonomous organizations or DAOs and governance, insurance products, derivatives products, margin trading products, payment solutions, staking solutions, KYC and identity solutions, tokenization, yield aggregation platforms, prediction markets, infrastructure and developing tooling products, analytics services, among many such offerings. The innovation in the DeFi segment is prolific and exciting. This segment is evolving rapidly as better and better protocols are coming up with each innovative iteration and market offering in any particular segment. The blockchain projects are also evolving, and so are the applications in the form of DeFi. The returns of the DeFi instrument are quite handsome when compared to similar traditional finance products and services. The traditional financial product and service marketplace is also referred as CeFi, acronym for centralized finance. This is possible because the smart contracts and decentralized consensus reduce the counterparty risk, monitoring and arbitration cost, and also the cost of intermediation. The programmable nature of decentralized applications also provides the flexibility to order the best possible combinations of these instruments to maximize returns. This feature is given a very interesting terms. It is called money Legos, indicating that parts can be joined together in a preferred order of precedence depending on the comfort of the user. Oracles on the decentralized ecosystem connect the real-world trigger events to smart contracts, enabling conditional execution of the same. This enables creation of derivatives, prediction markets, and a lot of other possibilities. Tokenization of the real-world assets helps granularization of high-value assets, helping address a wider investor base and also brings them into digital realm, transcending the geographical boundaries, helping cater to a larger digital global audience. Programmability of the decentralized applications in the financial realm help create bespoke products for the users, providing for many interesting innovations in this area. Currently, as the craze of DeFi grips and drives the imagination of investors, we can say we are for some very interesting times in this area. However, along with innovation suitably follows a word of caveat, the DeFi segment is not regulated at the moment. The regulatory framework moves slowly to catch up with the innovation,
and it's the same which is happening in this area. Therefore, users have to be extremely careful with their research of the DeFi project before participating into it and availing its benefits. Choosing on the basis of returns only may not be a judicious approach at the moment. One must do your own research meticulously and observe the proliferation of any project closely before participating in it. One may also avail services of several audit companies who specialize in auditing and security and other features of the smart contracts published by project. If one covers the risk well, DeFi is one segment which would provide the early adopters with exciting returns. That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Have a really good day. बारह साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Algorand, the future of finance on blockchain. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host Parvati Nirman, and today I am going to take you on a sky ride of Algorand. Now you would think, why is it a sky ride? How a blockchain technology can be connected to a sky ride? Well, then let me tell you, Algorand is the latest technology buzz in the market as Drone Racing League DRL is going crypto. DRL has announced to launch its play-to-earn crypto game on Algorand blockchain. So there begins the ride. Together, DRL and Playground Labs will build a virtual version of the Drone Race League on Algorand. And not just that, Algorand or Algo, being the layer 1 blockchain for decentralized and traditional finance, has added direct fiat payment channels into their network by integrating with Alchemy Pay, which is ACH. Alchemy Pay is a payment solutions provider that connects fiat and crypto economies, and its global merchant network now supports Algorand's Algo token for payments in 65 countries. Even more,
Marshall Island is adopting Algorand for the issue of its sovereign currency. So the Marshall Islands is the first country to adopt a national digital currency built on Algorand blockchain. Algorand's Algo token ranked 20th on the Forbes list of most influential digital assets, has the 18th highest market cap of any cryptocurrency, hovering around $11 billion as of 5th Jan 2022. So we know now how Algorand is one of the fastest growing blockchain technology today. Let's find out a little bit of the history of Algorand. Algorand was founded by Silvio Micali, a computer science professor at the Massachusetts Institute of Technology. Silvio received the 2012 Turing Award for his innovative contributions in cryptography, blockchain, and cryptocurrency protocols and electronic cash, making him a leading mind in the cryptocurrency and blockchain industry. Silvio Micali has been a professor of cryptography since 1980s. Around 2015, he started researching how to create a better blockchain technology instead of criticizing Bitcoin. Well thought. He was then approached by Nikolai Zeldovich, an MIT professor, and based on the success of testing the new blockchain technology with different simulated transactions, the Algorand company was incorporated in 2017. Algorand's white paper was co-authored in 2017 by Silvio Micali and Jing Chan, a professor at Stony Brook University. This blockchain is particularly carbon negative, as it operates on pure proof of stake network, which is the need of the hour as everyone is eyeing green blockchain initiatives. That's true. So well, in today's time, the Algorand protocol is chosen for its speed, scalability, security, and its ability to effectively implement the required compliance controls and the transactional finality needed for the digital currency. Just like other competitors like Solana, Cardano, Algorand intends to displace Ethereum as the primary blockchain home for decentralized apps, DeFi projects, and crypto-native games of the future, or in crypto speak, the metaverse. So what exactly is this Algorand and how does this new blockchain technology functions? Well, Algorand serves as the infrastructure layer on which we can build crypto networks, decentralized apps, and crypto tokens. It is one of the most prominent layer 1 blockchains available in the ecosystem and include fungible, non-fungible, restricted fungible, and restricted non-fungible assets. Yes, Algorand is the new gen blockchain and is bridging the decentralized and centralized world of finance. Algorand has the biggest advantage as higher transaction speed. It is officially launched in 2019 with its native crypto as Algo with a maximum supply of 10 billion Algo. Algorand maintains a block explorer which keeps an official count of its circulating supply of Algo. Algorand also enables users to create smart contracts and tokens that can represent both new and existing assets. The code for Algorand is open source and can be cloned, copied, otherwise used in private or permission blockchains. As we all know, all cryptocurrencies work on consensus mechanism to approve or disapprove every user-initiated transaction on its network. Legacy cryptos like Bitcoin, Ethereum work on POW, that is, proof of work mechanism, which requires huge computing power and hence consumes a lot of electricity, while Algorand uses pure POS, which is pure proof of stake, which is less power intensive. And how is this pure POS system works? Well, it randomly selects committees from the participating algo holders to validate and approve the next block in the chain. This randomization is the result of unique cryptographic tool called VRF, which is verifiable random function. And pure refers to the users not having to lock up or bond their algos to participate in this process. So to summarize, what sets Algorand apart is its speed and advanced capabilities as its fast, low cost,
decentralized, carbon negative, and has advanced smart contract capabilities. Algorand can process thousands of transactions per second with instant finality and with transaction fees of fraction of a penny, whereas other blockchain can be much more expensive. So that's all from my side on Algorand blockchain technology. I am Parvati Nirban signing off for now. See you again very soon with more technological facts and developments. Till then, keep watching Crypto TV. हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लेटन्सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉकवाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहे. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे
प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटर्जी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला ह्यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people. Thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal.
जरा पीछे से शुरू करते हैं। हाँ, महबूबा महबूबा, डोंट वरी गाइस, मेरी खिसकी नहीं है। मैं महबूबा का नाम इतनी बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी सेकंड क्रिप्टो क्वीन का नाम है रोया महबूब। हाय गाइस, मेरा नाम है यशस्वी और इस खास सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्वीन ऑफ क्रिप्टोस की। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ रोया महबूब के बारे में। इनकी अचीवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड की विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं, जहाँ तालिबान के डर से लड़कियां ABCD पढ़ने तक स्कूल नहीं जा सकती, आवाज उठाकर बात नहीं कर सकती हैं। ऐसी देश में टेक कंपनी का CEO बनना कौन छोटी बात नहीं है, क्या समझे? रोया महबूब अफगानिस सिटाडेल सॉफ्टवेयर कंपनी की फाउंडर भी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी कंपनी की 50% से भी ज्यादा कर्मचारी वैसे लेडीज हैं। अनफॉर्चुनेटली सितंबर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से टेक ओवर कर लिया था, मिस रोया महबूब को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की औरतों के पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट का भी एक्सेस नहीं था, इसलिए मिस रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन से सैलरी देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मिस महबूब डिजिटल सिटीजन फंड यानी कि DFC की प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर भी हैं। बॉस लेडी। अगर DCF की बात करें तो ये एक ऐसा NGO है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की लड़कियों और औरतों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे में एडुकेट करने के लिए काम करता है। ब्रावो मिस महबूबा, ब्रावो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बिटकॉइन क्वीन, इनका नाम है अलकलानी एथरेलेंगे। वैसे काफी टंग ट्विस्टिंग नाम है ना? डोंट वरी, जितना टंग ट्विस्टिंग इनका नाम है उतनी सिंपल एंड स्ट्रेट इनकी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज है। वैसे अलकलानी, जिनको लोग प्यार से बोत्सवाना की बिटकॉइन लेडी भी कहते हैं, ये टाटा बिरला, अंबानी, एलन मस्क की तरह कोई बड़ी प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं। बोत्सवाना जैसे अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ते पढ़ते ये लेडी अपनी फैमिली के लिए ऑनलाइन साइड इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रही थी कि तभी इनकी नजर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर पड़ी और इसके बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। बैठे बैठे इतनी रिसर्च कर डाली कि इन्होंने अक्टूबर 2013 में बोत्सवाना का फर्स्ट बिटकॉइन मीट ऑर्गेनाइज कर डाला। बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी कंपनी सतोशी सेंटर स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू अपनी कम्युनिटी की वुमनिया और उनके हस्बैंडवा एंड एवरी अदर मर्दवा को एडुकेट करते हुए नजर आई। वो घर बैठे बैठे कैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर उनकी मदद करती आई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ बोत्सवाना को ये भी कह दिया कि भैया बिटकॉइन को एल साल्वाडोर की तरह लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लो और क्रिप्टो फ्रेंडली कायदा भी अपना लो। इससे देश जो है वो फायदे में ही रहेगा, है ना? सोने पे सुहागा ये है कि बोत्सवाना की ये लेडी एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट डेवलप कर रही है जिससे डायरेक्टली किसी भी नॉर्मल ATM से लिंक किया जा सकता है। सो माय डियर इंडियन लेडीज, अगर ये बोत्सवाना के गांव से बैठे बैठे क्रिप्टो की दुनिया में बवाल मचा सकती हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अब आप कहेंगी कि यार मोटिवेशन से क्या होता है यशी? क्रिप्टो स्पेस में वुमनिया तभी झंडा गाड़ेगी जब वो दूसरी वुमनिया से मिलेगी, राइट? लेकिन कैसे? कहाँ ढूंढे दूसरी क्रिप्टो लेडीज को? इधर आओ, आओ, मैं बताऊंगी ना दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू क्रिप्टो टीवी। मेरा नाम है यशस्वी, साइनिंग ऑफ। मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे। पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते। पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे।
तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड NFTs म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे. नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी NFTची नवीन लिस्ट. आता मी तुम्हाला अशा 3 NFTs बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल. चला तर मग सुरू करूया. तर या टॉप 3 क्रेझी NFTच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची NFT, म्हणजेच तुमच्या आत्म्याची NFT. नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात. आता NFTs वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा NFTच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं NFTच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन वन शेक या नावाच्या डच स्टुडंटवर NFTचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच NFT मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या बाईने जगातील सर्वात मोठी NFT मार्केट प्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची NFTला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या NFTला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला NFTच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या NFTची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या NFTची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या NFT सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला NFTचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी NFT आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप NFT साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या NFTचे नाव आहे इनर ब्युटी, म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची NFT. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्यांनी आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच NFT बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेसवर 28 मार्च 2022ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच NFT रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक NFT बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा NFTला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला NFT बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड NFTचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या NFTला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंड आहे बाबा, आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची NFT कितीमध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची NFT आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटीमध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी NFT लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या NFT साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या NFTचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची JPEG इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल NFT लॉन्च केलं गेलं होतं.
बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचनमध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी NFTs. अशाच प्रकारच्या अतरंगी NFTची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV. एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है. बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है. हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है. अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना. सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है. चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनेयर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है. पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है. इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं. कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं. चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता. 2 लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना. लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है. लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं. करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है. कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए. मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी. इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला. उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई. उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके. बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई. उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई. कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक जोबोनी का बिटगोल्ड
और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चॉम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी आरपीओ वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है? बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी? ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माइका लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure
storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kal Aana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days, and the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is crazy coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, or Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT, Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more crazy coins with Kunal. of crypto. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय। आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील। तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत। सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले। अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे। बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल अथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या
मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशन साठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे? याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं. जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशर मध्ये आहे कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेन ला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्स पेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंट साठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे. पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल. तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जी या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. Today, we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. It is trying to
rewrite the history by the way we are writing our ledgers. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो की इस क्रेजी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है मिलेनियल्स पे चढ़ा क्रिप्टो का क्रेज। तो दोस्तों, हर सेंचुरी के दौरान टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव होते हुए देखा गया है। जैसे कि 20वीं सेंचुरी में इंटरनेट एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसने पूरी जनरेशन को बदल कर रख दिया। ठीक उसी तरह 21st सेंचुरी में ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी से आई बदलाव की लहर यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा क्रिप्टो की माला जभी नहीं रही है, बल्कि उसे अपनाकर मुनाफा भी कमा रही है। यह बात सच है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कई तरह के रिस्क और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज से भरे हुए हैं, लेकिन इसका अट्रैक्शन ऐसा है कि इन सब के बावजूद लोग चाहकर भी इसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। महज बातों में नहीं, बल्कि चलिए इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स की तरह नजर घुमाते हैं। जहां इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक को 1 करोड़ क्लाइंट्स के अकाउंट तक पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता था, वही वजीरेक्स और कॉइनडिसेक्स ने देखते ही देखते लगभग 4 साल से भी अधिक 1 करोड़ क्लाइंट्स का आंकड़ा अपने नाम कर लिया है। जबकि कॉइनसेज कुबेर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 1 साल में भी 1 करोड़ के क्लाइंट्स को खुद से जोड़ लिया। इंडिया के बाद अगर बात इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है तो चीजें यहां भी बेहद चौंकाने वाली है। फॉरेन में 45% यंग जनरेशन यानी 18 to 35 वर्ष के लोग क्रिप्टो को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करना पसंद से लेकर उन मर्चेंट को भी ट्रस्ट करते हैं जिनके द्वारा क्रिप्टो को ऑफर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सर्वे में शामिल 18 से 35 वर्ष के लगभग 40% लोगों का कहना है कि आने वाले साल में गुड्स एंड सर्विसेज के भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखते हुए 42% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने कहा कि उन्होंने 2020 में एप्पल पे या गूगल पे जैसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके फियाट में पेमेंट किया था, जबकि 21% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने बताया कि उन्होंने बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन को भी अपनाया था। अब 18 से 35 वर्ष के लड़के और लड़कियों के बीच कौन कितने परसेंट आने वाले 12 महीनों में किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, चलिए आपको बताते हैं। जहां 24% लड़के हमेशा क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, वहीं सिर्फ 11% लड़कियों ने अपनी हामी भरी है। दूसरी तरफ जहां 33% लड़के काम के मामले में क्रिप्टो का ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, वहीं 28% लड़कियों ने भी इसे चुना है। हालांकि 43% लड़के और 61% लड़कियां इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनके अलावा बात करें इन्वेस्टोपीडिया द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे की, तो अमेरिका में मौजूद 28% मिलियनर्स का कहना है कि वो क्रिप्टो को अपने रिटायरमेंट को सपोर्ट करने के रूप में देख रहे हैं। यह आंकड़ा उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है जिन्होंने कहा था कि वो बचत 25% और स्टॉक इन्वेस्टमेंट 27% का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां लोग क्रिप्टो के नाम से डरा करते थे, कई इसे सट्टे तक का नाम दिया करते थे, उनका अब पिछले 2 साल में क्रिप्टो की दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल चुका है, जिसकी वजह तेजी से आई इस दुनिया में आया हुआ उछाल है। खास करके हमारी न्यू जनरेशन बड़ी संख्या में क्रिप्टो पर अपना भरोसा जमा रहा है, जबकि पुराने जनरेशन से कई इसे रिटायरमेंट के लिए सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आसमान में इतना न उड़ते उड़ते आगे निकल जाए कि अपना वापस लौटना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ जो क्रिप्टो को रिटायरमेंट के रूप में देख रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से अपना फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो की इस तेजी से आगे बदल रही दुनिया से आपको दूर रहना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन टेक्नोलॉजी की इस रेस में बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी दिलचस्प जानकारी को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis,
and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीचा खास शो क्रिप्टो मास्टर्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, आज आपल्यासोबत ते स्पेशल गेस्ट आहेत जे सुप्रसिद्ध क्रिप्टोलॉजी एक्सपर्ट्सपैकी एक आहेत आणि त्यांचं नाव आहे मिस्टर रणजित राणे. या एपिसोडची सुरुवात करण्याअगोदर मिस्टर रणजित राणे यांच्याविषयी आपण काही थोडक्यात जाणून घेऊयात. रणजित राणे हे टेक्नॉलॉजी पॉलिसी कन्सल्टंट आहेत, जे इमर्जिंग फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात सेक्टर रेग्युलेटर्स आणि लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीसोबत काम करत आहेत. त्यांनी रिझर्व्ह बँक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे REBIT सुद्धा काम केलं आहे, जिथे त्यांनी त्यांच्या टेक्नॉलॉजी पॉलिसी रिसर्च आणि आउटरीच टीमचे नेतृत्वसुद्धा केलं आहे. त्यांनी विविध स्टेक होल्डर्ससाठी सायबर सिक्युरिटी आणि सायबर सेफ्टी अवेअरनेस कॅम्पेन्समध्ये आपले सक्रिय असे योगदानसुद्धा दिले आहे. सोबत डेटा प्रोटेक्शन, फायनान्शियल इन्क्लुजन आणि कन्झ्युमर प्रोटेक्शनची सुद्धा त्यांची काही ही आवडती क्षेत्रंसुद्धा आहेत. अशा तंत्रज्ञानामध्ये अग्रेसर असणाऱ्या मिस्टर रणजित राणे यांच्याकडून आज आपण क्रिप्टोमध्ये होणाऱ्या स्कॅम्स आणि क्राईम्सबद्दल थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. रणजित सर, आपले खूप खूप स्वागत क्रिप्टो टीव्हीमध्ये. धन्यवाद आज इकडे बोलवल्याबद्दल. सर, जसं आपल्या सर्वांना माहीत आहे की जगभरात क्रिप्टोचे क्रेज हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे. बरोबर. त्यामध्ये यंगस्टरसुद्धा जास्त मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेताना पाहायला मिळतात. पण कुठेतरी अशा काही गोष्टी त्यांच्यासोबत होतात की आयुष्याची त्यांची जी जमापुंजी आहे ती एका छोट्याशा क्लिकमध्ये किंवा बहुतेक त्यांना अवेअरनेस नसावं यासाठी म्हणून ते सडनली स्किप होत आहे त्यांच्याकडून आणि मोठ्या प्रमाणात लॉस त्यांना झेलावा लागतोय. अगदी. तर त्या संदर्भात समजा एक माझा पहिला प्रश्न असा असेल, सध्या क्रिप्टोकरन्सीच्या दुनियेत पॉन्झी स्कीम्स मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. 2 दिवसापूर्वी जर तुम्ही पाहिलात तर WazirX नावाची जी क्रिप्टो एक्सचेंज आहे त्याला बऱ्याच लॉ एजन्सीज करून हजारोहून अधिक रिक्वेस्ट आल्या आहेत. बरोबर. आणि असंही म्हटलं जाते की त्यामधून 40% हे क्रिप्टो स्कॅम्स हे पॉन्झी स्कीम्स आहेत. सर, आता WazirX क्रिप्टो एक्सचेंज याला कशा प्रकारे टॅकल करू शकेल, त्यामुळे इतर एक्सचेंजेसला यापासून ते कसे अलर्ट राहू शकतात? बरोबर. काय सांगाल सर? सो पहिलं तर हे जे सगळे स्कॅम्स होत आहेत तर पॉन्झी स्कीम हे आपल्याकडे काही नवीन नाही आहे. आपण म्हणजे या काळापासून होणारा त्रास आहे हा. तर ह्याच्यात जसं तुम्ही मगाशी म्हटलात की अवेअरनेस हाच एक खूप महत्त्वाचा घटक आहे. आणि दुसरं म्हणजे छोट्या छोट्या चुकांचंच नंतर जाऊन पुढे काहीतरी मोठा हे तयार होतो प्रॉब्लेम. तर असंच इथे पण आपल्याला दिसते. आणि ह्यासाठी मग आपण जे म्हणतो ते दोन प्रकारच्या लक्ष द्यायला लागेल दोन गोष्टींकडे. पहिलं तर आहे की ॲज अ इन्व्हेस्टर आपण ज्याला ड्यू डिलिजन्स म्हणतात, की आपण जिकडे आपले मेहनतीचा पैसा लावतोय तर त्या बाबतीत आपण जर थोडासा रिसर्च केलं, थोडासा नाही मी तर म्हणेन की नीट रिसर्च करायला पाहिजे. आणि अशा काही गोष्टी ज्या आज इंटरनेटचं सगळ्यांकडेच ॲक्सेस आहे, आपल्या मोबाईलवर आपल्याला जे पाहिजे सगळ्यांकडेच आहे. तर जर आपण नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्व्हेस्ट करत आहोत तर मग आपण जुन्या काही गोष्टींना घेऊन ते नाही करू शकत. बरोबर. सो आपण टेक्नॉलॉजीमध्ये नुसतंच इन्व्हेस्ट नाही करायला पाहिजे, तर आपण त्याच्या मागचं जी कार्यपद्धती आहे ती समजून घेणं, मग इन्व्हेस्टमेंट केली तर आपल्याला असे प्रॉब्लेम तितकेशी येणार नाही. हे झालं इन्व्हेस्टर साईडने. आणि मग जे तुम्ही दुसरं म्हणलात की एक्सचेंजेसमध्ये जे WazirX सोबत जे झालंय 1000हून अधिक रिक्वेस्ट आल्या त्यांना. बरोबर. तर ह्याच्यात काय होतं, पहिली गोष्ट अशी होती की ह्या ज्या रिक्वेस्ट आहेत म्हणजे ज्याला 91 CRPC रिक्वेस्ट आपण म्हणतो, तर ह्या लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज त्यांना पाठवतात की जेव्हा त्यांना माहिती हवी असते, तर ही माहिती त्या कुठल्या तरी FIRच्या आधारावर वगैरे वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये मागतात. तर इथे काय होतं आहे की हे सगळं क्रिप्टोचं जगच नवीन असल्यामुळे लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजकडे पण तितकीशी एक्सपर्टीज नाही आहे. त्यामुळे कुठलीही माहिती ही आपण एक्सचेंजकडनं घेऊ हाच आत्ता सध्या त्यांचा एक त्या गोष्टीकडे बघायचा अप्रोच आहे. ह्यामध्ये काय गरज आहे की WazirXच नाही पण जे बाकीचे पण एक्सचेंजेस आहेत यांनी एकत्र येऊन एक कॉमन प्लॅटफॉर्म जर तयार केला, बरोबर, ज्यावर लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजसाठी काही बेसिक ट्रेनिंग अवेलेबल असेल, त्यांनी जर काही एक्सपर्ट्सला ॲज अ स्पॉक म्हणून नॉमिनेट केलं स्वतःच, म्हणजे पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणून, बरोबर, किंवा जे आपण टेलिकॉम सेक्टरमध्ये बघतो की एक नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड असतो, तर लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीमध्ये माहिती असते कोणाशी बोलायचं ते. तर ह्या गोष्टी ऑलरेडी
असते आहेत, बरोबर, पण हे होत नाहीये तितक्याशा ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाहीये. तर मला तर तसंच वाटतं की अवेअरनेस कॅम्पेन्स रन करणं आणि एक सेंट्रलाइज प्लॅटफॉर्म असा अवेलेबल करून द्यायचा की जर लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजला काही क्वेरी असेल, क्वेश्चन असेल किंवा काही लिगल रिक्वेस्ट जरी असेल तर ती राईट चॅनल्समधनं कशी पास होईल. तर हे आय थिंक याची जबाबदारी ही एक्सचेंजेसनी जर घेतली. म्हणतो सर वझिरेक्स जर आपण म्हटलं तर वझिरेक्सचे युजर्स हे बरेच आहेत ॲज कम्पेअर टू अदर एक्सचेंज. आय डोंट नो, म्हणजे एक्झॅक्ट फिगर माझ्याकडे नाहीये. मग वझिरेक्सलाच एवढा रिक्वेस्ट काय आल्या आहेत, बाकी एक्सचेंजेसला काय नाही आल्यात, काय कारण असू शकतं, काय वाटतं? या मागे जर आपण बघितलं तर गेला जे संसदेचं सत्र झालं होतं तर त्याच्यामध्ये फायनान्स मिनिस्टरनी एक लिस्ट दिली होती की कुठल्या एक्सचेंजेसला वेगवेगळ्या फायनान्शियल क्राईम्स अंडर नोटिसेस पाठवल्या गेल्या. ओके. तर त्यामध्येही काही एक्सचेंजेस आणि म्हणजे आय डोंट, माझा फॅक्ट मला इथे एक्झॅक्ट हे नाहीत, पण आय थिंक तिथपासून सुरुवात झाली आहे वझिरेक्सला ॲक्च्युली जास्त नोटिसेस जाण्याची. ओके. की आणि ह्या ज्या आहेत ह्या नॉट नेसेसरीली सायबर क्राईमच्या नोटिसेस आहेत, यातल्या काही मनी लॉन्ड्रिंगच्याही केसेस आहेत. अच्छा. तर इथे परत मी जे म्हणतोय की एक्सचेंजच्या बाजूनी जो एक ड्यू डिलिजन्स गरजेचा आहे तो कदाचित होत नाही. आता ह्यामध्ये एक काय होऊ शकतं की एक रेग्युलेशन्सच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने जर रिलीज केले की तुम्ही जर एक क्रिप्टो एक्सचेंज असेल तर तुम्हाला या नियमांमध्ये तुम्हाला राहणं गरजेचं आहे. जसं आता मध्ये सर्टिनचं एक नोटिफिकेशन एप्रिलमध्ये जे आलं होतं की 5 वर्षाचे लॉग्स वगैरे मेंटेन करायला त्यांनी मॅन्डेटरी केले. तसंच जर एखाद्या गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट, म्हणजे या बाबतीत जर आपण बघितलं तर जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT आहे, मेटी ज्याला म्हणतात, तर त्यांनी जर एक गाईडलाईन्स इश्यू केल्या तर मग त्याला कंप्लायंट होणं बंधनकारक राहील एक्सचेंजेसवर. सो तिथपासनं पण सुरुवात होऊ शकते. पण गव्हर्नमेंट काहीतरी करेल आणि मग त्याच्यानंतर ह्याच्यावर ॲक्शन होईल ह्याची वाट बघण्यापेक्षा जर एक्सचेंजेसनी स्वतःवर, ज्याला बरेच वेळा बाहेरच्या देशांमध्ये कोड ऑफ कंडक्ट म्हणतात किंवा सेल्फ रेग्युलेटरी अप्रोच म्हणतात, की आपल्याला दिसतंय हा प्रॉब्लेम आहे, तर मग कोणीतरी येऊन आपल्याला त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करायला फोर्स करण्यापेक्षा आपणच जर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला किंवा एक ऑनेस्ट एफर्ट केला, बरोबर, तर ते जास्त चांगलं होईल असं मला वाटतं. सर, मोठ्या मोठ्या कंपनीसोबत आपण लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीसोबत बरंच काम करताय आपण. काय इम्प्लिमेंटेशन आहेत का म्हणजे तुमच्याकडून काय इम्प्लिमेंटेशन्स आहेत का? असं बघायला गेलं तर एक जे मी म्हणजे आत्ता जे म्हणत होतो की इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं आहे. लॉ एन्फोर्समेंटचं टेक्नॉलॉजी अंडरस्टँडिंग हे आपण तितकं डायनॅमिक नाही आहे जितकं अपेक्षित असतं. तर एक्सचेंजेसकडे जी टेक्नॉलॉजिकल एक्सपर्टीज आहे किंवा जी लिगल एक्सपर्टीज आहे ती जर त्यांनी, आणि मी म्हटलंच आहे की एक इफेक्टिव्ह प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जर शेअर केली तर ह्याचा फायदा नक्कीच होणार, दोन्हीकडे होणार ना. म्हणजे लॉ एन्फोर्समेंटला पण होणार आणि एक्सचेंजेसला अशा बाबतीत होणार की त्यांना लॉ एन्फोर्समेंट बरोबर बेटर इंटरॅक्शन कसं करता येईल हेही त्यांना तितकंच कळेल या हिशोबाने. सर, दुसरा प्रश्न माझा असा असेल, सर मुळात यासाठी अवेअरनेस म्हणून काय करता येईल? तर एक गोष्ट जी मी स्वतः केली आहे त्याबद्दल तुम्हाला सांगतो. एक बुकलेट तयार केलं आहे, ग्रेट, वाव, एसिंग द क्रिप्टो मेज म्हणून. यासाठी म्हणजे मी थोडा रिसर्च बॅकग्राऊंडमधनं आल्यामुळे मी एक सॅम्पल सेट ऑफ लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स बरोबर बोललो आणि त्यांची प्रॉब्लेम्स किंवा त्यांना काय इश्यूज येतात क्रिप्टो करन्सीमध्ये असलेल्या क्राईम्सला डील करण्यात, ह्याची मी त्यांच्याशी प्रश्न विचारले. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ब्युरो फॉर पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, BPRD ज्याला म्हणतात, त्यांनी एक SOP डॉक्युमेंट ऑलरेडी रिलीज केलं होतं. आणि मग त्या SOP डॉक्युमेंटला बेस बनवून एक क्रिएटिव्ह बुकलेट बनवलं ज्याच्यामध्ये एक म्हणजे आम्ही एक कॉमिक स्ट्रीप फॉर्मॅट त्याच्यामध्ये यूज केला आहे. त्याच्यामध्ये एक प्रोफेसर क्रिप्टोकांत म्हणून एक आम्ही त्यात इंट्रोड्यूस केला आहे. आणि प्रोफेसर क्रिप्टोकांत, येस, क्या बात आहे. तर त्यामध्ये काय होतं की लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज, अशी अपेक्षा आहे की जेव्हा लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजचे ऑफिसर्स वगैरे हे वाचतील, बघतील, तर त्यातला जो हुक आहे, जो त्यांना इंटरेस्ट म्हणून तो कॉमिक्सवाला पार्ट करतो. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही थोडंसं थेरॉटिकल
आणि मग प्रॅक्टिकल कसं करायचं हेही सांगितले. आणि मग त्या BPRDच्या SOPs मध्ये जे काही टेक्निकल पार्ट आहे तोही मग आम्ही त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केला आहे. प्रतिसाद कसा मिळतो आपल्याला ह्याच्यावर? सो आता तर आम्हाला खूप छान, आता आम्ही एक आठवडा झाला आम्ही ते वेगवेगळ्या लॉ एन्फोर्समेंट फोरम्सवर शेअर केलं. तर आता रिक्वेस्ट येते की ह्याच्या भोवती एखादं ट्रेनिंग मॉडेल बनवता येईल का. आणि आमच्या मते हाच आमचा ऑब्जेक्टिव्ह पण होता की नुसतं ते बुकलेट देण्यात काही फार म्हणजे त्याचा एक गेन लिमिटेड असेल. बरोबर. पण जर ह्याचंच कन्व्हर्जन किंवा ह्याचंच पुढे जाऊन जर एखादा प्रॉपर ट्रेनिंगचा मॉड्यूल बनवता आला तर मग ते कंटिन्युअसली करता येईल. सो आता आम्ही वेगवेगळ्या स्टेट पोलीस बरोबर काम करून आता ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनवायचं पण सुरू करणार आहोत. यामध्ये आम्हाला म्हणजे आम्ही पोलीस फोर्सेस बरोबर तर काम बोलतोच आहे, पण एक्सचेंजेसही आहेत ज्या ह्याच्यामध्ये हेल्प करायला तयार आहेत. आणि महत्वाचं आहे, त्यांनी ते खूप महत्वाचं घेतलंच पाहिजे. करेक्ट. तर आम्हाला असं करायचं आहे की ह्याच्यामधनं मी किंवा माझी टीम ही काही वेळाने बाजूला होऊन बरोबर एक इन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होऊन गेली पाहिजे. म्हणजे ज्या पोलीस ट्रेनिंग अकॅडमीज आहेत त्याच्यामध्ये थ्रू इंडस्ट्री पार्टिसिपेशनच हा एक प्रॉपर प्रोग्रामच झाला पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मग मी करतोय किंवा दुसरं कोण करतोय हे मग त्याच्यात काही फरक पडला नाही पाहिजे. सो हा एक लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह आहे. हे जे बुक तुम्ही जे तयार केलं आहे हे युजर्ससाठी पण आहे ना, म्हणजे बाकी जे हो म्हणजे ज्यांना बघायचे ते बघू शकतात. एकदम ओपन टू एव्हरीवन आहे. पण प्रायमरी टार्गेट जर म्हणलात तर तो, कारण आम्ही जे कॅरेक्टर्स वगैरे बनवलेत ना ते आम्ही अराउंड पोलीस लाईन्स जे पोलिसांचे हे आहेत त्याच्यावर घेतलेले आहेत. पण त्यातली जी माहिती आहे ती सगळ्यांसाठीच आहे. बरोबर. असं काही नाही की बाकीच्या कोणी वाचलं नाही पाहिजे असं काही नाहीये त्याच्यात. त्यामुळे आणि प्रतिसाद पण खूप त्याला छान मिळाला. या बुकला घेऊन म्हणजे आम्ही सुद्धा नक्की एक्साइटेड आहोत. सर दुसरा प्रश्न असा असेल, हल्लीच डोजकॉइनचे को फाउंडर जे आहेत बिली मार्कस याने एक महत्वाचे स्टेटमेंट दिले होते की 95% क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हे स्कॅम आहेत. आणि एवढं मोठं स्टेटमेंट देण्याच्या पाठी नेमका त्यांचा काय उद्देश असावा? हल्लीच टेरा लुनाचे जे मोठे क्रॅश झाले होते तुम्हालाही माहित आहे आणि सर्वांना माहिती, पूर्ण जगाला माहित आहे. बरोबर. त्यामुळे तर त्यांनी हे स्टेटमेंट दिलं नसावं, किंवा या स्टेटमेंटमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम असा निर्माण होऊ शकतो का? काय सांगाल सर? तर संभ्रम तर नक्कीच निर्माण होणार, कारण आपण म्हणजे मगाशी जे पॉन्जी स्कीम्स जे म्हणलो तर त्याचंच एक पुढचं पाऊल म्हणजे स्पेक्युलेशन ज्याला म्हणतो, स्पेक्युलेटिव्ह स्टेटमेंट. तर हेच जर आज शेअर मार्केटमध्ये असं कोणी स्टेटमेंट केलं असतं तर इनसायडर ट्रेडिंग वगैरे किंवा असे वेगवेगळे जे हे आहेत कलम आहेत ते लागले असते आणि त्यांना कदाचित अटकही झाली असती. तर आज काय होतंय की क्रिप्टोच्या जगामध्ये तितकंसं रेग्युलेशन वगैरे नसल्यामुळे काही स्टेटमेंट्स केली तर त्याचा मिसइंटरप्रिटेशन जास्त होऊ शकतं. बरोबर. आणि एवढा मोठा माणूस स्टेटमेंट देतोय. बरोबर. पण ह्यांचं स्टेटमेंट यायच्या आधी आपण असंही बघितलंय की काही महिन्यांपूर्वी इलॉन मस्क वगैरे यांनीही म्हणजे मी तर म्हणेन डॉजीकॉइन हे पुढे येण्यात इलॉन मस्क सारख्या व्यक्तीचा खूप म्हणजे मोलाचा वाटा होता. बरोबर. तर कारण की सर्वात जास्त ट्विट तोच करायचा त्याच्याबद्दल. बरोबर. सो सांगायचा मुद्दा असा आहे की इन्व्हेस्टर म्हणून ह्या गोष्टीला मी तितक्याच सिरियसली बघायला पाहिजे जितकं मी जर शेअर मार्केटमध्ये अशी कोणी स्टेटमेंट वगैरे काही केली तर. कारण माझ्यासाठी शेवटी काय महत्वाचं आहे की माझा मेहनतीने कमवलेला पैसा महत्वाचा आहे. ॲब्सोल्युटली. आणि जर अशा स्टेटमेंट्सनी मार्केटमध्ये वरखाली काही होणार असेल तर मग आपण त्यासाठी मानसिक एक तर तयारी करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे आपण त्यामागचा जो काही आपला रिसर्च आहे तो कॉन्स्टंट ठेवला पाहिजे. बरोबर. ह्यांनी अशा स्टेटमेंट करायला पाहिजे का नाही, म्हणजे खरं तर नाही करायला पाहिजे. पण आज असं आहे की तुम्ही वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर वगैरे काहीतरी बोलता आणि मग त्याच्यानंतर ते व्हायरल होतं आणि तुम्हाला कंट्रोल त्याच्यावर राहत नाही. जर मला आठवत आहे बरोबर तर त्यांनी ह्याच इसमांनी परवा स्वतःचं ट्विटर अकाउंट वगैरे डिलीट केलं आणि सगळं स्वतःचं जे काय आतापर्यंत बोलले होते ते पण डिलीट करून टाकले. तर मग हे पण कुठे स्टेटमेंटला मग अर्थ राहत नाही. बरोबर. तर आपण ॲज अ इन्व्हेस्टर आपण काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण काय ह्याच्यातनं
रिसर्च करायचा आहे. बरोबर. उगा कोणतरी म्हणते काहीतरी ह्यावर जाऊन जास्त मला तर वाटत नाही की खरी गोष्ट आहे. शेवटी लोकांचा अभ्यास हाच महत्त्वाचा. बरोबर रिसर्च आणि अभ्यास एकदम भले तो किती मोठा व्यक्ती असून दे, त्याला फॉलो न करता तुम्ही कितपर्यंत जाणताय, तुम्हाला कितपर्यंत कळत आहे, एकदम या गोष्टीकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. जर आपण फिशिंग अटॅक बद्दल म्हटलं तर काही दिवसांपूर्वी डझनभर असे क्रिप्टोकरन्सी वेबसाईट्सला मोठ्या प्रमाणात फिशिंग हल्ल्याचा सामना करावा लागला. यामध्ये मेजर इथिरियम एक्सप्लोरर, इथरस्कॅन, क्विक स्वॅप, डिफाय, कॉइन गेको एनालिटिक्स डॅशबोर्ड, डेक्स टूल हब इत्यादींचा समावेश आहे. यामध्ये मुळात स्कॅमर्स हे युजरला फेक NFT गेटवेमध्ये एंट्री घ्यायला सांगत असतात. बरोबर सर, युजर्सना या फिशिंग अटॅक बद्दल माहिती नाही आहे म्हणून या घटना वारंवार होत आहेत. जे अटॅकर आहेत ते फिशिंग अटॅकमध्ये जरा जास्तच एक्सपर्ट झाले आहेत का, की यामधून गुंतवणूकदार नेमका अर्थ काय काढायचा? बरोबर. तर दोन्ही गोष्टी झाल्या आहेत. एक 10 वर्षापूर्वीचे फिशिंग स्कॅम जर बघितलेत तर ज्या प्रकारची भाषा ईमेलमध्ये वापरली जायची त्याच्यातनं कळायचं की ही ईमेल खरी नाही आहे. पण आज काय होतंय की जसे जसे म्हणजे ज्याला आम्ही सायबर सिक्युरिटीच्या भाषेत मलिशियस ॲक्टर्स म्हणतो, बरोबर, हे शाणे होत चाललेत. बरोबर. आणि ते नॉट ओनली स्मार्ट पण दे आर ऑल्सो गेटिंग म्हणजे ते विशियस, म्हणजे त्यांना आता फरक पडत नाही की छोट्या माणसाचं ह्याच्यातनं नुकसान होते का मोठ्या माणसाचं नुकसान होते. बरोबर. त्यामुळे ते काय करतायत की ते त्यांचे अटॅक्स जास्त सॉफिस्टिकेटेड बनवायला सुरुवात करतात. आणि मग अशी तुम्ही म्हणलात तसं दोन्ही गोष्टी की फिशिंग अटॅक हे काही नवीन नाही. फिशिंग अटॅक आपल्याकडे आधीपासून अगोदरपासून क्रिप्टो येण्याच्या अगोदरपासून म्हणजे आणि काही जागी तर इतकं म्हणजे सोपं असतं एखादा फिशिंग अटॅक आहे का नाही डिटेक्ट करणं की तुम्ही फक्त त्या लिंकवर फक्त तुम्ही तुमचा माऊसचा कर्सर फिरवला तरी कळतं की ती लिंक सस्पेक्टेड आहे का नाही. जीमेलवर एवढे सर्व लिंक सगळं येतं, क्लिअर कट लिहिलेलं असतं तिकडे की सस्पिशियस लिंक आहे, क्लिक करू नका, तरी काही लोक करणार. आणि मग तुम्ही जे म्हणलात की म्हणजे जे फेक NFT गेटवेज वगैरे, तिथे परत लॅक ऑफ युजर रिसर्च दिसतो की NFT ॲज अ कन्सेप्ट आज इट इज म्हणजे जरी ती एक्झिस्टंट असली आधीपासनं, नॉन फंजेबल टोकन्स ही कन्सेप्ट म्हणून नवीन नाहीये, पण लेटेस्ट से की ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट आज ती थोडेसे नवीन आहे. डिजिटल स्वरूपात त्याला नवीन हे. बरोबर आहे. मग तर आपण आणखीन थोडासा अभ्यास करणं गरजेचं आहे ना. म्हणजे तुम्हाला जर आज क्रिप्टो ॲसेट्स बद्दल काही कळत असेल तर मग तुम्ही NFT बद्दल कळायसाठी आणखीन थोडंसं कस त्याच्यामध्ये लावला पाहिजे. बरोबर. पण हे आपल्याकडे दिसत नाही. आणि शेवटी काय आहे की म्हणजे याला ज्याच्यावर म्हणतात की लायबिलिटी कोणाची आहे तर ती युजरचीच शेवटी लायबिलिटी ठरते ना. की तुमच्याकडे आज इंटरनेटच्या माध्यमातून सगळी माहिती खरं तर ओपनली अवेलेबल आहे. बरोबर. असं नाहीये की एखादी गोष्ट आपण म्हणजे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हा आपण एक्सक्यूज म्हणून आज वापरू शकत नाही. बरोबर. आणि जोपर्यंत रेग्युलेशन्स असे येतील की त्याच्यामध्ये कन्झ्युमर प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट होईल, ॲज अ इन्व्हेस्टर देन द ओनर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग माय सेल्फ हा आपल्या स्वतःवरच राहतो. बरोबर. आणि ते आपण क्लिक करणारा पण युजर आहे, सर्व करणारे युजरच. बरोबर. तुम्ही जोपर्यंत कमांड देणार नाही तोपर्यंत ते एक्झिक्यूट होणार नाही. बरोबर. म्हणजे मला असा दोष द्यायचा नाहीये युजर्सला, कारण कसं होतं कधी कधी तशा सिच्युएशन्स क्रिएट होतात. जसं आपण म्हणले स्कॅमर्स तसे म्हणजे सर्वात आपण जे बघतो की पेमेंट स्कॅम्स जे होतात त्यावेळेस तेथे सेन्स ऑफ अर्जन्सी हा एक खूप इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया असतो पेमेंट स्कॅमसाठी. म्हणजे क्रिप्टोचे स्कॅम्स नाही पण आपण जे बाकीचे पेमेंट स्कॅम्स बघतो त्याच्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये एक आज आपण बघतो की ग्रीड किंवा हावरटपणा हा प्रॉपर शब्द आहे खरोखर. तर ते जे आहे तर त्यावेळेस ह्युमन सायकोलॉजीचा कुठल्या ॲस्पेक्टला ती पर्टिक्युलर म्हणजे मलिशियस ॲक्टर सक्सेसफुली टार्गेट करतोय यावर त्याचा सक्सेस और फेल्युअर ॲक्च्युली ठरणं. बरोबर. आणि मग युजर म्हणून मग मी ती काळजी घेतली पाहिजे असं मला फक्त वाटतं. म्हणजे या सिच्युएशनमध्ये नाही, शेवटी युजरचाच रोल आहे सर. किती मोठे स्कॅमर, किती हॅकर्स असतील, भले तुम्हाला किती लालच दिला, जसं तुम्ही शब्द वापरला हरवटपणा, हा थोडासा कमी करावा. परत आपलं त्या विषयावर होतो अभ्यास महत्वाचा आहे, मार्केट रिसर्च महत्वाचा आहे. एकदम बरोबर. एक छोटासा ब्रेक नंतर आपण पुन्हा भेटणार आहोत नवीन टॉपिक सगळं.
नमस्कार, मी संदीप कसालकर. पुन्हा एकदा क्रिप्टो टीव्हीचा खास शो क्रिप्टो मास्टर्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. पुढचा प्रश्न असा आहे सर, स्कॅमर्सने गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी म्हणून एक नवीन प्रकारची स्कीम आणली आहे. त्याचं नाव आहे लिक्विडिटी मायनिंग. याद्वारे जे स्कॅमर्स आहेत ते क्रिप्टो ट्रेडिंगच्या कॉम्प्लेक्सिटीचा वापर चोरांसाठी एक ढाल म्हणून करतायत. बरोबर. या प्रकारच्या स्कॅम पासून आपण कशा प्रकारे वाचू शकतो? तर मी थोडं वाचलं ह्याबद्दल, कारण माझ्यासाठी पण खरं तर हे नवीन होतं. आणि ह्यात असं होतंय की आणि जसं मगाशी मी म्हणलं की स्कॅमर स्वतः खूप सॉफिस्टिकेटेड होत चालले. तर लिक्विडिटी मायनिंग मध्ये पहिलं जे ज्याला आपण USP किंवा मोडस ऑपरेंडी जो शब्द असतात ते वापरला. तर यात होतंय काय की काही युजर्सला असं सांगितलं जातं की तुमच्याकडे जो काही क्रिप्टोचा ॲसेट आहे तर त्यातला काही टक्का हा तुम्ही एका पूलमध्ये किंवा एका कॉमन रिसोर्समध्ये हे करा, द्या म्हणून. आणि ह्याच्या मागे सांगितलं असं जातं की उद्या जर ह्या पर्टिक्युलर क्रिप्टो ॲसेटची प्राइस कमी जास्त झाली तर आपण ह्या कॉमन पूलमधनं त्याचं नुकसान भरून काढू शकतो. राईट. आणि एकदा तो क्रिप्टो ॲसेट त्या कॉमन पूलमध्ये गेला की मग तो कॉमन पूलच गायब होतो. हे लिक्विडिटी मायनिंग आहे. कन्सेप्ट बघाल तर तसं बरोबर आहे. म्हणजे लिक्विडिटी मायनिंग करायच्या आधी जर कॉमन रिसोर्स असेल तर खरंच चांगलं आहे. बरोबर. पण आता कळतंय की हे असं होतंय. तर ह्याबद्दल जर जास्त वाचलं, जास्त माहिती काढली, ह्यामधल्या अशा कोणत्या साईट सर म्हणजे तुम्ही सजेस्ट करू शकता का की आपल्या युजर्ससाठी ते हेल्पफुल ठरेल? म्हणजे अशा प्रकारचं समजा लिक्विडिटी मायनिंग होऊ नये किंवा इतर प्रकारचे स्कॅम्स, अशा काही वेबसाईट्स तुम्हाला माहित आहेत का की जिथे अभ्यास करू शकतील युजर्स? बघा, मी तर म्हणजे खरं सांगायचं तर क्रिप्टो टीव्ही हे पहिल्यांदा रेकमेंड करेन. थँक्यू सो मच. कारण दोन गोष्टी, एक तर म्हणजे ज्याला आम्ही म्हणतो की कॉन्टेक्स्ट रिलेव्हंट कंटेंट. तुम्ही कुठेतरी दुसऱ्या देशात बसून बनवलेल्या वेबसाईटवर जाणार आणि त्यांच्या लेवलचा प्रॉब्लेम हा कदाचित आपल्यासाठी कॉन्टेक्स्चुअली नसेल. नाही, बरोबर. पण आपल्याकडे जे होते ते जिथे सर्वात जास्त कळेल, आय थिंक दॅट इज द बेस्ट. आणि खरंच आम्ही क्रिप्टो टीव्ही हा पूर्ण प्रयत्न करतोय. आपले बरेच सेगमेंट्स आहेत, आपले स्वतःची युनिव्हर्सिटी आहे, बरंच काय काय आपण करतो. बरोबर. म्हणजे काय करतोय की जे युजर्स आहेत ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, आपण हे कॉन्टेंट जे आहे इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये, तमिळमध्ये, पंजाबीमध्ये, सर्व भाषांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू की कोणाच याच्यापासून म्हणजे कोणाला त्रास होऊ नये भविष्यामध्ये. बरोबर. आणि आज या जास्तीत जास्त अभ्यास व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे. भविष्यात येणार. अगदी बरोबर. सर, पुढचा प्रश्न. सध्या स्कॅमर्स एवढे चतुर झालेत, आता स्कॅमर्स बद्दल आपण परत चतुरपणा जास्त त्यांचं वाढत चाललंय की आता फेक सोशल मीडिया प्रोफाईल्स, फ्युअल चॅरिटी स्कॅम्स इत्यादींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात येते. डीप फेक्स म्हणून सध्या हा स्कॅम प्रसिद्ध होतोय. सर, आपल्याला माहित आहे की 99% लोकही सध्या सोशल मीडियाचा वापर करतात. अगदी बरोबर. कशा प्रकारे या डीप फेक्स पासून गुंतवणूकदार हा स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतो? बरोबर. तर डीप फेक्स या बाबतीत जर आपण म्हणलं तर अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्रपती बराक ओबामा हेही याच्यापासून वाचलेले नाही आहेत. म्हणजे पहिला डीपफेक व्हिडिओ ॲक्च्युली जो समोर आला तो त्यांच्याच एका भाषणाचं डीपफेक होतं ते. तर त्यांनी जे बोललं नाही ते त्या व्हिडिओमध्ये बोललं गेलं. बरोबर. अवघड आहे हे. एक म्हणजे ज्याला वेल इन्फॉर्म्ड युजर म्हणता येईल त्यांच्यासाठी पण डीपफेक्स हा, कारण डीपफेक बनवायसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जातो. अच्छा. आणि एक्झिस्टिंग किंवा पब्लिकमध्ये अवेलेबल असलेल्या व्हिडिओज आणि इमेजेसचा वापर करून नवीन व्हिडिओज आणि इमेजेस बनवले जातात. ओके. आधी असं होतं की ह्याचा म्हणजे लिमिटेड वापर एक्सपेक्टेड होता, पण मलिशियस ॲक्टर्स कुठल्या तरी टेक्नॉलॉजीचा कसा वापर करतील किंवा गैरवापर करतील हे ते झाल्यावरच आपल्याला बरेच वेळा कळतं. तर म्हणजे थोडासा प्रॉब्लेमॅटिक पार्ट आहे हा. आज तरी असं काही म्हणू शकत नाही की ह्या टूलमधनं बघितलं तर कळेल की डीपफेक आहे का नाही वगैरे सगळं. तर मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं डेंजरस असू होणार. आणि याच्यामध्ये जर म्हणजे आपण जे मध्ये बघितलं होतं की काही फेमस ट्विटर युजर्सचे अकाउंट्स हॅक झाले होते आणि त्याच्यात म्हणजे काही बिटकॉइन ट्रान्सफरच्या लिंक्स वगैरे शेअर केल्या गेल्या होत्या त्याच्यामध्ये. तर उद्या जर असा हॅक झाल्यानंतर जर त्या पर्टिक्युलर युजरचा एखादा व्हिडिओ अपलोड झाला
ज्यात तो सांगतोय की तो किंवा मग ती जर सेलिब्रिटी असेल आणि त्यांचं असं सांगितलं जातं की मी अशा अशा गोष्टीसाठी चॅरिटी करणार आहे, तर तुम्ही डोनेट करा, आणि ह्याच्यामध्ये जर डोनेशन्स जमा व्हायला लागले तर आज तरी आपण असं काही करू शकत नाही की तो डिटेक्ट पटकन करता येईल. आणि ह्याच्यामध्ये परत तसंच आहे की युजर म्हणून त्यावेळेस ती गोष्ट करणे किंवा ती गोष्ट नाही करणे हा कॉल फार महत्त्वाचा असतो. आणि आहे डिफेक्ट्सचा प्रॉब्लेम म्हणजे क्रिप्टो साईडला नाहीत, आणखीन बऱ्याच. पण याला आळा घालता येऊ शकतो का? कारण की म्हणजे यामध्ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जे आहेत ते याच्यावर काय करू शकतात का? बऱ्याच वेळा काय होईल की एक्सचेंज पर्यंत सो डिफेक्टचा जो वापर आहे तो शक्यतो सोशल मीडियावर येतो, त्यामुळे काय करणार एक्सचेंज कदाचित इन्व्हॉल्व्ह होणार नाही. त्यामुळे युजर आणि त्याची और तिची होणारी सोशल मीडिया इंटरॅक्शन ह्यामध्ये जे काही होतंय त्यातच सगळं होईल. आणि डिफेक्ट्स म्हणजे मी म्हणलं तसं की हा क्रिप्टोचाच नाही, हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि त्याला म्हणजे त्याला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स एक आहेत जे कदाचित त्या बाबतीत जसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अल्गोरिदम्स वापरून डिफेक्ट्स बनवले जातात, तसेच जर त्या प्लॅटफॉर्मनी अल्गोरिदम्स एम्बिड केले जे डिटेक्ट करतायत डिफेक्ट्सला, तर मे बी थोडंसं काहीतरी. पण सर यामध्ये म्हणजे मी सजेशन देत नाही, पण मला असं वाटतं असे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारे जे प्रोफाईल बनवून सर्व केलं जात आहे, असं कुठली तरी एक वेबसाईट बनली पाहिजे सर्वांनी मिळून. म्हणजे मी एक्सचेंजेसचा मगाशी तुम्हाला उल्लेख केला, बरोबर, एक्सचेंजेसनी मिळून अशी एक कुठली तरी वेबसाईट बनवली पाहिजे ज्यामध्ये म्हणजे युजर्स फक्त त्याच वेबसाईटला बघतील. बरोबर, म्हणजे सोशल मीडियाचीच वेबसाईट, तशीच वेबसाईट आपली, पण युजर्स फक्त त्यालाच फॉलो करतील, बाकी ठिकाणी बघणार नाही. कारण की ही एकदम जेन्युइन साईट असणार. तुम्हाला जर व्हेरीफाय करायचं असेल या साईटवर जाऊन एकदा व्हेरीफाय करा. तुम्हाला जर वाटलं इकडे हा प्रोफाईल असा आहे, तुम्ही एकदा जाऊन इकडे चेक करा, तुम्हाला रिअल काय ते कळेल. बरोबर. असं काय हे कसं लागेल, मी ज्याला म्हणलं की कॉन्टेक्स्च्युअल ह्याच्यामध्ये, तर तुम्ही ही कोणासाठी बनवणार पहिलं म्हणजे इंटरनेटचं जग खूप वास्ट आहे, म्हणजे टार्गेट ऑडियन्स जो आहे, तर तुम्हाला लँग्वेजसाठी ती कॉन्टेक्स्च्युअलाइज करायला लागेल, तुम्हाला लेवल ऑफ टेक्निकल मॅच्युरिटीसाठी ती कॉन्टेक्स्च्युअलाइज करायला लागेल. तर हे आणि मग शेवटी कसं होईल की हे कितीही लेयर्स त्याच्यावर लावत गेलं तरी कुठेतरी काहीतरी कमी त्याच्यात होईल. आणि ह्या मागचा जो आपण सर्वात महत्वाचा जो आपण कधी कधी विचार करत नाही तो म्हणजे ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला होस्ट आणि इम्प्लिमेंट करायला लागणारं मॉनिटरी रिसोर्स. अच्छा, तर हाही एक आहेच पॉइंट की म्हणजे हे करायचं जरी झालं तरी हु विल पे फॉर इट. हाही एक मुद्दाचा आणि मग मॅनपॉवर जाणार आहे, बरोबर, रिसोर्सेस यूज होणार आहेत. एकदम. आणि मग ह्याच्यामध्ये ऑब्वियस आन्सर बरेच वेळा असं येतं की गव्हर्नमेंट शुड डू इट, पण मग विच गव्हर्नमेंट शुड डू इट. म्हणजे जर इंडियन गव्हर्नमेंट बनवते आणि उद्या त्याचा यूज अक्रॉस द ग्लोब होतोय, तर देन आर वी डुईंग इट टू मच. आणि अजून रेग्युलेशन सेट काही झालेलं नाही. सो ह्याच्यामध्ये जोपर्यंत त्या बाउंड्रीज डिफाईन होत नाही की नक्की ह्याच्यात काय, आणि म्हणूनच मला म्हणजे आणखीन एक की मध्यंतरी IMFच्या म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या एका ग्लोबल कॉन्फरन्समध्ये आपल्या फायनान्स मिनिस्टरनी स्टेटमेंट हीच केली होती की क्रिप्टो रेग्युलेशन शुड हॅव अ ग्लोबल अप्रोच. आणि मलाही ते थोडंसं बरोबर वाटते की तुम्ही रिजनल किंवा नॅशनल लेवलला जर पॉलिसीज डिफाईन करायला सुरुवात केली तर असं होऊ शकतं की ते खूप कॉन्फ्लिक्टिंग होतील विथ अदर कंट्रीज किंवा बाकीच्या आजूबाजूच्या देशांबरोबर. सो एक ओव्हरआर्किंग ग्लोबल अप्रोच ज्याच्यामध्ये हे अशा काही गोष्टी ऍक्च्युली इम्प्लिमेंट करणं सोपं जाईल. बरोबर. आणि मग थोडंसं ते जसं त्याला ड्रिल डाऊन करून की आपल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत तर ते मग नॅशनल आणि लोकल लेवलला सॉल्व्ह करणं जास्त बेटर होईल. ठीक आहे सर. सर अलीकडे जर म्हटलं तर कस्टमर्सना मॅलिशियस लिंकवर क्लिक करण्यासाठी आणि त्यांना भुरळ घालण्यासाठी म्हणून स्कॅमर्स हे फेक क्रिप्टो गिव्ह अवेज देखील वापरत आहेत. बरोबर. यामध्ये मुळात फेक लॉग इन बनवलं जातं. शेवटी त्यांना अशा लिंकवर नेण्यात येतं जिथे त्यांची पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाकण्यास सांगितलं जातं. बरोबर. साहजिकच यामध्ये तरुण पिढी कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता त्याला बळी पडत असतो. अगदी बरोबर. ही सिच्युएशन कशी हँडल करते? तर म्हणजे तरुण पिढी या गोष्टीला बळी पडते ह्याच्या मागे आज जे आपण एक इन्स्टंट व्हॅलिडेशन ही एक जी म्हणजे कन्सेप्ट फार बोलली जाते की मला लगेच हवंय आणि मला जास्त हवंय.
हा एक फार महत्त्वाचा सध्या म्हणजे त्याच्या मागे काही कारणं आहेत ज्यामुळे हे आज होतंय की आपण ज्या प्रकारे सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रकारे आणि ह्याच्या मागे खूप सायकोलॉजिकल स्टडी झालेले आहेत. बरोबर. म्हणजे अक्षरशः ह्युमन माइंडला त्या गोष्टी आवडायला लागलेल्या आहेत म्हणून हे होतंय. तसं प्रवृत्त केलं जातं प्रवृत्त केलं जातं. तर ह्या मागे म्हणजे आपण जे म्हणजे या डिस्कशनचा जो एक अंडरलाईंग इसेन्स आहे की त्या क्षणिक जे आमिष आहेत त्याला बळी न पडता तुम्ही म्हणजे मी तर म्हणेन ना की म्हणजे काही जुन्या टेक्निक्स आहेत की बाबा ती गोष्ट करायच्या आधी म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या खुर्चीत बसलाय आणि ते वाचताय ना तर फक्त त्या खुर्चीत न उठा, एक फेरी मारून या कुठेतरी, बरोबर, आणि मग परत तिकडे बसा. कदाचित त्या मिनिटात तुमचं ते हे क्लिअर होईल. म्हणजे ह्याच्यासाठी काय रॉकेट सायन्स नाही. तर म्हणजे तुम्हाला असं त्या मोमेंटमध्ये ते डिसिजन घ्यायचं जर अर्ज येत असला तर जस्ट लेट दॅट मोमेंट पास आणि मग कदाचित तुमची डिसिजन वेगळे असेल विच विल म्हणजे ज्याने तुमचं नुकसान व्हायपासून होऊ शकतं. कारण की आपण त्या फ्लो मध्ये जात असतो. बरोबर. आणि ते शेवटी आपण करतो क्लिक. एक्झॅक्टली. सो तो फ्लो कुठेतरी ब्रेक करायचा. मग त्यासाठी तुम्ही स्वतःला डिस्टन्स करा त्या डिव्हाइस पासून. बरोबर. किंवा तुम्ही म्हणजे बऱ्याच वेळा मी याच्यामध्ये इम्पल्स बाईंग साठी थेरपी चालतात. म्हणजे काही लोकांना ते असतं की ऑनलाईन जायचं आणि वेगवेगळ्या ऍप्सवर खरेदी करत बसायची. बरोबर. तर थोडं माइंड डायव्हर्ट त्याच्यामध्ये. पण मग ते कधी कधी असं होतं की मग ती खरेदी तुमची क्रेडिट कार्ड व्हायला लागते आणि मग तुमचं क्रेडिट कार्ड मग तुम्ही डेटमध्ये जाता आणि मग तो एक वेगळा प्रॉब्लेम तयार होतो. बरोबर. तर ह्यासाठी प्रॉपर रिसर्च थेरपीज आहेत की असं जर तुमचं इम्पल्सिव्ह काही करायची इच्छा होत असेल तर मग तुम्ही तो कसा हे करू शकता, तुम्ही स्वतःला तो आवर कसा घालू शकता. बरोबर. तर परत एकदा ही सगळी माहिती इंटरनेटवर तर नाही सर. यामध्ये मी एक सांगेन, बऱ्याच आता तुम्ही बघाल ना सर, बऱ्याच वेबसाईट आहेत ना, जेव्हा आपण लॉन्च करतो कुठल्या वेबसाईट टाकतो त्यात कुकीजसाठी तो विचारतो. बरोबर. ऍक्सेप्ट कुकीज आणि डिनाय कुकीज. तर ऍक्सेप्ट कुकीज केल्यानंतर काय होतं ते तुम्हालाही माहिती आहे. बरोबर. म्हणजे आपल्याला जे आपण समजा सर्च केलं गुगलमध्ये तर ऑटोमॅटिक त्या रिलेटेड ऍड येण्यास सुरुवात होते. बरोबर. आपण शेवटी काय करतो, अरे मी ते हे टाकतो आणि खाली ऍडव्हर्टाईज येतात, व्हेरी गुड, समजलं. मग आपण परत खाली क्लिक करतो, मग परत त्या वेबसाईटवर जातो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाकतो, मग तिथे वर बघत पण नाही आपण की ते HTTPS आहे की HTTP आहे. करेक्ट. आपल्याला एवढं माहित आहे HTTPS म्हणजे सिक्युअर्ड आहे. बरोबर. नॉर्मल HTTP म्हणजे इनसिक्युअर्ड आहे. वेबसाईट्स आहेत. बरोबर. शेवटी म्हणजे कुठेतरी हा युजर थोडंसं म्हणजे लॅक ऑफ नॉलेज, त्यामुळे आणि त्यामध्येच म्हणजे मी सुरुवातीला जे म्हणलो होतो की जर तुम्ही एका नवीन टेक्नॉलॉजीवरनं काही फायदा करून घ्यायचा उद्देशाने या डोमेनमध्ये उतरला आहात तर मग तुम्ही त्या टेक्नॉलॉजीला समजल्याशिवाय ते नाही करू शकत. बरोबर. तर जर तुम्हाला असं वाटत असेल की ती म्हणजे आपण जे लहानपणे अलिबाबाची गुफा आहे की तुम्ही त्यात जाल आणि तुम्हाला पाहिजे ते घेऊन याल, तसं ते होणार नाही. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःच्या हिशोबानेच जितकं शक्य होईल तितकं रिसर्च आणि अवेअरनेस बिल्डिंग. सर मला असं वाटतं जे कम्प्युटर क्लासेस जे आहेत आता, जे लोकल प्रत्येक ठिकाणी कम्प्युटर क्लासेस आहेत, बरोबर, त्यांनी पण हा विषय ना थोडा घेतला पाहिजे, क्रिप्टोचा खास करून. की क्रिप्टोमध्ये आता जी जनरेशन पुढे चाललेली आहे ते म्हणजे अशा स्कॅम्सला बळी पडू नये, त्यासाठी कुठल्या म्हणजे काय केलं पाहिजे, कुठले प्लगइन्स डाउनलोड केले पाहिजे, कुठले प्लगइन्स डाउनलोड नाही केले पाहिजे, कुठल्या अँटीव्हायरस टाकलं पाहिजे, कुठल्या अँटीव्हायरस नाही टाकलं पाहिजे, ह्या गोष्टी त्यांनी आय थिंक थोडं. तर आता मी माझ्या त्या बुकलेटकडे परत एकदा तुमचं थोडंसं विषयांतर करेन. तर या बुकलेटच्या तयार करताना आम्हाला जो एक म्हणजे एक गेमिफिकेशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. ओके. की ह्युमन माइंडला जेव्हा अटेन्शन स्पॅन कमी होत चाललाय तर तुम्ही जर नॉलेज किंवा फोर्स्ड लर्निंगचं काही द्यायला प्रयत्न केलात, बरोबर, तर त्याचं रिजेक्शन होतं. त्याच्यामध्ये तितकीशी ती इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिव्हली ॲब्सॉर्ब होत नाही. करेक्ट. तर आता एक नवीन आणि ह्याच्यामध्ये अगेन म्हणजे बराच थेरॉटिकल रिसर्च याच्या मागे आहे की त्यापेक्षा जर मी तुम्हाला एक व्हिडिओ गेम बनवून दिला ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक युजर आहात, बरोबर, आणि तुम्हाला 5 स्टेजेस अशा क्रॉस करायचे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दरवेळेस कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या स्कॅम मध्ये फसवायचा चान्स आहे. तर हे जर केलं तर तो गेम संपेस्तोवर मला कळलेलं असतं की मला काय नाही करायचं.
तर आपण जेव्हा म्हणतो टेक्नॉलॉजी वापरली पाहिजे, तर या गोष्टीला जर आपण इंटिग्रेट केला लर्निंग मॉड्यूल्समध्ये आणि मग AR VR मध्ये त्याला जर प्रेझेंट केला युजरला, तर मग आपल्याला वेगळे क्लास आणि वेगळे कोर्स करायची गरज पडणार नाही ना. आणि ते लर्निंग इतकं इंटरॅक्टिव्ह आणि युजर फ्रेंडली होतं की, आणि एक सेन्स ऑफ अचिव्हमेंट पण असते की मला आता कळलंय हे कसं हँडल आता मी तर बळी पडणार. एक्झॅक्टली. सो आणि ह्याचा बाहेर देशांमध्ये या पर्टिक्युलर गेमिफिकेशनचा सायबर सिक्युरिटीसाठी, इव्हन काही देशांमध्ये सेल्फ डिफेन्स साठी पण वापर केला जातो, की असं शक्य नाही की प्रत्येक वेळी कोणीतरी जाऊन फिजिकली क्लासेस वगैरे घेऊ शकतो. तर ही टेक्निक आपण, आणि ज्यांच्याकडे असे रिसोर्सेस आहेत यांनी नक्कीच या बाबतीत काहीतरी विचार केला पाहिजे. खरी गोष्ट आहे सर, कारण की नाहीतर मग भविष्य विचार तरुण पिढीचं तर थोडं खूप डेंजरस आहे. सो त्यांना जे आवडतंय करायला त्याच्यातच जर त्यांना आपण 4 गोष्टी समजू शकलो, बरोबर, तर नक्कीच. पण मला वाटतंय तुमच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून आहे म्हणजे अवेअर होतील. मी तर असं म्हणतोय की ते बुकलेट स्टेपिंग स्टोन आहे, आणि जर त्याच्यातनं असे मॉड्यूल्स वगैरे तयार झाले, असे कॅरेक्टर्स तयार झाले. आज आपण बघतो की लहान मुलं अशा काही युट्यूब व्हिडिओजचे कॅरेक्टर्स वगैरे बघतात की ते जे सांगतात तेच ते येऊन घरी परत मिमिक करतात. बरोबर. तर ह्युमन नेचर आहे, जर एखादी गोष्ट फंक्शनल किंवा रिझल्ट देत आहे त्या पॅटर्नमध्ये, तर नक्कीच आपण त्याचा वापर करायला. तर मित्रांनो, आतापर्यंत आपण पाहिलात कशा प्रकारचे स्कॅम्स असतात. इव्हन आताही आपण ऐकलं रणजित राणे सरांनी जे आपल्याला सांगितलं डीप फेक्सबद्दल. डीप फेक्समध्ये कशा प्रकारचा गोंधळ होऊ शकतो, हे किती डेंजरस आहे हे आतापर्यंत आपण पाहिलात. एक छोटासा ब्रेक नंतर आपण पुन्हा भेटणार आहोत नवीन टॉपिक सकट. धन्यवाद. In today's episode of Digitally Unplugged, we will explain the common questions and myths of crypto investors as far as taxation is concerned. Our first guest, Mr. Indy Sarkar, co-founder TaxCrypt. Taxation was always seen as something outside of the crypto universe. It has created an element of uncertainty, lots of questions, but it might evolve over the next few years. And our second guest, Mr. Raj Kapoor. Wherever there is uncertainty, there is a market reaction. And in this case, it's been a very adverse reaction. Let's not complicate the matter. Taxes are important. However, clarity around them is even more important. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. पुन्हा एकदा क्रिप्टो टीव्हीचा खास शो क्रिप्टो मास्टर्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आता आपण आपला जो सेगमेंट पुढचा असणार आहे, यामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत तरुण पिढीने कशा प्रकारे सतर्क राहणं गरजेचं आहे. तर आपल्यासोबत आहेत मिस्टर रणजित राणे. स्वागत आहे सर. धन्यवाद. सर, मुंबईत जर म्हटलं तर मुंबईमध्ये जर 2 दिवसापूर्वीच 1.5 करोडचा स्कॅम झालेला चारकोप परिसरामध्ये. जगदीश लाडी हा 23 वर्षाचा मुलगा आहे. तर त्याने काय केलं की त्यांनी स्वतःच्या नावावर इतरांकडून जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनी सांगितलं बाबा माझ्या नावावर माझ्या अकाउंटमध्ये तुम्ही पैसे टाका, बरोबर, मी गुंतवणूक करेन, बरोबर, आणि जे रिटर्न्स आहेत मी तुम्हाला देत जाईल. त्याने सुरुवातीला रिटर्न्स द्यायला सुरुवात केली, थोडे आणि आम्हीच दाखवलं बाबा हा. आणि प्रत्येकजण सर्वसाधारण माणूस काय करणार, काय बोलणार की हा मला मिळत आहे ना, चला अजून टाकूया, अजून टाकत गेले पैसे. शेवटी मग याने रिस्पॉन्स द्यायचं बंद केला, शेवटी पळाला. बरोबर. पण शेवटी यामध्ये नुकसान जे इन्व्हेस्टर आहे, कोणी 10 लाख टाकले आयुष्याचे. 10 लाख म्हणजे मुंबईसारख्या शहरामध्ये मोठी गोष्ट आहे. अगदी बरोबर. एवढे खर्च एवढे सर्व आहेत. 10 लाख, कोणी 25 लाख, 30 लाख, बरेच काय टाकले पैसे. मग आपण यांना असं काय सल्ला देऊ शकतो की बाबा अशा लोकांच्या नादी लागू नका, काय सांगू शकतो आपण त्यांना? तर जे तुम्ही आता सांगितलं म्हणजे पॉन्झी स्कीम, म्हणजे ह्यालाच पॉन्झी स्कीम म्हणतात, बरोबर. तर आणि वर्ड ऑफ माउथ त्यांनी पब्लिसिटी तेच केली, वर्ड ऑफ. बरोबर. तर किंवा आपण जे काही मध्यंतरी मल्टी लेवल मार्केटिंग म्हणून पण जे MLM सिस्टम की तुम्ही 10 मेंबर आणा आणि मग ते 10 मेंबर आणखी आणतील, तर यामध्ये तर मला पहिल्यापासून सांगायचं हे लोकांसाठी नवीन नाहीये. आज काय होतंय की त्याला क्रिप्टोचं नाव देऊन ते काहीतरी पहिल्यांदा होत असल्यासारखं सांगितलं जातं, पण तसं नाहीये. म्हणजे ज्याला आपण 420 म्हणतो, ही शेवटी 420 आहे, बरोबर. आणि तुम्ही त्यावेळेस तुम्हाला जे तिथे म्हणजे एक फायनल
तुम्हाला जो काही त्यातनं आउटकम दाखवला जातो त्याला तुम्ही जर बळी पडत असलात तर म्हणजे थोडंसं त्याच्यामध्ये युजरचाही हे काय म्हणतात याच्यामध्ये लार्जर पिक्चर थोडंसं आपण विचार करायला गेला तर कन्झ्युमर प्रोटेक्शनबद्दल होणारं अवेअरनेस ह्याची ओनरशिप आज कोणीच घेत नाही आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंट साईडलाही नाही आहे, एक्सचेंजेसमध्ये पण तसं काही फारसं होत नाही. क्रिप्टो रिलेटेड म्हणताय की क्रिप्टो रिलेटेड बाकीकडे आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल आता म्हणजे माझ्या ह्याच्यात येते की जसं आरबीआयचा एक तो आरबीआय कहता है म्हणून एक आपण ऍडव्हर्टाइजमेंट बघतो प्रिंटमध्ये वगैरे बघतो. तर आज हे होणं गरजेचं आहे. आणि आज जर आपल्याला असं वाटत असेल की गव्हर्नमेंटने ते करावं तर गव्हर्नमेंट ते करत नाहीये तर ह्या इकोसिस्टीमच्या सेफ्टी आणि सिक्युरिटीमधनं ज्यांना बेनिफिट होणार आहे त्यांनी मग एकत्र येऊन हे करणं त्याच्यात काही नोटेबल इन्व्हेस्टर्स येऊ शकतात, क्रिप्टो एक्सचेंजेस येऊ शकतात. सर एनजीओ सुद्धा येऊ शकतात काय म्हणजे ह्यामध्ये जर आणायचं झालं तर म्हणजे हरकत काहीच नाहीये. पण मग मी मगासपासून जे एक कॉमन लाईन सांगतो की कॉन्टेक्स्चुअलायझेशन करणं ते फार गरजेचं आहे. मग एनजीओ तुम्हाला हेल्प कुठे करतील की जिथे मे बी रिजनल लँग्वेजमध्ये कंटेंट वगैरे जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तर तिथे त्यांचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. पुढचा एक प्रश्न असा आहे सर, ज्याप्रमाणे क्रिप्टोच्या गुंतवणूकदारांमध्ये वाढ होते आहे त्याप्रमाणे फेक क्रिप्टो वॉलेटच्या प्रमाणात सुद्धा वाढ होते. बरोबर, तेवढे त्याच वेगाने ते होत आहे. तर स्कॅमर्स इझिली फेक क्रिप्टो वॉलेट्सद्वारे गुंतवणूकदारांना अक्षरशः लुटत आहेत. मग अशा फेक वॉलेट्सला ओळखायचं कसं आणि कोणकोणते सिक्युरिटी मेजर्स आपण पाहिले पाहिजेत? तर फेक वॉलेट्सबद्दल जर तुम्ही बघितलं तर माझं म्हणजे सर्वात मी ज्याला मी म्हणतो की एक सिंगल टेस्ट जी असेल लिटमस टेस्ट ज्याला म्हणतात तर त्याचं डेट ऑफ फॉर्मेशन किंवा ते कधी आलंय असं आलंय हे तुम्ही बघा. आणि समथिंग विच इज व्हेरी रिसेंट हे तुमचं आयडियली तुमचं त्याच्यामध्ये नाही तुम्ही तुमचं इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे. कारण जर ते एक आठवडा एक महिन्याच्या अलीकडे जर ती एंटिटी अस्तित्वात आली असेल तर ऑब्व्हियसली दे आर नॉट डुईंग रादर दे डोंट डिझर्व युअर हार्ड अर्न मनी. बरोबर. सो थोडंसं ह्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी दाखवली युजर्सनी आणि या प्रकारे जर काही त्यांचे म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की रिसेंट जे आता नवीन आलेले आहेत तिथे थोडंसं तुम्ही रिसर्च करा. रिसर्च करणं गरजेचं आहे. तुम्ही सगळं म्हणजे याला म्हणतात ना ऑल एग्स इन वन बास्केट जे म्हणलं जातं. आज तुम्हाला 10 वॉलेट्स ऑपरेट करण्यापासून कोणी थांबत नाहीये. मग तुम्हाला जर नवीन वॉलेटमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं तुमची बेअर मिनिमम अमाऊंट तुम्ही तिथे बरोबर ठेवा. मे बी एस्टॅब्लिश्ड एंट्रेन्स्ड वॉलेट ज्याचं ग्लोबल हे आहे प्रेझेन्स आहे तिथे तुमचं युअर लार्जर इन्व्हेस्टमेंट्स कॅन ऑर युअर लार्जर ॲसेट्स कॅन बी पार्क्ड तिथे तुम्ही ते ठेवू शकता. बरोबर. सो हा एक ड्यू डिलिजन्सचा मेथड आहे. आणि दुसरं जे म्हणतात तसं की म्हणजे ज्याला आपण युजर बेस आणि युजर जे आपण बाकी पण काही गोष्टींसाठी जे करतो की एक गुगल क्वेरी तुम्हाला सांगू शकते की हे कितपत भरोशाचं आहे किंवा नाही आहे ते. जसं मी मगासपासून म्हणतो की आणि पर्याय शेवटी तोच आहे ना सर. माहिती सगळी इंटरनेटवर आहे. तुम्हाला फक्त बरोबर प्रश्न म्हणजे अक्षरशः तुम्ही जर प्रश्न असा फ्रेम केलात ना की XYZ वॉलेट फेक आहे का तर अक्षरशः उत्तर पण तुम्हाला मिळेल तिथे. बरोबर. हे असं काही त्याच्यामध्ये वेगळं काही रिव्ह्यूज पण येतील. बरोबर. फक्त दुसरं त्याच्यामध्ये लेअर काय होते की सॉफिस्टिकेशन पण वाढत चाललंय. तर आज आपण बघतो की काही स्कॅमस्टर्स ज्यांना खरंच फार म्हणजे जे म्हणलं तसं विशियसली हे सगळं करायचंय तर असं होऊ शकतं की दे कॅन ते फेक रिव्ह्यूज वगैरे पण करू शकतात. बॉट्स वगैरे बनवून आज हेही केलं जातंय. सो त्यासाठी मग पहिला पॉईंट जो आहे की जर एखादी गोष्ट नवीन फारच नवीन आहे तर देन डोंट पुट एव्हरीथिंग तिथे सगळं ठेवू नका ना. तेवढंच फक्त मग आपण करू. सर रेग्युलेशन्स बद्दल मी बोलतो. बाकी देशांच्या तुलनेमध्ये भारताने अजूनपर्यंत क्रिप्टोसाठी रेग्युलेशन सेट केले नाहीये. बरोबर. ओके. क्रिप्टोमध्ये होणारे स्कॅम्स क्राईम्स हे याचे कारण असू शकतं का की सरकार याला मनी लॉन्ड्रिंग लॉटरी इत्यादी प्रमाणे कन्सिडर करते आहे म्हणून रेग्युलेशन्स अजून बनले नाही आहेत? काय वाटतं आपल्याला? तर म्हणजे माझ्या पर्सनल जर एक्सपिरियन्समधनं विचारलं तर याच्यामध्ये क्लिअर कट एक लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग हा सर्वात महत्त्वाचा क्रायटेरिया आहे.
ज्याच्यामध्ये आपण जसं क्रिप्टो ॲसेट आणि क्रिप्टो करन्सीमध्ये काय फरक आहे हे जर आज तुम्ही बसून विचार करायचा प्रयत्न केला तर या फरकामध्येच बऱ्याचशा रेग्युलेशन्सचं डिफरन्स समोर येऊ शकतो. आणि दुसरं असं होतं की जर असे रेग्युलेशन्स किंवा अशा काही गोष्टी बाहेर आल्या तर मग त्याचं ओनरशिप कोणाकडे राहील, कुठली एजन्सी त्या बाबतीत म्हणजे काही जण म्हणतात की तुम्ही ॲसेट क्लास म्हणून रेग्युलेट करा, मग तुमचं सिक्युरिटी मार्केट विल, त्यांचा रेग्युलेटर विल हॅव टू प्ले. बरोबर. पण तुम्ही जर त्याला एक मोड ऑफ पेमेंट म्हणून रेग्युलेट करायचं म्हणलं तर देन इट विल बिकम द बँकिंग रेग्युलेटर्स जॉब, असंही हे होऊ शकतं. तर लॅक ऑफ रेग्युलेशन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग. आणि ती अंडरस्टँडिंग कधी बिल्ड होईल तर असं नाही आहे की तुम्ही काही ऑफिशियल्सला ट्रेन केलं तर ते अंडरस्टँडिंग बिल्ड होईल. अंडरस्टँडिंग विल बिल्ड स्टेक होल्डर कन्सल्टेशनमधनं ॲक्च्युली अंडरस्टँडिंग बिल्ड असं मला वाटतंय. तर तुम्ही इंडस्ट्रीमधले जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांच्याशी बोला, तुम्ही बाहेरच्या देशांमधनं जे या गोष्टींबद्दल रिसर्च करतायत, इवन इंडियामध्ये ज्यांनी याबद्दल रिसर्च केलं आहे अशा लोकांना फ्रिक्वेंटली जर तुम्ही इंटरॅक्ट केलं त्यांच्याबरोबर तर तुमची अंडरस्टँडिंग. आणि मी क्रिप्टो टीव्हीच्याच एका आधीच्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये पण हेच सांगितलं होतं की रेग्युलेशन हे असं ऑन ऑफ सारखं करून चालणार नाही. म्हणजे आम्ही सगळंच करू नाहीतर आम्ही काहीच करणार नाही असं नाही चालणार. तर ते एक ज्याला डायल म्हणतात तर तसं ते ऑपरेट करायला लागेल. बरोबर. की आम्हाला आता या गोष्टीबद्दल एक फेअर डिग्री ऑफ अंडरस्टँडिंग आहे तर मग आम्ही तो डायल थोडासा आणखीन पुढे नेऊ. आणि असं करत करत तो डायल तुम्ही कम्प्लीट जेव्हा कराल बरोबर तेव्हा देशात एक सर्टन डिग्री या गोष्टी होतच राहणार. बरोबर. पण माझं एकच म्हणणं आहे की बाकी देश हे पुढे पुढे चालले आहेत. ऑलरेडी दुबई म्हटलं तर हा क्रिप्टो हबत होत चाललेला आहे. बरोबर. कुठेतरी सरकारने थोडंसं जरा स्पीडी पुढे आलं पाहिजे. म्हणजे मी ह्याला नाकार देत नाहीये, पण आपल्याकडे काय होतंय की आणि जे रिसेंट एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जी चर्चा बरीच होती तर त्यातनं जर आपण काही बोध घेतला तर असं लक्षात येतं की 2018 पासून ती प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये 2 कमिटी बसून झालेल्या आहेत, एक पार्लमेंटरी कमिटी आहे त्यातली. बिलचा 3रा ड्राफ्ट आत्ता कन्सिडरेशनसाठी आहे आणि मल्टिपल राऊंड ऑफ स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन पण झालं आहे. तर काय झालं आहे की 2018 पासून आजपर्यंत ना ॲक्च्युली आता तो विषय डायल्यूट व्हायला लागला आहे आणि लोकांचं डेटा प्रोटेक्शनवरनं फोकस डायव्हर्ट व्हायला सुरुवात झाली. तर गरज असताना त्या गोष्टीवर लॉज बनवणं किंवा रेग्युलेशन बनवणं हा एक ट्रेंड येणं गरजेचं आहे. म्हणजे सगळे झाल्यानंतर जसं आपण बॉलिवूडमध्ये बघायचो आधी की एकदम एंडला पोलीस येतात ते होतं, तर तसं आपण आपल्या रेग्युलेशन्स नाही होऊन दिलं पाहिजे. आवर रेग्युलेशन शुड बी प्रोएक्टिव्ह. बरोबर. दे शुड नॉट म्हणजे त्यांच्यानी कुठल्याही प्रकारचं इनोव्हेशन स्टिफल किंवा आकारता जाता कामा नये. आणि तिसरं म्हणजे ते टेक्नॉलॉजी ॲग्नॉस्टिक हा शब्द आहे ॲक्च्युली, की म्हणजे ब्लॉकचेनसाठीच करायचं आहे का मग ह्या पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्मसाठी करायचं आहे का ह्या प्रॉब्लेमसाठी, तसं ते नाही असलं पाहिजे. तुम्ही यू शुड लुक बियॉन्ड, त्याच्या पुढे जाऊन तुम्ही हे बघितलं पाहिजे. आणि लास्टली ह्या सगळ्या रेग्युलेशन्समध्ये एक सनसेट क्लॉज ज्याला म्हणतात की त्याच्यात तुम्ही लिहिलं पाहिजे असं की आम्ही हे आज म्हणतोय पण आम्ही दर 6 महिन्यांनी हे रिव्हिजिट करू. बरोबर. किंवा आम्ही दर 1 वर्षांनी एक एक्सपर्ट कमिटीकडनं या रेग्युलेशन्सला रिवाईज करू. बरोबर. मग त्याच्यामध्ये काय होतं की एक खूप हाय डिग्री ऑफ सर्टनिटी इन्व्हेस्टर्सला कळते की आज हे रेग्युलेशन आहे, 1 वर्षांनी त्याचा रिव्ह्यू होईल. बरोबर. जर त्याच्याबद्दल बरोबर वाटलं तर ते कंटिन्यू होईल, जर त्याच्यातनं प्रॉब्लेम वाटला तर ते रिवाईज होईल. बरोबर. आणि ह्यामध्ये मग हायर डिग्री ऑफ कंझ्युमर प्रोटेक्शन, हायर डिग्री ऑफ नाही होत असतं. आता एवढे GR निघतात, बरोबर, त्यामध्ये होतं अमेंडमेंट ह्या होतात राहतात गोष्टी, बरोबर होतात. पण मला विश्वास आहे आपण संत गतीने चाललोय, बरोबर, कासवाची चाल चालतोय, पण आपण सक्सेस होऊ आणि कॉन्क्रीट होईल आपलं काम. नाही, कॉन्क्रीट होईल. मला त्याच्याबद्दल डाऊट नाही. सुरुवात केली पाहिजे. सुरुवात करणं, 2 गोष्टी, सुरुवात करणं गरजेचं आहे. तुम्ही ऍक्सेप्ट करणं की आम्हाला या विषयावर काहीतरी करणं
गरजेचं आहे. जेव्हा आणि ते अलॉंग विथ डेटा करणं ते तितकंच महत्वाचं आहे. म्हणजे अशा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स करणं आपण बघतो की काही सिनियर ब्युरोक्रॅट्स वगैरे यांच्याकडनं म्हणजे जसं आपण पहिल्यांदा डॉजिकॉइनच्या फाउंडरबद्दल जे बोललो तर तसं काही सिनियर अथॉरिटीजनी खूप जुनं एक ट्युलिपचा स्कॅम होता त्याच्याबरोबर मध्ये क्रिप्टोकरन्सीजला कम्पेअर केलं. पण तसं कम्पेअर करून थोडंसं तुमचं लॅक ऑफ एव्हिडन्स समोर येतो. तुम्ही जर असं म्हणलात की आम्ही हा स्टडी केला किंवा आम्ही हा रिसर्च कमिशन केला आणि त्याच्या फाइंडिंग्समधनं आम्हाला हे प्रॉब्लेम बाहेर आले तर तुमच्या त्या स्टेटमेंटला खूप व्हॅल्यू असते. बरोबर. आणि लोकांना ती डॉक्युमेंट पब्लिक डोमेनमध्ये जर अवेलेबल असली तर ते स्वतः जाऊन की असं काय प्रॉब्लेम्स आहेत हेही बघू शकतात. आज आपल्याकडे हा एक प्रॉब्लेम खूप मला जाणवतो की एव्हिडन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग जे आहे क्रिप्टोच्या फील्डमध्ये ते होत नाही आणि तो थोडासा प्रॉब्लेम म्हणजे फिक्सेबल प्रॉब्लेम आहे. आय होप लवकरात लवकर त्याच्याबद्दल काहीतरी होईल. तुमचा बराच वेळ घेतला सर. नाही पण डिस्कशन खूप छान झालं ते खूप महत्वाचं आहे. शेवटचा प्रश्न. हा प्रश्न ऍक्च्युली सर्वच गुंतवणूकदारांना पडला असावा की माझ्यासारखा सामान्य माणूस आपल्या मेहनतीचा पैसा इन्व्हेस्ट करण्याच्या अगोदर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि डीफाय प्रोटोकॉलच्या सिक्युरिटी पॅरामीटर्सला कशा प्रकारे इव्हॅल्युएट करू शकेल. आता ह्यामध्ये कसं होईल की म्हणजे देर इज म्हणजे ज्याला म्हणता येईल ना की वन साईज फिट्स ऑल असं ह्याच्यामध्ये उत्तर देता येणार नाही. प्रत्येक युजरचं अंडरस्टँडिंग आणि रिस्क ॲपेटाईट वेगवेगळं असतं. त्याचबरोबर बरेच वेळा युजर्स हे म्हणजे ज्याला आपण ऑनबोर्डिंग म्हणतो क्रिप्टोच्या डोमेनमध्ये ह्याचे चॅनल्स वेगवेगळे असतात. काही लोक स्वतःहून एंटर करतात, काही माझ्याबरोबरचे 10 लोक करतायत म्हणून मी हे करून येतात, काही एक्सपेरिमेंट म्हणून येतात, तर काही ॲक्च्युअल म्हणजे ॲसेट डायव्हर्सिफिकेशन वगैरे या अंतर्गत येतात. तर तुमचा पर्पज ऑफ कमिंग ऑन बोर्ड हा तुमचा प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह असला पाहिजे. तुम्ही किती डिटेलमध्ये त्याच्यामध्ये जाताय ह्याच्यासाठी. जर तुम्ही एक्सपेरिमेंटेशन म्हणून येताय तर देन तुम्हाला सगळंच काही माहिती असायची गरज नाही. मग तुम्ही छोट्याशा अमाऊंटमध्ये तुम्हाला जसं वाटेल की हे ट्राय करू ते ट्राय करू त्या ह्याच्यामध्ये करू शकता. पण तुम्ही जर ॲसेट डायव्हर्सिफिकेशन म्हणून येत असला की आय एम गोइंग टू तुम्ही मोठे फंड्स घेऊन येणार असला तर मग तुम्ही त्याबद्दल एक्सटेन्सिव्ह रिसर्च आणि कन्सल्टेशन करणं तितकंसं गरजेचं आहे. सो तेच म्हणलं की युजरचा एंड ऑब्जेक्टिव्ह आणि त्यांचं चॅनल ऑफ ऑनबोर्डिंग ह्या हिशोबाने तो व्हेरी होईल पॅटर्न. सर खूप बरं वाटलं मुळात तुम्ही वेळ काढून इकडे आलात आणि एवढं इम्पॉर्टंट डिस्कशन जे झालंय ना सर, खरंच मला वाटतं ह्या पूर्ण डिस्कशनमुळे युजर हा नक्कीच सेफ राहील अशी आपण आशा करतो. 100% मला तर विश्वास आहे. कारण की तुम्ही जे माहिती दिलात ना खरंच व्हॅल्युएबल माहिती आणि यापुढे तुमची मदत लागणार मला नक्की. आणि मला म्हणजे मलाही इथे क्रिप्टो टीव्हीच्या स्टुडिओमध्ये येऊन तुमच्याशी इंटरॅक्ट करायला आणि छोट्या प्रमाणात का होई नाही म्हणजे एक माहितीच्या माध्यमातून इम्पॅक्ट क्रिएट करायचा चान्स मिळतो. तर ह्या बाबतीत तर म्हणजे मी तुमचा आभारी आहे की तुम्ही मला हा चान्स देता आणि तुम्ही जेव्हा बोलवाल तेव्हा नक्कीच बोलवणार पण येणार, काही वादच नाही. तर हे होते आमचे खास गेस्ट मिस्टर रणजित राणे सर. मला आशा आहे की तुम्हा सर्वांना हा एपिसोड नक्कीच आवडला असणार. तर आत्ताच या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या प्रतिक्रिया या कॉमेंट बॉक्समध्ये आवर्जून द्या. क्रिप्टोच्या दुनियेतील प्रत्येक अपडेटसाठी क्रिप्टो टीव्हीला आज सबस्क्राईब करा, बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका. अशाच प्रकारच्या स्पेशल गेस्टसोबत स्पेशल शोज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. Cryptocurrency prices are mimicking stocks and bonds like never before, penalizing investors who acquired Bitcoin and other digital assets to diversify their portfolio. Because central banks increased the supply of fiat money in 2020 and 21, crypto prices surged, and now the Fed is tightening, crypto and equity markets are correcting lower.
हाय गाईज, क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉकवाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहेत. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटर्जी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच
POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स. उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी. लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया. जी हाँ, NFT की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए. ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है. लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टो पंक्स की लंका में आग कैसे लगी. दरअसल क्रिप्टो पंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी. 2017 में जब क्रिप्टो पंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे. देखते देखते क्रिप्टो पंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा. Jay-Z, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे. एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टो पंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप यॉट क्लब ने एंट्री मारी. अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी. जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और NFT होल्डर्स को क्रिप्टो पंक्स की खामियां चुभने लगी. दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टो पंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी. जैसे कि बोर्ड एप के NFT ओनर्स को NFT के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. लेकिन क्रिप्टो पंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे. लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टो पंक्स के NFT ओनर्स को IP, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं. क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही NFT अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है. क्रिप्टो पंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर NFT है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है. इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप यॉट क्लब ने 2 और फ्री NFTs लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया. इसके साथ ही NFT होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं. सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं. बोर्ड एप यॉट क्लब अपने NFT होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की. ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टो पंक्स के NFT होल्डर्स ने ट्विटर पर की. उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए. लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टो पंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव NFT प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई. इतना ही नहीं, क्रिप्टो पंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड NFT तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड NFT को रैप्ड V1 NFT करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी. खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया. लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं.
इनफैक्ट एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे NFT प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के आईपी को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो NFT होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू आईपी के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो NFT होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार NFTs का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। In today's episode of Digitally Unplugged, we will explain the common questions and myths of crypto investors as far as taxation is concerned. Our first guest, Mr. Indy Sarkar, co-founder TaxCrypt. Taxation was always seen as something outside of the crypto universe. It has created an element of uncertainty, lots of questions, but it might evolve over the next few years. And our second guest, Mr. Raj Kapoor. Wherever there is uncertainty, there is a market reaction. And in this case, it's been a very adverse reaction. Let's not complicate the matter. Taxes are important. However, clarity around them is even more important. Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee, and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional
than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today, we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work by following a simple protocol: if, when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action when predetermined conditions have been made and verified. These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed. That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade
does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IERC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उठाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लग ही गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था।
इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्रीकृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था। अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफबीआई इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि एफबीआई अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली सीबीआई को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि एफबीआई ने इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही यूएस प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए सीबीआई से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है। मुकदमा कोर्ट में है और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power of now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixel that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal.
ओह हाय, आप आ गए। आजकल क्या है ना, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे अंदर का आर्टिस्ट आजकल बहुत एक्साइटेड है। मैं अपने इस मास्टरपीस पर काम जो कर रही हूँ, इसे जल्दी कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि मैं इसकी NFT बनाऊंगी और फिर मिलियंस कमाऊंगी। अरे लेकिन इससे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि इसे मैं किस डिजिटल वॉलेट में स्टोर करूं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो वॉलेट में सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि NFTs भी स्टोर की जाती हैं और इसके लिए दो तरह के वॉलेट्स यूज होते हैं, कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अगर आप एक कस्टोडियल वॉलेट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी प्राइवेट कीज पर फुल कंट्रोल नहीं मिलता। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि कोई एक्सचेंज या फिर कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर आपके बिहाफ पर आपके एसेट को स्टोर करते हैं और आप अपनी प्राइवेट कीज एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन इसमें कुछ गलत या खतरे वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये डिसीजन पूरी तरह से आपकी नीड पर डिपेंड करता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ऐसे में अगर आप अपनी प्राइवेट कीज मिसप्लेस कर देते हैं तो आप अपने वॉलेट का एक्सेस खो देते हैं। वहीं अगर आप कस्टोडियल सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं तो अपनी कीज के साथ साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आपकी प्राइवेट कीज को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी भी कस्टोडियल की होती है। तो अगर आप अपनी एक्सचेंज का पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो कस्टोडियल सर्विस का कस्टमर सपोर्ट आपको उसे रिकवर करने में मदद करता है। सो कन्वीनियंट है ना। और अब बात नॉन कस्टोडियल वॉलेट की। एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट में होल्डर के पास होता है प्राइवेट कीज का फुल एक्सेस एंड कंट्रोल। जिन यूजर्स को अपने फंड्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए उनके लिए नॉन कस्टोडियल वॉलेट परफेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा कि अपने वॉलेट को सेफ रखने के लिए कीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अगर किसी वजह से आप अपनी प्राइवेट कीज खो देते हैं तो कोई उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कई ऐसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स और एप्स हैं जो यूजर्स को अपनी कीज सेफगार्ड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। इतना ही नहीं, Tor.us जैसे वॉलेट प्रोवाइडर भी हैं जो सोशल मीडिया लॉगिन के थ्रू यूजर्स को की सिक्योर करने की सेफ्टी और कन्वीनियंस देते हैं। तो चलिए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए स्टडी करते हैं कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट के बीच मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहले प्राइवेट कीज, थर्ड पार्टी ओनरशिप और वॉलेट होल्डर ओनरशिप। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी, accessible to register accounts, accessible to anyone. Point number 3, transaction cost, typically higher or typically lower. Point number 4, security, typically lower, typically higher. Point number 5, support, typically higher and typically lower. Point number 6, KYC, yes and no. अब तो मैं पूरी तरह क्लियर हूं कि मुझे कौन सा वॉलेट चाहिए। And now that even you know about custodial wallets and non-custodial wallets, make a wise decision. अरे मैं तो भूल ही गई बातों में कि मुझे तो अपना मास्टरपीस कंप्लीट करना है। Time for me to go. लेकिन आप मेरी यानी कि रुचि शर्मा की ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Very good evening and a warm welcome to all the crypto enthusiasts. I would like to welcome you all to the land of Cryptoverse. I'm Rekha Khan, your host for the webinar, and we have with us Dr. Vishal Saraswat, crypto expert and security consultant, joining us for the event today. Today, we're going to be talking about the future of cybersecurity in crypto world. On joining, you would notice that you all are in mute. If you have any questions throughout the webinar, please write them on the chat section. At the end of the webinar, we will be holding a Q&A session where all the queries of the participants would be answered by the speaker. From the creator of Odin, MCX and IEX, here is yet another credible and exchange neutral platform a user can rely on while walking towards the path of crypto and blockchain understanding. Starting from education to knowledge to all the latest news, all covered under one super app.
CryptoWire. From a novice to a professional trader, every market participant can have a slice of information readily available on the touch of their fingers. Let me first take you through the world's first crypto university, Crypto TV, and CryptoWire services. We all know that crypto and blockchain ecosystem is emerging at an immense speed, and to keep a track of all the events, prices, and news look to be difficult. So what if we have an app like our buddy who walks with us, thinks like us, and responds to what we expect? Yes, you heard it right, our own global crypto super app. Here is the global crypto super app, CryptoWire. Let's start with the homepage of the app, which covers all the three verticals: Crypto University, Crypto TV, and CryptoWire services. Under the CryptoWire services, we have rolled out India's first global index of cryptos, IC50. It tracks the performance of the top 15 cryptocurrencies globally based on market capitalization. Crypto enthusiasts and crypto traders can take informed decisions based on IC50. Under the Wire Watch, in this section, we can monitor the best exchange to buy and the best exchange to sell a particular cryptocurrency. In the center of the screen, we can also monitor the arbitrage opportunity available between the two exchanges for the same cryptocurrencies. There are more than 350 plus cryptocurrencies listed on our platform, along with 70 plus exchanges worldwide. Coming to Crypto TV, it's an exclusive 24/7 IP mobile TV covering everything on crypto and blockchain ecosystem. It's currently available in 4 different languages: English, Hindi, Gujarati, and Marathi. Coming to Crypto University, being the world's first digital university to offer courses on crypto and blockchain, you can find the best courses offered by MIT and University of Michigan on a single click of the app. With this, I would like to introduce you all to our speaker for today, Dr. Vishal Saraswat. He's going to be helping us understand the future of cybersecurity in crypto world. Dr. Vishal Saraswat is a cryptology expert and security consultant at Bosch Engineering and Business Solutions, Bangalore. He has done his PhD from the University of Michigan, USA. Dr. Saraswat started his research career at the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India in 2000. And since then, he has been a regular and visiting faculty at various institutes. He has co-authored the book, Introduction to Cryptography, that makes cryptography more accessible for Indian undergraduate students and researchers. Dr. Saraswat is the executive committee member of Cryptology Research Council of India, and he has served on the editorial board of a number of security and cryptography journals and conferences. In addition to his teaching at the leading institutes in India and USA, Dr. Saraswat has organized and taught executive training programs on information security and cybersecurity for various entities, including industry intelligence agencies, defense organizations, academic institutions, and policymakers. He has supervised several master and doctoral students in cryptography and crypto analysis in the last several years and has contributed regularly to the popular media to raise awareness about crypto security amongst the non-specialists. Join me in welcoming Dr. Vishal Saraswat. Hi, sir. How are you? Hope you're doing good today. Yeah, I'm doing good. Thank you for the great introduction. So let's talk about some cybersecurity trends, and I'll talk about in general what's happening around. You have done a pretty good job of introducing me, so I won't talk about myself much, but maybe if anybody is interested, you can have take a snapshot of this and then get back to me on stuff. So
before we go into the what's looks like, how the future looks like, how bleak it could be, let's look at current status. So what are the total top global fraud types? So some of the currently there was an analysis done, and some of the top frauds are done via phishing. What is phishing? Phishing is basically where in some way or the other a victim, maybe a targeted victim, maybe some general random victim, they are made to go on a fraudulent website which is controlled by malicious actors, and they control this website. The malicious actors, they control this website, and on this website now the user, they end up entering there some confidential information. It could be username, password, it could be OTPs, it could be some other cryptographic keys. So this is the top fraud that's happening around, like with 41% of all frauds that happen. Something that has emerged very rapidly in last few years is mobile applications. Earlier, when we used to think of cyber fraud, we never thought of mobile phones as a target instrument. But the popularity of smartphones, and like with more smartphones than the human population on Earth, this rogue mobile apps, whether it be whichever ecosystem you are on, like whether you are on the Android ecosystem or you are on the iOS ecosystem, or any other ones not so popular as this too, but any other ones, a lot of mobile apps, they are rogue in some way or the other. When I use the word rogue, they can be fake apps, they can be apps claiming to be of some gaming sites, or some apps claiming to give you access to certain restricted apps, or so on, or give you some special features for other apps, okay? Like screen lock apps and whatnot. Okay? And these apps, they are used to do frauds of all kind. And then we have Trojan horses, we have brand abuse frauds, and then there are some other frauds. But these four are some top frauds that are happening around. And what kind of attacks are happening? Like, how do these attacks happen? Of course, most of the attacks, again, that are happening all around the world, they are via phishing, via social engineering, via just random advertising. We convince the victims to click on some links in email, or nowadays even you can receive emails on your smartphone, and you click on the link, you click on the links there where like all of a sudden a pop-up comes on your mobile phone or your computer, and you click on that link and you land in a phishing site. Of course, phishing has a lot many variants: phishing, wishing, and whatnot. Spear phishing, broad phishing. Phishing via SMS has some name and whatnot. So this is again one of the most common cyber attacks happening around. With almost 37% of the attacks are via phishing. And then, of course, our good old friend network intrusion. This used to be the most popular attack in olden days, but in the last few years, phishing has taken over this one. Network intrusion is always a threat, and many times network intrusion happens actually via phishing, and many times it happens just because you maybe downloaded certain software, you did not configure your firewalls properly, you didn't have a good intrusion prevention system, or even an intrusion detection system. And that is your second most popular attack.
I'm not sure popular is the right word, but it's popular among the attackers. And then inadvertent disclosure. So in this, what you are doing is various users, without any intention, unintentionally, they end up disclosing certain confidential information. Whether it could be they end up disclosing their own credentials or some data related to their organization they are working for, or some other means. And this is where, like, even though this disclosure, the victims, they didn't disclose this certain information in an intentional manner, but cyber criminals use it happily. It's a free gift to them, and they use this disclosure to then mount more attacks. And then, of course, stolen or lost devices or records, they form about 10% of the global attacks. So either your physical devices got stolen and ended up in the hands of malicious actors, or your data that got into the hands of actors, and they use this to mount their attacks. And the fifth most popular one is system misconfiguration. When you did not configure your system properly and allowed an attacker to enter. So these are some of the most common cyber attacks globally. And what you notice is that, of course, technology is a huge part of it. But in these records, the human factor, and we'll talk about it later again, the human factor is a huge contributor to this attack. So the users themselves, they end up doing something that they were not supposed to do, or they should not have done. And this very much harms our systems. And let's look at, like, how are these cybersecurity incidents affecting the industry by various sectors. Of course, these attackers, they want money, so of course they are attacking the financial services the most. So when it comes to industry, financial industry is attacked by cyber security incidents. And our current crypto boom is only going to increase, is only going to be a factor, and the attacks are only going to increase. And then industrial control technologies, various industries, they are being attacked. And then the manufacturing, they form 13%, and then the retail services, all the various retail companies, Walmart, Amazon, etc., they are attacked 9% of the time. 1% of the time, and this is that professional services. So like professional services could be lawyers who provide service online, or even doctors, or any professional providing any kind of service online, and they get attacked a lot and get defrauded. So this is what's happening today in the world. So what do we look at the future? What kind of attacks are we looking at the future? Something that is becoming very popular are the ransomware attacks. And this has just ransomware was a kind of a God's gift to the attackers. In olden days, attackers, they had to figure out, okay, I can hack into a machine, but now how do I make money out of this hack? Okay. I could got a foothold in the network, but now what do I do more? How do I make money? And then somebody came up with this cool idea, ransomware. Now that I have gotten a hold into your network, I just encrypt all your files, and now I decrypt them only if you pay me.
In olden days, people would do a similar thing. This denial of service attack would be basically on the network, but that will require a lot of resources to keep up with those attacks. But this modern encryption techniques, which were designed with the intention of keeping your communication secure, that those exact techniques are now being used to demand ransomware. So ransomware, you don't need a lot of resources to mount a ransomware kind of attack. Also, with this kind of attacks and with cryptocurrency coming into the picture, it just makes the lives of the attackers much easier. They can get their ransom easily. Most of the times they can collect their ransom and vanish without any trace. So this is something where when somebody asks me that where is what is the most important threat that's going to be, it's ransomware. And protecting against ransomware, well, is the same protection you would put for any threat, basically. If you have to put every single protection mechanism that you would have put there. Even otherwise, the deal with a ransomware is that it does not give you even a tiny bit scope of relaxing. Okay? You miss a little bit, a tiny bit, and the ransomware will hit you. Also, last 2 years, or maybe even more than 2 years now, since COVID, there is a shift to remote working. It's not that remote working was not around. Work from home has been around for many years. But last 2 years increased the volume of work from home. And while everybody understood the concept of work from home earlier, like my mother would be very disturbed if I was not going to work. Right? She would say, I think I'm just sitting at home and wasting away my time doing something on my computer, which of course my mother would not understand. Right? So, but now everybody understands the concept of work from home. Everybody understands remote working. And that also means that the more popular the remote working has become, this also means that hackers and criminals, they have an incentive now to attack this remote working. So while legitimate users, they get secure remote access, criminals are using this fact that a lot of people are doing this remote access to their work. Criminals are now abusing this to get a foothold into the network. So, and the attackers, they are evolving their approach. They find ways to target employees who are working in isolation and still connect to the corporate network. They mount social engineering attacks on such users and get a foothold into the corporate network. And this becomes even much more serious in case of industrial control technologies, whether it be any kind of an industry. It could be even critical infrastructure. There, in general, one of the ways to keep your ICT secure used to be just keep it isolated from the internet. Okay? Create a air gap between your internet and your ICT or ICS, the system. But with remote working coming into the picture, giving a remote access to your legitimate users means now you have to be connected to the internet. And this can create a lot of issues. So that means that the systems are more the attack surface of the
whether it be industrial network, whether it be manufacturing network, or even just any IT system, that has increased. And that means the attackers have a much more opportunity to mount their attacks. So organizations, they need to start preparing for this, and they need to maybe even issue specific purpose machines. So let's say unipurpose laptop, which is only capable of performing a given task or a few tasks and won't be able to do anything else. So such need is there, but that means that it's an expense, okay? And it's not going to be easy for every company to be able to do that. Something that has become even another attack, and that is another threat vector. This has always been around, but in olden days, when people were going physically to their locations and working, you could block USB devices in the systems at your workplace by technological means, or by even physical security means, that you don't allow USB devices. But in this work from home scenario, people are using their machines at their home, and they may as well use USB sticks on their machines, or on company machines, on organization machines. That means now another interface has opened up, and which can be used to attack many different organizations. So, in fact, in a recent report, it was found that nowadays, when these threats which are being designed, these threats are designed so that they can leverage this USB removing media in some way. So either get a foothold on the system via the USB media, or even sometimes use a USB media to collect sensitive information from the system and then transmit it to some other places. And it has been noticed that in last couple of years, the USB threats to industrial, so ICS systems, has more than doubled to 59%. So you go to a plant and you connect your USB, and boom, you have given a foothold to the attackers. One fun way attackers, they get this malicious USB to you is they just simply flood the market with cheap USB sticks, and they hope that people will buy it and they'll connect it to their systems, and there you go. So when you buy a cheap USB stick from an unknown company, many times it's possibly from a company which which is actually dealing with malware. One of the cases I know with a particular country's intelligence services, they went to a conference in China, and usually when you go for conferences, etc., sometimes this conference will have certain goodies. They'll give you some gifts, and this people from the intelligence agencies, they got USB sticks for kind of free in that conference, and they were very happy that, oh, we have a free USB stick. So they brought it, they were using it on their home computer, and because they're from intelligence services, they are not supposed to use USB sticks in their organization, but some of them don't listen, and they find some non-technical ways to bypass the restrictions, and they did connect the USB sticks to the network of the agency, and allowing China to get a foothold in the network. From the at least public reports, it seems that this was detected pretty soon, and did not cause a lot of damage. But even if it did cause even a little damage, it's a serious damage. So USBs, they have always been a potent threat, but now they are becoming even more of a threat. And so this is another
things that one should keep in mind. Also, with more and more internet dependencies, even all kinds of supply chains for any manufacturing system, any kind of industry, they are all now kind of integrated. They are all connected, and that means that attacking the supply chains is more easier than ever. Attacking these chains and harming your environment is become even more likely. So this is something that is picking up, and we are already seeing this even in our current Ukraine and Russia war, that both the countries, they are attacking the other country, and even their friends are attacking the other country. Using this internet attacks, using cyber attacks, harming their supply chains, and even going after their critical infrastructure like electric grids, water supply, transport systems. So this, we are already seeing this. And again, this is something that such attacks need to be, one needs to protect their critical infrastructure and their systems. And how to do this, how to protect? Basically, again, there is no, the protection mechanisms are pretty much the same. We all know what protection mechanisms are. But the problem is that even one tiny lapse can cause a huge loss, including human loss or loss of human lives, or even complete failure of towns and cities. One of the ways to improve the situation would be have some sort of Geneva Convention kind of a digital act, which is applicable to even countries. So Geneva Act was formed to kind of rules of war. They are, you can think that it defines that when two countries are at war, what they can and what they should not do. So war is a war, but you should not commit war crimes and so on. So many things are defined there. So we need to have similar thing for digital war. Of course, that will only protect us from nations, not necessarily from private rogue actors or private organizations who are doing this. But maybe have a strong act to have a strong way of punishing such actors. Another threat that has come up in last couple of years, it has been around since at least since the days of Silk Route and what not. This is cybercrime as a service. And in cybercrime as a service, basically criminals and hackers, they are grouping together and they are offering their service to common people that, hey, you want to do something, some cybercrime, but you don't know how to do it, just outsource it to us. Okay. And that is now, earlier finding hackers online was a much more difficult task. And even if you found somebody, asking them to do the job for you and then paying them, all this was in olden days more easily traceable. So forensics could figure out and you could get punished. But now with, again, privacy providing networks and with this various cryptocurrencies, it has become more easy than ever to get such services. And that is something that makes it very easy for even inexperienced hackers to stage complex attacks. Because even if I don't know how to hack something, I can just
get this service from various criminals who will provide this service to me and then mount the attack. It's like Amazon Web Services. They provide all kinds of storage and computation for you, and use the cloud to store your services, to provide your services. Here, now you are getting cybercrime as a service. And this marketplaces, they continue to operate. Okay? So various law enforcement agencies, they will take down such websites, they'll take down such organizations, but the same technologies that which were developed to provide us privacy, they also protect them, and they just keep cropping up at just some other nodes. Another threat to look after is increased automation. So of course, automation is good for us. It's helping us and in having better life, better services, and much more allows us to save our time, save our efforts. But the same automation techniques are also used by malicious actors to make their attacks more efficient, to make their attacks much more large scale. So again, over here, there are too many threat variants, too many vectors, too many targets, and this automation is only helping cyber criminals to mount their attacks. And again, over here, with so many attacks coming in automated fashion, human professionals, they are not going to be enough to protect the systems from those attacks. So as defenders also, organizations need to invest into automated defense against such automated attacks. So the way criminals are using machine learning and artificial intelligence, even defenders, they also need to use machine learning and artificial intelligence to protect from those attacks. And at least use these tools to filter out the trivial attacks, or filter out the attacks that are easy to recognize and protect from those. And when in doubt, just involve human professionals to take care of such issues. One of the automation scenario is malware automation. So even malware attacks now, it's not like that hackers are sending out the malware in a targeted fashion to various systems. They are just they just trigger a malware, and the malware spread is pretty much automated. So in olden days, hackers would test their skills with hard to execute attacks. They'll take it as a challenge, and then they'll try to execute their attacks. Now, hackers, instead of taking up those challenges, and some of them possibly do take some challenges, but most of the time they'll just automate the cyber attacks and just do millions of attacks, or even at least thousands of attacks a day, and in the hope that at least one of those attacks will be successful. And you mix it with machine learning, mix it with artificial intelligence, and the benefits of ransomware. Automation is just helping the hackers and making the lives of defenders. And not just malware automation. Now malware has also become very smart. And in olden days, we could install antivirus software on our systems, and they would recognize malware with certain character by their, what we use the terms, by their signatures or some other characteristics of those malware. Some properties which this antivirus will be on lookout for and which will recognize, and then they say, okay, this is malware, let's quarantine it. But
again, nowadays criminals have become very smart and they create this malware which have not defining characteristics. Their and for antivirus to figure out, okay, this is a malware, that's just not possible because their characteristics keep changing. Okay. Or they have many characteristics which are being changed. Also, the identifiable features which antivirus knows, they possibly detect the virus if it had certain features, but because the malware has changed those features, it keeps updating itself. Okay. That makes it even more difficult to detect the malware, and the malware then can execute its attacks. And combine it with automation, combine it with again cybercrime as a service offerings, and you have a headache to deal with. Yeah. And then certainly third-party risks and threat, or like open source threats. What happens is in third-party risks, so we spoke about cybercrime as a service, but many companies provide cybersecurity as a service. So let's say I have an organization which may not, okay, I don't have, but maybe let's say you have an organization for which you work, and they don't have enough cybersecurity expertise within them. So what they do is they would generally outsource their IT and security support needs to a third party. But relying on a third party who does not understand or who's not internal to your organization, that means that there is going to be certain gaps between the two organizations, and which can be exploited by attackers. So, and especially if you're relying on the third party for patch management, for all other security management and operations, more often than not, the service provider will not be able to catch up with the malicious actors, and you will suffer losses. So, what more? Well, human element, that is always a constant in cybersecurity, even the most top cyber attacks that we discussed earlier. We saw that somehow humans always play some role in those attacks. Okay? So the humans may fall victim to phishing attacks by clicking on some link in an email, or they may be either careless, sometimes just incompetent, or sometimes just by mistake, by just a human error. They may leave some misconfiguration in the network or something else. So, and that becomes a huge problem. That becomes an attack vector. So, unfortunately, that's the truth of life. Humans are always present, and they have to contribute to the technology. You cannot completely automate, and humans make mistakes, and they will make mistakes, and you have to accept that. You have to accept it, and then try to design your systems in manners that human mistakes still minimize the effect of human mistakes is still minimal on your systems. Also, of course, what you do want to do is you want to educate your users, you want to train your users, and even make them aware of vigilance and security aware to help reduce the likelihood of mistakes with serious impact. Also, cyber criminals, they are becoming much smarter. They are focusing on social engineering techniques. And the social engineering techniques combined with this human factor, that is going to be a tool in the hands of malicious actors. So, even though internet communication is becoming more secure by the day, we have much more technologies to protect our networks, especially network intrusion, network-based threats. They will be become
less relevant, or we can protect our networks in a more robust manner, let's say it this way. But the thing is, even however much you secure your network in technology, you always have to worry about that human factor. So there will be human errors there. Even your internal employees, your insiders, they will still enable data loss, and attackers will still rely on social media tricks such as phishing, business email compromise, and whatnot. So be prepared for such attacks. And again, the only way to protect the organization from such attacks is basically make your users more security aware. Another threat is the growing use of IoT. So even before COVID in 2019, there were already 10 billion connected devices. And within next 3-4 years, this number is going to triple, and there will be more than 30 billion IoT devices by 2025. And these IoT devices, they are generally very cheap. They are generally connected to the internet. They are communicating with other devices within your organization or within your home or within wherever. And because they are cheap devices, IoT devices are generally pretty cheap. And that's the point, right? You cannot have them to be very expensive. That also means that they cannot have strong security controls. And again, that is something to keep in mind as an organization, as a user, and that use of IoT will only increase. And businesses really need to start focusing on the security of these devices. Otherwise, this IoT devices, they will become a threat vector. They will become an attack vector. For example, even some researchers showed how to hack a smart bulb and use it to create panic in a large scale. You use those hacked smart bulbs to even harm people physically. Okay? So such kind of demonstrations have to be done. So as designers, when people think about it, yeah, I'm designing a smart bulb, it's a 100 rupee thing, or it's a maybe 200 rupee thing, maybe 3 or 4 euros or dollars. Who cares? Why would somebody want to hack my bulb? Okay? What would they gain out of hacking a bulb? Okay? Sometimes a lot. Because it's a smart bulb, it will be connected to your network, so it may give a foothold to the attacker. And in case of really bad attackers, they can even do physical harm to their victims. They can create panic and terror among their victims and whatnot. Okay? So that is again something that we have to worry about. We have to take care that this, the more the IoT devices are, the more connected they are, the more we are exposed to attacks. So this, I've been speaking about this topic, that financial frauds, they are now have taken a full new form nowadays. Payment modernization means all the financial transactions, they are become entirely digital, and they don't require human intervention at all. There are so many different platforms and methods to conduct this financial transactions, and even more importantly, they are not centralized, so the regulations will take time to catch up, and that means that financial fraud has become much easier. Detecting financial fraud has become much more difficult because now you have so many different platforms on which it can happen. And
that just means that preventing it or even doing forensics, doing analysis, that has become much more difficult. So we need to be prepared with this. The final topic that I want to talk about is the difficulty of prosecuting and protecting against cybercrime. So even though many countries, they are prioritizing cybersecurity, they are trying to bring in laws. But the thing is, when criminal acts happen online, sometimes it's just simply very difficult for the enforcement agencies, the law agencies, to prosecute the cyber criminals. It could be due to the geography of these criminals, it could be due to many other things. So proving that certain crime was committed by a certain person, that becomes very difficult. So, and because it's difficult to prosecute the criminals, and now because you can't punish these criminals only become bolder and they commit even more bigger crimes. So countries and regulation agencies, they need to get together and they need to bring in laws very soon which are applicable across geographies. And another issue is like not just prosecuting and not just punishing the criminals, even protecting from those criminals. You need cybersecurity professionals. And unfortunately, right now, cybersecurity is not the best paying job. So not many people want to take up this job. And it's like working as a policeman, which is not a very fancy job. It's not a very happy job. Of course, there is less risk to a cybersecurity professional, but still they are not getting as much money as they would get as a simple software developer, for example. So that means there is a shortage of cybersecurity professionals. There are not enough professionals to teach you how to secure your systems. And at the same time, there are not many professionals who can do the job. So, yeah, I think it's almost 6, so I should, I'll stop at this point. And I can talk to you, I can answer some questions that you might have. Sure. We have some questions. Thank you so much. That was an interesting presentation, Vishal. Thank you so much. I would like to thank Vishal for taking out time and sharing his views on today's topic. I really appreciate your efforts taken to enlighten us on the cybersecurity risks in the crypto world. There are a few questions that have come into me, Vishal. I'll just take a few of them. There are many that I've got, but I think I'll just take a couple of them. What are the most common type of cybersecurity attacks which have happened in the recent past and which have really, affected the industry in specific? So, the phishing attacks, ransomware attacks, they are some of the most devastating attacks in the recent times. Okay. So this it's just a simple answer. Right now, Do you have an example, or could you just kind of tell us what kind of, So, for example, if you look at the most popular ransomware, WannaCry. Okay? So this WannaCry ransomware that started mainly on the health services in UK, and it completely brought down the UK health services, like hospitals. They were not able to treat their victims. They were not able to access the records of, sorry, not victims, the patients. They were not able to access the records of the patients. They were not able to connect to their, let's say, insurance agencies, etc. Okay? And so that if anybody can search about WannaCry, this was one of the most devastating, physically devastating. Think of a patient who needs urgent healthcare, and the doctor, they want to support him, they want to help the patient, but they don't know, they don't have the medical history accessible. True. So Yeah. people might have died because of this attack. We just don't have records in this way. But it really affected many, many hospitals, many doctors. And this also spread to North America, also Canada also, and affected many other healthcare systems.
And then this ransomware attacks went ahead, and the same WannaCry variant affected flight operations of many planes in UK and other countries. Another variant of WannaCry that went ahead and attacked even many other industry also. Another recent attack in 2021, I think, or 2020, Honda's global operations, they were brought to a halt. So Honda could not do their manufacturing. Everything was kind of a lot of their automobile operations came to a halt, and due to a ransomware attack. So yeah, means even on many crypto platforms, ransomware attacks are happening, and their services are being brought down. And I'm trying to recall the name of the current attack in a recent attack, where one of the cryptocurrencies, they lost their value because of this ransomware kind of an attack. I'm forgetting, but there was a recent attack. Okay. Yeah. So ransomware is dangerous, easy to carry out, and requires much less effort, and has a pretty decent payout for the attackers. I'm sure. Sad, but so can this be kind of controlled by the use of firewall? So this is the next question that has come up to me. By use of firewall, can these kind of attacks be reduced, or can you get protected by these kind of attacks? And how effective are these, and which are the ones which are effective? Actually, that's the thing. Like any kind of a over here, to protect ourselves, we need to use this approach, what we call defense in depth. So firewall is one layer. Firewall just kind of filters out the various connections, right? Your network traffic. So that is one step in your protection. But that's not the only protection that will help you. Think of it like there's a huge apartment complex, and a firewall would be like a security guard standing at the gate of the apartment complex. And however good mechanism you put for the security guard will monitor all the visitors who are coming in and going out, attackers may manage to disguise themselves and enter, or sometimes an insider can become an attacker. How do you protect? A firewall cannot protect you from an insider. So the security guard, he is there, but what if I am a person who's going to steal? I live in a huge apartment complex, and I am going to go and steal in somebody else's house. So this firewalls, having a user level firewall, that becomes extremely difficult, and that makes things very inefficient. You can't have a security guard standing in front of every house, right? Firewall is one step, and you must certainly have good firewall. You must configure it securely, and you must protect those configuration very strongly. So yes, that is one step. But you need to have much more than a firewall. You need to have. My next question is, what is it that we should have? With firewall, let's say you must have, let's say, intrusion detection systems. Okay? You should have multiple layers of security. So even if your first layer reaches your most valuable assets, something that asset could be anything that you value, you can protect those assets from such breaches. You must have good secure communication channels. You must have user awareness. You must have user monitoring. You must have secure logging. These are some of the few systems. How does one come to know that they have been attacked? So being a user, how do they know that, we are under the attack? Or so how would a layman get to know this? For a layman, that
is a difficult task, but that's where, for a layman, one of the ways is to have install a good antivirus on their system, good Defender. So Windows Defender, for example, on Windows, that does a pretty good job, but maybe get some more support so that they can detect what Windows Defender does not detect. So for a layman, various defenders or antivirus, they are the only way, because those will do the detection for you. Of course, don't go and buy a cheap antivirus. Many antivirus companies, especially the cheap ones, they are actually themselves malwares. So be careful about that. Don't download any free. Of course, I mean, it's not to say that everything free is going to be malware, but more often than not, please believe in the saying that there is no free lunch. Absolutely. So what is that one piece of advice you would like to conclude this complete session with, where you feel a good cyber practice should? What is it, one thing that we should, use or keep ourselves secured with for, good cyber security practices? So at a user level and at an organization level, minimum that we should do is be aware of the attacks that are happening, be aware of the advances in attacks and the corresponding patches that are being developed to avoid these attacks. That's the minimum you should do. For example, a good practice would be updating your systems regularly. Of course, from genuine sources. So if you are using, for example, if you are using a Windows machine and Windows keeps pushing updates to you that, hey, here is a security update, please install it. Same with your phone, same with your other devices. There are regularly security updates coming. Please, the minimum you should do is install those updates. Don't postpone those updates. I've seen even in my friend circle and families that they don't they keep getting notifications about a secure update, but they just think, oh, it's a wastage of data that they have and they don't want to use up their data, so they don't just install it. So that is a very bad practice. So a good practice would be to install updates regularly, do a good patch management from both sides, at a user level, at an organization level. That is the minimum that one should do. Got it. Thank you so much. That was very informative. It was nice having you, Vishal, again today. And I would like to also thank all the crypto enthusiasts to have been part of this session. If not downloaded the CryptoWire app today, please do that to be a part of the global learning. We would request all of you to please also share your valuable feedbacks on the session. Thank you for attending the webinar. Thank you, sir. It was great interacting with you. It was very informative. Looking forward to more sessions with you. Thank you, sir. Have a nice day. Yeah. Bye. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. नमस्कार, मी वैभवी सावंत. पुन्हा एकदा आपला शो क्रिप्टोची गपशप मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. तर मित्रांनो, मागील एपिसोड मध्ये आपण जाणून घेतलं की स्टेबल कॉइन म्हणजे काय, ते कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचे प्रकार कोणते. तर आज आपण चर्चा करणार आहोत टॉप
5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल. त्या अगोदर आपल्या माहितीसाठी रशियाने युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी आपली लढाई तीव्र करत असतानाच क्रिप्टोकरन्सीची किंमत ग्रो होताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे एकूण क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप हे $2 ट्रिलियन ओलांडले आहे. आता पाहूयात टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल. तर सर्वात प्रथम स्टेबल कॉइन आहे तेथर. तेथर हे 2014 मध्ये रिअल कॉइन म्हणून लॉन्च केलेले पहिले स्टेबल कॉइन होते. तेथर हे क्रिप्टो मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टेबल कॉइन आहे, ज्याचे एकूण मार्केट कॅप $77.5 बिलियन एवढे आहे. तेथर 428 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांना वापरण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात उपलब्ध असलेले स्टेबल कॉइन म्हणून ओळखलं जातं. तेथरची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि मार्केट लीडरचा दर्जा असूनही वारंवार होणाऱ्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमुळे आणि ऑडिट नाकारल्यामुळे तेथरला बऱ्याच लीगल सिक्युरिटीला समोर जावे लागत आहे. तेथरला $41 मिलियन एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि न्यूयॉर्कमध्ये सराव करण्यास बंदीही घातली गेली. जरी या निष्कर्षाचा तेथरच्या क्रिप्टो मार्केटमधील दैनंदिन कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरीही गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगून तेथरशी संपर्क केला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे USD कॉइन म्हणजेच USDC. USDC कॉइन 2018 मध्ये कॉइन बेसद्वारे सादर केले गेले होते, जे जगातील पहिले पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज आहेत. USDC सध्या मार्केट कॅपनुसार दुसरा सर्वात मोठा स्टेबल कॉइन आहे. त्याचे मूल्य $42.1 बिलियन आहे. USDC 294 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहे आणि अधिक व्यापकपणे उपलब्ध आहे. दरम्यान फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि रेग्युलेटर सोबत सुद्धा USDC काम करत आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बायनान्स USD म्हणजेच BUSD. BUSD हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंज बायनान्सने 2019 मध्ये लॉन्च केले होते. मार्केट कॅपसह BUSD सध्या तिसऱ्या नंबरवर असून $14.3 बिलियन एवढे आहेत, जे केवळ 103 एक्सचेंजवर उपलब्ध असून BUSD त्याच्या कॉम्पिटिटर पेक्षा लेस ॲसेसिबल आहे. BUSDच्या युजर्सना बायनान्सवर शून्य शुल्क ट्रेडिंग आणि कन्व्हर्शन प्रवेश मिळतो आणि त्याचे स्टेबल कॉइन्स लेंडिंग सर्व्हिसमध्ये जमा करू शकतात, ज्यात वार्षिक 15% पर्यंत उत्पन्न मिळतो. सुरक्षितेचा प्रश्न येतो तेव्हा गुंतवणूकदारही निश्चित राहू शकतात, कारण BUSD मासिक ऑडिट्स प्रकाशित करते आणि जे वॉल स्ट्रीट रेग्युलेटर्सनी मंजूर केलेल्या 3 स्टेबल कॉइन पैकी एक आहे. चौथ्या क्रमांकावर आहे टेरा USD म्हणजेच UST. टेरा हे ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क आहे जे लुना टोकनद्वारे गव्हर्न्ड डिसेंट्रलाइज अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइनचा सेट ऑफर करते. कॉइन मार्केट कॅपच्या डेटानुसार मार्चच्या सुरुवातीस लुना $90 खाली ट्रेड करत होता, परंतु 29 मार्च पहाटे आशिया वेळेनुसार लुना $106.14 चा नवीन सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. टेरा लुनाची भक्कम कामगिरी शक्यतो युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू करण्यासाठी रशियन सेनेने प्रवेश केल्यापासून जागतिक बाजारपेठेला घेरलेल्या अनसर्टनिटीतून येते. अखेरीस 5व्या क्रमांकावर आहे डाय. डाय हे सर्वात लोकप्रिय कोलॅटरलाइज स्टेबल कॉइन आहे आणि मार्केट कॅपनुसार एकूण 5व्या क्रमांकावर आहे. त्याचे मूल्य सध्या $9 बिलियन आहे. डाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि 221 वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर प्रवेश केला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चरली डाय इतर स्टेबल कॉइन पेक्षा कितीतरी जास्त तांत्रिक आहे. USDT सारख्या US डॉलर्सद्वारे थेट पाठिंबा मिळवण्याऐवजी डाय ETH सारख्या क्रिप्टो मालमत्ता लॉकअप करण्यासाठी आणि त्या कोलॅटरलवर आधारित टोकन तयार करण्यासाठी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरते.
हे बेकर प्रोटोकॉलचे उत्पादन आहे जे इथेरियम ब्लॉकचेनवर चालते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला स्टेबल कॉइन बद्दल संपूर्ण माहितीही कळलीच असेल. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. क्रिप्टोची गपशप या शो मध्ये मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. रुचि, व्हाट्स अप विद यू? क्या मनोज, मेरा सुंदर सपना टूट गया. इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं. You are daydreaming? Yeah, I am daydreaming. This is a crime. It is a crime. पर पता मैं क्या सोच रही थी? क्या? कि अपनी नई लग्जरी कार में मैं बैठी हुई हूँ Okay. और सीलिंग पर तेज रफ्तार से जा रही हूँ. लॉन्ग ड्राइव है, हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं. इतना अच्छा सपना तुमने तोड़ दिया. मैडम, आपके मोबाइल की तरफ आप देखिए, आपको आटे वाले की पर्ची आई होगी. हाँ, क्योंकि मैं 80 से ऊपर चला रही थी. Very true. So let's get back to the basics. आज का टॉपिक क्या है डिस्कशन का? ये कि मैंने सब तैयारी कर ली है, मैंने अकाउंट बना लिया है और मैंने कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी सोच लिया है. तो बस अब मैं मिलियनेयर बनने वाली हूँ. अच्छा, तो आपने खरीद ली, गाड़ी वाड़ी खरीद ली आपने क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करके? नहीं. तो आपने वॉलेट बना लिया उसका? वॉलेट में अभी लिया गुच्ची का. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है आपका. तो सरकास्टिकली क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को जहां पर रखा जाता है, दोज आर नोन एज क्रिप्टो वॉलेट्स. सो आज हम मनोज, जो करेंसी डिजिटल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसके लिए वॉलेट की क्या जरूरत है? सो एब्सोल्युटली यही आज का डिस्कशन पॉइंट है कि कितने टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं और वो वॉलेट्स को यूज करने के लिए क्या-क्या things that are required. We have also understood that a crypto wallet बनाने के लिए KYC and basic simple चीजें तो हमने समझ ली है, लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनको अटैक से, दैट मीन्स साइबर अटैक से कैसे बचाया जा सकता है और कितने तरीके से हम उनको स्टोर, सिक्योर और कौन कौन से वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. मतलब कि इस वॉलेट के अंदर मेरी डिजिटल करेंसी रहेगी. लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स होते हैं उसमें आपकी डिजिटल करेंसी नहीं होती है. नहीं होती? नहीं. तो ये कैसा वॉलेट है? हम वॉलेट में तो पैसे ही रखते हैं ना. अगर इस काम का भी नहीं तो किस काम का ही है? तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ा ही है और आपने बहुत रिसर्च भी करी है उसके ऊपर. क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम पे रहती है और आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है, दे स्टोर योर प्राइवेट कीज. Yes, exactly. चाबी रहती है इसके अंदर. तो ये चाबी आपके घर की नहीं है. इनफैक्ट अगर आपकी घर की चाबी अगर गुम भी हो जाती है तो आप यू कैन गेट इट बैक. चाबी वाला. बट दिस इज द की व्हिच यू विल लूज ऑल योर मनी. Yes, exactly. So मैं आपको बताता हूँ. Public keys are like your bank account numbers. Say for example, if a sender sends you a cryptocurrency, so it will require your address. That is a public key. And private key और public key match होती है. Private keys are nothing but it's similar like your ATM pins. So once these things matches, your transaction is complete, and you can receive the cryptocurrency or the transaction is complete. So अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. हाँ बिल्कुल बताइए. मेरा ना
दिमाग बहुत, तुम तो जानते हो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। तो जो पासवर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे जीमेल का या इतने सारे मेरे शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स होते हैं, वो सब तो मैं कहीं लिखती हूँ या फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अगर ये मैं भूल गई तो मैं एक नया पासवर्ड बना सकती हूँ ना, या फिर जीमेल में मुझे आ जाएगा रिकवर करके एक नया पासवर्ड? No. Because if you lose the private key, you lose the access to your cryptocurrency, you lose the access to your money. My God. Once it's gone, it cannot be recoverable. This is the sad part of it. But उसे हम आपको डिस्कस करते करते बताएंगे कि कौन कौन से वॉलेट्स हैं जिसमें आप ये सारी प्राइवेट कीज को सिक्योर साउंड मोड में रख सकते हैं, जैसे आप अगर भूल भी जाएं तो वो एक ऐसे मीडियम में आप मिलेगा कि दैट मींस यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन अगेन एक्सेस योर क्रिप्टोकरेंसी। आई वांट टू नो दैट। सो ये जो वॉलेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है और एक कोल्ड वॉलेट। सो दीज आर द two definitions of wallets. और उसके अंदर there are several heads. So hot wallets are those wallets that are connected to internet. तो जैसे आपके एक्सचेंज वॉलेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके वॉलेट्स होते हैं, दोज आर हॉट वॉलेट्स। सो इंटरनेट पर जिनका एक्सेस होता है, क्लाउड बेस्ड वॉलेट्स जो होते हैं, सो दोज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड बट एक ब्रॉडर कंसर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ नहीं होंगे। सेफ नहीं है, इनफैक्ट वो कैसा है कि हैकर्स दे कैन कम हैक योर सिस्टम। एंड्रॉइड बेस्ड होता है या फिर वी विल नॉट गेट इनटू इट, एप्पल है या एंड्रॉइड है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, दोज कैन बी हैक्ड। और अगर say for example you are a rich woman, so agar if someone hacks your mobile, they can easily steal your cryptocurrency and then sell it somewhere which cannot be recovered. So हाँ, वो एक कंसर्न होता है हॉट वॉलेट्स में। तो मतलब हॉट वॉलेट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि हैक भी हो सकता है और सिक्योर नहीं है। So that is up to you. What is option number 2? So you have to consult your financial advisor. So we are here to just for investor awareness and education format. So cold wallets क्या होता है कि those are not connected to internet. Okay. So basically एक मिनट, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ही इतना, मनोज तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट के साथ तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? I've got a point, देखा? I'm smart, very smart. थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर there are two things which you have to really understand. So cold wallet, so it's like hardware and paper wallet as well. Okay. तो आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करनी है और भी ध्यान देना है कि अगर हैकर्स विल नॉट एक्सेस दोज क्रिप्टो करेंसीज, अब उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं। यू कैन स्टोर इट, देयर आर मेनी एक्सचेंजेस हु आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, XNX। तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो हम जो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। एंड पेपर वॉलेट्स आर नथिंग बट इट्स बेसिकली QR कोड फॉर्मेट में होता है, वेर इन इट्स रिटन योर प्राइवेट की, यू हैव टू स्टोर इट इन अ लॉकर। हाँ, उतना ध्यान देना है कि वो नो वन इज स्टीलिंग यू फिजिकली। या दैट्स व्हाट यू हैव कीप इट इन माइंड। आई थिंक मैं पेपर वॉलेट ही यूज करने वाली हूँ, मुझे ज्यादा इजी है, लिख लूंगी फिर रख लूंगी। Absolutely, you can do that. But these are the 10 points which we wanted to discuss. Our show is basically we don't recommend. हम अपने इन्वेस्टर्स को ये recommend नहीं करते, बट उनको अवेयर करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी, या फिर एक ऐसा साइबर अटैक से कैसा बचा जाए, हम वो अवेयरनेस लेके आते हैं। तो उसके लिए एक सवाल है मेरे मन में कि अगर मैं ये हॉट वॉलेट के लिए ऑप्ट करती हूँ बिकॉज इट्स ऑनलाइन, तो इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? That is the most important. जैसे हम बताते हैं कि it is always secure to keep a two-way authentication. One it comes in your email, one it comes as an OTP. आप क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं, right? So how to keep it safe and secure two-way authentication? It is always advisable to keep a two-way authentication. और जो हमारा ब्राउजर एड्रेस बार होता है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, सो इनफैक्ट दे कैन गेट इनटू योर ब्राउजर, दे कैन स्टील योर मनी इजीली एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट you see to it that your browser is not shifted and it avoids phishing. अच्छा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो या नहीं हो या किसी से शेयर करें या ना करें, इसके ऊपर कोई टिप? अभी जैसे आप तो ये तो बताएंगे नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप ये क्यों बताएंगे किसी को कि आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कौन सा है, उसका पब्लिक की क्या है, उसका प्राइवेट की क्या है? नेवर यू आर सपोज्ड टू शेयर इट विद एनीवन. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप इट सिंगल हैंडेडली. मुझे याद है जैसे कहते हैं कि अपना OTP किसी को मत बताओ. अरे वाह, सही जवाब. कितनी स्मार्ट होती जा रही हूं मैं आपके साथ. सो दिस वाज आवर tip number 3, which brings to a conclusion that you are not supposed to share your OTP or cryptocurrency details with anyone. अच्छा, तो ऐसे में फिर
कैसा पासवर्ड बनाऊं कि वो बहुत स्ट्रांग हो, कोई हैक ना कर पाए? Absolutely, that goes without saying, रुचि. It has to be really robust. बहुत ही strong password होना चाहिए. या तो it's better to remember it. जैसे आपको बताया कि it has to be either kept it somewhere secret and it has to be one way. Only one individual should access it. अच्छा एक बात बताओ मनोज, अगर मैं किसी को कुछ X अमाउंट भेज रही हूँ, हाँ. अगर मैंने गलत एड्रेस पे भी भेज दिया तो क्या वो रिकवर हो सकता है? मतलब जैसे बैंक में तो कर देते ना, अगर हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन वो हेल्प करते हैं हमें. So that is something which brings to a tip number 5. This once you have sent it to the wrong address, that means it's sent, done and delivered. It will not come back to you. अच्छा ऐसा भी है. So you have to be very careful before make any transactions, anything. You have to be double sure before making any investment bets. अच्छा मैं तो बहुत ज्यादा तुम्हें पता है बात होनी हूँ, कितनी बातें करती हूँ, तो मैं तो अक्सर अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ मैंने ये इन्वेस्ट किया, ये मेरा डिटेल्स है, थोड़ा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स का, तो शेयर कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं ना, और वो आपके पैसे भी लेके जा सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दैट? नहीं मेरी कार मुझे दिख रही है. वो बोलते हैं धंधा दोस्ती होती है. सो इनफैक्ट योर इन्वेस्टमेंट इज योर इन्वेस्टमेंट्स और द टाइम विद फ्रेंड्स आर द टाइम विद फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कीप देम सेपरेट. अच्छा, और अगर मैं ऑनलाइन मतलब हॉट वॉलेट यूज करती हूँ और कभी घर में वाईफाई नहीं है, अगर मैं किसी कैफे में चली गई या फिर किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ का वाईफाई यूज कर सकती हूँ सिक्योर? Very valid point which you have raised because that means you are thinking over how to double your investment. So it is always advisable not to use public Wi-Fi because they can divert you to some of the other browser, because we are not that tech savvy. Hackers are really smart. They can take you for a ride quickly and आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फोन कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, और वहाँ से आपका सारा डेटा उनके easily within seconds आ सकता है. They can steal your money with a blink of an eye. Oh my God. And it's gone. That means it's gone forever. Nothing is safe. लेकिन मेरी अपनी डिवाइस तो सेफ है ना, अगर मैं अपने फोन से ये सारी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, that is safe? Of course, if you do a transaction from your phone, but you have to be double sure that you don't give access to your phone to someone. No one links, download a link on your mobile. That means it's your phone is your phone. No one should access it rather. या उसमें कुछ सिक्योरिटी में एप्स डाल सकती हूँ? Yeah, of course there are safety measures such as these. You can do it and get your phone secured and can avoid such attacks or cybercrime attacks, or maybe some hackers, they are really smart. As we have always telling the hacker का एक बहुत बड़ा हम तो usually these are the retail clients, but there are many institutions also जिनका अभी जैसे DeFi के frauds बढ़ गए हैं, decentralized finance में लगभग 600% से ज़्यादा उनका cyber crime बढ़ गया है. That means they have stolen roughly around $10.5 billion worth. चलो मैं समझ गई कि साइबर कैफे जाना सेफ नहीं है या फ्रेंड्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना सेफ नहीं, लेकिन मेरा अपनी डिवाइस तो मैं मेरा फ़ोन तो यूज़ कर सकती हूँ, उसके थ्रू तो ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ ना, दैट इज सेफ. आपका फ़ोन यूज़ करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. यू हैव टू सी दैट सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल्स एंड सेफ्टी मेजर्स आर अप टू द मार्क सो दैट सच एक्टिविटीज डजंट रिपीट. तो देखना है कि आपका अगर फोन सिक्योर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट इज राउटिंग वाया योर मोबाइल, दैट मींस यू हैव टू बी डबल श्योर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. बट हम हमेशा बोलते आ रहे हैं बात. तो मतलब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी शादी ब्याह में जाके, मौसी जी सुनिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे थोड़ा सा स्पीकर लेके बोलते मत फिरना आप कि आपने कौन से इस पे किया. बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग इन द सोशल गैदरिंग. दैट इज समथिंग that's a basic hygiene level which we maintain. If you are partying also, then definitely you have to ensure that you don't reveal your secrets, just like you are not supposed to reveal your cryptocurrencies. हाँ बिल्कुल absolutely. अच्छा कभी अगर मैं किसी वजह से अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही, if I tell somebody, a friend, my brother, my sister to handle, हंसते हो यार मनोज, हर बात पे हंसते हो आप मेरी, तो वो अगर मेरा अकाउंट हैंडल करे तो कोई दिक्कत है? तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 2-वे ऑथेंटिकेशन का जरूरत है, वो आपको 2-वे से टाटा बाय बाय करेंगे और आपका पैसा लेके भी ऐसे ही भाग जाएंगे वो. तो सिर्फ मैं ही अपना अकाउंट हमेशा. Of course, this is the last tip for the day which we are giving, last and the 10th tip for the day. You should never insist anyone to access your account on your behalf. Okay. That is something which you have to understand. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और अब आई एम श्योर मैं वॉलेट बनाने वाली, एक गुच्ची का वॉलेट नहीं होगा, ये एक पेपर वॉलेट होगा. Of course, that is something which you have. I mean, choices is yours, but definitely you have take a really good advice from a financial advisor before making your investments, before making your bets. And all the viewers of Crypto TV, you should understand that cryptocurrency investments are really risky, really volatile, and subjected to market risk. But you should always make an informed choice and consult your advisors before making any decisions. That's it. Thank you so much from me, Manoj Dara, and रुचि शर्मा. Thank you.
And today we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. It is trying to rewrite the history by the way we are writing our ledgers. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is Axie Infinity Stars, known as AXS. If you are a pet lover and a gamer, I'm assuming you probably have heard of this already. If not, allow me to enlighten you, because this game pays you to be in love. The highlight is it has gone up 11,000% last year. Playing this game is collecting, breeding, raising, battling, trading token-based animals known as Axies. These Axies are NFTs and their crypto token is AXS. So you can play the game and get paid for it. Money, 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 money. The more you play, the more money you make. And this money then can be staked. You can make more by voting for it. These are NFTs and tradable. And every time you go out and you vote for it, it's actually governance token, which means you decide how the game develops further. The game is already in Web 3.0, which is in the metaverse. Are you ready for the metaverse? But if you see the game, it isn't as advanced as you want it to be for the Web 3.0. But the real question is, are people playing this only for making money, or would the real purpose of the game stay and attract the right audience to keep paying you what you do love? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. मेटावर्स और एनएफटी मेनिया ने ग्लोबली सेलिब्रिटीज की दुनिया में तूफान मचा दिया है। एक्टर्स हो या आर्टिस्ट, मॉडल्स हो या फिर सिंगर, सभी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं। ऐसे में इंडियन सिंगर्स भला कैसे पीछे रहते? कुमार सानू, सोनू निगम, कैलाश खेर से लेकर एसपी बालासुब्रमण्यम तक से जुड़ी एनएफटीज सुर्खियां बटोर रही हैं। तो वहीं दिलेर मेहंदी ने सीधे मेटावर्स पर कब्जा जमा लिया है। वहां लैंड खरीदकर दिलेर जबरदस्त खलबली मचा रहे हैं। चुरा के दिल सभी का चले ये चले। जी हाँ, 90s में इनकी आवाज ने सभी को क्रेजी कर दिया था। तब शायद ही कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें इनकी आवाज का जादू न घुला हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस कुमार सानू की, जिनकी रुमानी आवाज ने ना जाने कितने दिलों को पहले प्यार का एहसास कराया। पॉपुलर मेलोडी किंग इस बार अपनी एनएफटी कलेक्शन के चलते सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, अनरिलीज सॉन्ग के ऑडियो और कुछ क्लिप्स के अलावा अपने फर्स्ट ऑडिशन और ऑटोग्राफ्ड डिजिटल मेमोरेबलिया की एनएफटी सीरीज लॉन्च की है। कुमार सानू की इस एनएफटी कलेक्शन में उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ साथ उनके घर के अंदर की खास झलक भी दिखेगी। ये एनएफटी एक्सक्लूसिवली फ्लेमिंगो एनएफटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसकी खास बात है, इससे होने वाली कलेक्शन का 5% एनजीओ को डोनेट किया जाएगा। एनएफटीज यूनिक एसेट होते हैं और इसीलिए अब ट्रिब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी और मलयालम फिल्म्स में 40,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के गुजरने के 6 महीने बाद उनके अनरिलीज सॉन्ग को बतौर एनएफटी उनके फैंस के लिए लॉन्च किया गया। उनका ये आखिरी सॉन्ग डिजी नूर नाम की लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस पर ऑक्शन किया गया। विश्व रूपा दारी सनम नाम की इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फनी रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इस एनएफटी से जुड़ी खास बात है कि इसके बायर को कॉपीराइट का 51% मिलेगा। साथ ही उनके पास इस सॉन्ग को अडेप्ट
और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने के राइट्स भी होंगे। तो वहीं इन सब के बीच मेटावर्स की दुनिया में धूम मचाने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले पॉप स्टार दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में लैंड खरीदा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बल्ले बल्ले लैंड। सुनने में आ रहा है कि इस लैंड की एंट्री पर उनका एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टैच्यू होगा, जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉप स्टार और आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स होस्ट कर पाएंगे। दलेर इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं। दरअसल दलेर ने कुछ महीनों पहले पार्टी नाइट पर एक कॉन्सर्ट किया था। अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उसकी मौजूदगी हमेशा बनाए रखने के लिए पार्टी नाइट के साथ मिलकर बल्ले बल्ले लैंड क्रिएट कर दिया दलेर ने। दलेर इतने पर ही नहीं रुके, उनके इस बल्ले बल्ले लैंड पर स्टोर्स भी होंगे जहां फैंस स्पेशल मर्चेंडाइज की NFT खरीद पाएंगे। NFT फ्रेंजी में शामिल बड़े बड़े नामों में से एक है पॉपुलर सिंगर सोनू निगम का नाम, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में NFT सीरीज लॉन्च करने वाले पहले सेलिब्रिटी सिंगर हैं। सोनू ने इस NFT कलेक्शन को लंदन में लॉन्च किया था। उसमें उनकी जर्नी और गानों के अलावा उनके लिखे हुए लिरिक्स और उनकी सिंगल हॉल ऑफ फेम की NFT भी शामिल है। सोनू ने न्यू एज डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस के साथ मिलकर ये NFT कलेक्शन लॉन्च की थी। और अब बात एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनकी प्लेबैक, पॉप और रीजनल सॉन्ग्स की फैन फॉलोइंग देश में नहीं विदेशों में भी फैली हुई है, लेकिन खास तौर पर सूफी सॉन्ग्स के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडियन सूफी किंग कहे जाने वाले कैलाश खेर ने अपनी NFT कलेक्शन के लिए पॉपुलर NFT मार्केटप्लेस OpenSea को चुना। कैलाश खेर की ये NFT सूफियाना अंदाज में रंगों और संगीत के सुंदर सपने जैसी है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ड्रीम्सकेप। संगीत सरहदों का मोहताज नहीं, संगीत की भाषा ही ऐसी है जो हर किसी को जोड़ती है, हर किसी के दिलों के तार छेड़ती है। शायद यही वजह है कि एक एक कर सभी सिंगर्स अब NFT और मेटावर्स की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल NFT और मेटावर्स भी जबरदस्त बूम पर है, ऐसे में इसका फायदा उठाना तो लाजमी है। तो कैसी लगी आपको म्यूजिक NFT पर मेरी यानी रुचि की ये स्पेशल स्टोरी? अच्छी लगी? Then do watch all my special stories. See you soon with yet another interesting story. Till then, goodbye, take care and keep watching Crypto TV. Cryptocurrency prices are mimicking stocks and bonds like never before, penalizing investors who acquired Bitcoin and other digital assets to diversify their portfolio. Because central banks increased the supply of fiat money in 2020 and 21, crypto prices surged, and now the Fed is tightening, crypto and equity markets are correcting lower. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis,
and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथीरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथीरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथीरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथीरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे, अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना।
मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं, हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Welcome to the world of crypto. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स
और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history,
proof of activity, proof of identity, proof of birth, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine, fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for Ghost-Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर. अरे क्यों? मेरी बात सुनो. यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी. चलो बताओ आपकी क्या बात है. मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे. That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी. बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है. बताइए. 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू. इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी. हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट. ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है. पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है. बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a सातोशी के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं. इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया. मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना. हाँ, जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक. तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो. और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं. यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज. व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड. हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ. तो आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ. 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे. आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में. व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती. जीरो की गिनती में नहीं चलते. और वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में. आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच. 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेना. या द एक्सीडेंटल मिलेनियर $26 इन्वेस्ट किए 2009 में. उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है. मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था. और अच्छा वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी. हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर. जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है. एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर. सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट. आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं. वाओ. मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए. मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे. मून से जमीन पे उतरते हैं. और लेट्स टॉक अबाउट अवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम.
तो वो तो ब्लॉकचेन है ना, बिल्कुल या करेंसी है, हम यही तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है. That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है. एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं. विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं. विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था. आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम. मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी. टीचर की आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी. इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया. एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी. तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है. अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप ये कॉइन खरीद सकते हैं. मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर. तो बिल्कुल आगे चलते हैं. आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े. नो बेल्ट. आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली. जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके. वो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है. वो गए चाइना, चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई. चाइना से गए जापान, जापान से गए यूएस. ओके वाओ. तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट की क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी. बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान और वहां से लेकर वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था. मीनवाइल यूएस ने उनको बैन कर दिया था. और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है. कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बिनांस यूएस कर दिया और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है. Wow, that's amazing. और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB. नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है. मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिका से मुझे याद आए बर्गर्स. यू नो आई एम अ फूडी. तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसीडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज. बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं. दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स. तो आप उस पे फोकस मत कीजिए. लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन. मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है. सो विल टॉक अबाउट टीथर. तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो. टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC. तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है. आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है. यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर. सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है. सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड. तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर. दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन. पर अमेरिका से ना मुझे UFO भी याद आते हैं. अच्छा, हाँ, तो क्या मैं UFO कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए. लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन. मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए. नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है. मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी. हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने. दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका decision खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us.
वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ। देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। क्रिप्टो की मेल डोमिनेटेड दुनिया में वुमनिया भी अपनी जगह बना रही है बॉस। ऑलरेडी आईटी वर्ल्ड में विमेन का कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। और क्यों ना करे भाई, पायलट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपना परचम लहराने के बाद अब क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हमें बराबरी करनी है, यानी कि जगह तो बनानी ही होगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय, मेरा नाम है यशस्वी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। और इस स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस के बारे में, जिनकी अचीवमेंट्स को देखकर शायद इंडिया की पोटेंशियल क्रिप्टो क्वीन भी इंस्पायर हो जाए और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में अपना सिक्का जमा दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। फर्स्ट पियर्स क्रिप्टो क्वीन का नाम है हेस्टर पियर्स। जैसे इंडिया का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की सेकंड टर्म कमिश्नर है मिस पियर्स। जिसे हमारे घर में चाहे कितने भी लोग कमाने वाले क्यों ना हो, पर मम्मी के अप्रूवल के बिना कभी बजट अप्रूव होता है। वैसे ही पूरे अमेरिका के स्टॉक्स और क्रिप्टो के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को इन मम्मी के डर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अरे मियाँ, तभी तो इनका निकनेम है क्रिप्टो मॉम। ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस क्रिप्टो मॉम ने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और येल लॉ स्कूल से पढ़ी है वकालत, और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन की ये है तुर्रम खान। इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया अधूरे नॉलेज के साथ क्रिप्टो को लेकर के नेगेटिविटी फैला रही थी, तब मिस पियर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ा ही सेंसिबल अप्रोच अपनाया था और कहा था कि यूएस एंड दुनिया वाले एज फार एज क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड, वी कैन डू मच बेटर। जैसे यूएस अपने डॉलर से वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस एसईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। 2025 तक हेस्टर पियर्स यूएस एसईसी की कमिश्नर रहेंगी। तो लेट्स सी ये क्रिप्टो मॉम क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या इनकलाब लेकर के आती हैं, क्योंकि इनके नॉर्म्स का इंडियन क्रिप्टो बिल पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। लेट्स होप कि क्रिप्टो मॉम का मूड जो है वो एकदम तरोताजा रहे, ताकि हम इंडियंस को भी अच्छा खासा फायदा हो सके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन, महबूबा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाती हूँ। अरे आपको कहा था ना कि स्पेशल सीरीज है। जानना चाहते हैं इन फियर्स क्रिप्टो लेडीज के बारे में, तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। तब तक के लिए दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग आउट। Keep watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. वापस यहीं आना अगर क्रिप्टो क्वींस के बारे में है जानना।
And today we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. It is trying to rewrite the history by the way we are writing our ledgers. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. आजकल जहां देखो NFTs की चर्चा है, जिसे देखो वो NFT बना रहा है या बेच खरीद रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज तो इससे करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NFT बनाना कोई रॉकेट साइंस है, इससे कमाना बेहद मुश्किल है, टू कॉम्प्लिकेटेड या टू टेक्निकल है, तो मैं आपको बता दूं कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। NFT बनाने के लिए आपको थोड़ा टैलेंट, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा लक चाहिए। लक इसलिए ताकि आपका आर्ट ऑडियंस के साथ क्लिक करे। तो चलिए बातों में वक्त नहीं गवाते हैं, आपको NFT बनाने का इजी वे बताते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की NFT बनानी है, और वो कुछ भी हो सकता है। कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो गेम कलेक्टिबल, कोई मीम, जिफ, यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी। बस जो भी हो वो रेयर हो और यूनिक हो। इससे आपकी NFT को वैल्यू मिलेगी, और हाँ, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वरना कोई लीगल ट्रबल हो सकती है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिजिटल एसेट सिलेक्ट कर लिया तो उसे NFT बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन को अपनी NFT के लिए यूज करना चाहते हैं। इन दिनों NFT आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। बाकी पॉपुलर ऑप्शंस हैं टीजोस, Polkadot, Cosmos and Binance Smart Chain. स्टेप नंबर 3, अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है तो फिर आपको डिजिटल वॉलेट बनाना होगा अपनी NFT क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपनी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी, और इस वॉलेट के थ्रू आप अपने डिजिटल एसेट को एक्सेस कर पाएंगे। Coinbase, WazirX, Zeppe कुछ पॉपुलर इंडियन NFT वॉलेट्स में से हैं। MetaMask, Math Wallet, Alpha Wallet, Trust Wallet। ग्लोबली ये वॉलेट्स काफी यूज किए जाते हैं। आपके वॉलेट में कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ज्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स ईथर एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है तो उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करें, so that you can use it to create and sell NFTs। स्टेप नंबर 4, एक बार आपका डिजिटल वॉलेट बन गया और आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है, तो अब आप NFT क्रिएट और सेल करने के लिए तैयार है। बस एक अच्छी डिटेल रिसर्च करके बेस्ट NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करनी है आपको। WazirX, Collection, Mint, BeyondLife.club जैसी कई अच्छी मार्केटप्लेसेस हैं इंडिया में, जिन पर गैस फीस भी ज्यादा नहीं है। WazirX $1 की गैस फीस पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। Collection सेल प्राइस का 5% लेता है। तो वहीं इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर मार्केटप्लेस OpenSea की गैस फीस $100 से $150 के बीच रहती है। OpenSea के अलावा Axie, Larva Labs, NBA Top Shot, Rarible ये कुछ बेस्ट मार्केटप्लेसेस में से एक हैं। लेकिन आपको अपनी NFT के हिसाब से मार्केटप्लेस चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेम NFT के लिए Axie मार्केटप्लेस है, बास्केटबॉल फोकस्ड NFTs के लिए NBA टॉप शॉट है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ मार्केटप्लेसेस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है और उनके प्लेटफॉर्म पर वही यूज होती है, जैसे कि Rarible। NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप NFT मिंट करने के लिए नेसेसरी फीस चुका पाए। स्टेप नंबर 5, अब आप अपनी NFT को अपलोड करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिलेक्टेड NFT मार्केटप्लेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है एज टू हाउ टू अपलोड योर NFT, और इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी NFT फाइल, जो कि PNG, GIF, MP3 या कोई भी और फाइल टाइप हो, उसे मार्केटेबल NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप 6,
अपनी NFT को मिंट करने के लिए फाइनल स्टेप पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कैसे मोनेटाइज करेंगे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन फिक्स्ड प्राइस। आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जो भी पहला इंसान वो प्राइस देने को तैयार होगा वही आपका बायर होगा। टाइम्ड ऑक्शन। टाइम्ड ऑक्शन से ऑडियंस को एक टाइम लिमिट मिलेगी, यानी थोड़ा वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितने पर बिड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन अनलिमिटेड ऑक्शन। इस तरह की ऑक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें अपने हिसाब से ऑक्शन को एंड कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी NFT का मिनिमम प्राइस सेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। उस पर रॉयल्टी रखें ताकि अगर आपकी NFT किसी सेकेंडरी मार्केट पर रीसेल हो तो आपको उसका फायदा मिलता रहे। NFT कैसे क्रिएट और सेल करें वो तो आप समझ गए हैं। NFT बाय करने का प्रोसेस भी बहुत इजी एंड सिमिलर है। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाएं, उस वॉलेट को फंड करें, बेस्ट मार्केट प्लेस चूज करें, वॉलेट को उस मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट करें, फिर जो भी NFT आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बिड सबमिट कर दीजिए और अब आप अपनी पसंदीदा NFT खरीद पाएंगे। नाउ दैट यू नो ऑल अबाउट NFTs, तो देर किस बात की, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए और उतर जाइए NFT मार्केट के मैदान में। क्या पता बिग बी की तरह आपकी NFT भी करोड़ों कमाए। क्रिप्टो से जुड़ी और कई चीजों को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरीज जरूर देखिए। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे। Time is changing, we will too. ट्रेड वही होगा, ट्रेंड हम बदलेंगे और साथ ही बदलेगा फ्लेवर भी। सिर्फ क्रिप्टो की बातें होगी with lots of fun. So be ready for the new experience with us. Death is significant and inevitable part of life. Thinking and talking about it may be considered dystopian. However, when it comes to financial matter, it is best to anticipate the inevitable and take adequate precautions and make appropriate provisions. Tong Zhou, a 33-year-old, lost his life savings after vesting his funds with a cryptocurrency trader who died, taking the password to access funds to the grave. Zhou is among the thousands of customers left in lurch after following Gerald Jerry Cotton's mysterious death in 2018 at an age of 30, leaving $150 million worth of crypto assets in limbo. Zhou trusted Quadriga CX, Canadian largest cryptocurrency exchange, with $500,000. A big chunk of it was given to him by his parents. But when co-founder Cotton died during a honeymoon in India, the money was lost forever. Investing in cryptocurrency is considered risky, and to die without detailing on how to access the savings for near and dear ones can be termed as irresponsible. This is Manoj Dara. You are watching a special show on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? There are plenty of examples of horror stories of people passing away without making a proper plan to bequeath their crypto holdings to their family. According to a study by Cremation Institute, nearly 90% of the crypto owners are worried about what will happen to their crypto after they pass away. As far as cryptocurrency is concerned, it's important to understand how to secure your cryptocurrencies and leave instructions with your loved ones for retrieving your financial assets after you die. There are a number of ways for crypto investors to bestow their crypto to the next generation. All crypto traders store their holdings either in hot wallets or cold wallets. Sharing keys with trusted family members is probably one of the most straightforward methods to pass on your cryptos.
some of the most prominent people in the crypto industry have publicly claimed to use this method to ensure their crypto fortunes get passed on to the next generation. Hal Finney, an earlier supporter of Bitcoin and recipient of the first Bitcoin transaction from BTC creator Satoshi Nakamoto, willed his crypto holdings to his children by simply providing his keys. This crypto inheritance practice of sharing the keys with the trusted family members is straightforward but may not be suitable for everyone in the crypto community. This way of bequeathing Bitcoin could also be considered risky, as shared keys come with the responsibility of keeping those assets secure. As far as hot wallets are concerned, major cryptocurrency exchanges from around the world allow the bereaved to gain access to the family members' assets after providing a number of documents, including a death certificate and a last will. There are also some projects that are dedicated to ensuring the inheritance of digital assets. For example, companies such as Safe Haven, CASA, and Trustverse are working on their own solutions that allow people to bequeath their crypto assets using blockchain technology and cryptography. Protecting our family and loved ones is every individual's top priority. So make sure you have a proper plan and a will in place so that even when you are not around, your crypto holdings are there to protect your family's financial future. We will leave you with a slice of conversation Crypto TV had with Mr. Jeetu Kataria, CEO DIFX, where he emphasized about a new nomination feature his exchange has introduced. The biggest tech what we have integrated just this month and we went live with our architectural change is the nomination program, wherein what we feel that we have seen lots of exchanges today. I won't name these exchanges, but they are sitting on billions and billions of dollars of crypto assets which are unclaimed, wherein the family members of these users who just gone, who died, they don't know how to get these assets. Today, within 6 months, we made this whole platform of DIFX nomination program, wherein you can nominate up to 5 family members, and if anything happens to you, automatically these all assets what you have on DIFX platform will automatically goes to your family members, and that's all is on blockchain. Everything what a user is putting in is recorded on the blockchain. So that's how tech and transparently we have shown to the world that how an exchange should run. Thank you so much for watching this special story on Crypto TV. What happens to your crypto when you die? Please like, subscribe and share. Thank you. एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। मेटावर्स या नावामुळेच भविष्यातील होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे स्पंदन मिळते। आज आपण पाहणार आहोत की का ग्लोबल ब्रँड्स हे मेटावर्स मध्ये आपलं प्रेझेन्स वाढवत आहेत। शेवटी या मेटावर्स मध्ये असे काय आहे की यास ॲडव्हर्टायझिंगचे भविष्य म्हटले जात आहे। जर तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंगच्या फ्युचर बद्दल माहिती करून घ्यायची असेल तर एकदा त्याच्या भूतकाळाबद्दलही जाणून घेऊयात। मायकेल एल्ड्रिच नावाच्या इंग्लिश इन्व्हेंटर कम एंटरप्रेनरने असे काही केले की ज्यामुळे शॉपिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया ही कायमचीच बदलली। त्यांनी पहिल्यांदाच टीव्हीवर ॲड पाहून एखादं प्रोडक्ट खरेदी करून एक छोटीशी सुरुवात केली, जी आज ई कॉमर्स आणि डिजिटल मार्केटिंगची मल्टी-बिलियन डॉलरची इंडस्ट्री बनली आहे। मग ब्रँडने इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विट आणि इन्स्टाद्वारे अग्रेसिव्हली आपल्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली। सर्व काही ठीक सुरू होतं, पण कोविडच्या लाटेमुळे जग ठप्प झाले, अर्थव्यवस्था ठप्प झाली। लॉकडाऊन दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगमुळे लोकांनी व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये आपलं इंटरॅक्शन वाढवलं। यामुळे रिटेल सेल ही खाली घसरली आणि ई कॉमर्सने मोठ्या प्रमाणात उभारी घेतली। मग काय, ऑब्वियसली
अपेक्षापेक्षाही डिजिटल मार्केटिंगचे बजेट वाढले आणि तिथून मेटावर्स नावाची सर्वात मोठे टेक्नॉलॉजी रेव्होल्यूशन सुरू झाले. जागतिक बँकिंग कंपनी सिटी ग्रुपच्या मते 2030 पर्यंत मेटावर्समध्ये 13 ते 14 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणार आहे, ज्यापैकी $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त मेटावर्स ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धीसाठी वापरले जाईल. हा $14 ट्रिलियन आकडा इतका मोठा आहे की जर तुम्हाला याचे रूपांतर रुपयात करायचे झाले तर तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलेटर छोटे पडेल. मेटावर्समध्ये ई कॉमर्स आणि ट्रेडिशनल रिटेल स्पेस मिळून बिझनेस ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगचा नेक्स्ट फेज तयार होणार. एका लेटेस्ट स्टडीनुसार कळलं आहे की आपले ॲव्हरेज अटेन्शन स्पॅन फक्त 8 सेकंडचे असते. आता रिटेलर्सला कळलं आहे की फक्त 8 सेकंदात ग्राहकाला त्यांचा प्रोडक्ट्स बद्दल सांगून ते प्रोडक्ट्स विकणे हे खूप कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता वन ॲड्स फिट ऑल सारखे जनरलाइज ॲड कॅम्पेन सारखं काम नाही चालणार. आता ॲडव्हर्टायझिंग वर्ल्ड हे पर्सनलाइज वर्ल्डकडे आपलं ध्यान केंद्रित करत आहे. तुम्हाला वाटेल पर्सनलाइज ॲड म्हणजे प्रत्येक ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या जाहिराती, हे कसं शक्य आहे? वेल, आय सेट मेटावर्स आहेत तर हे शक्य आहे. होय, मेटावर्स मधील मोठ्या कंपनीज या ना केवळ ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगच्या पद्धती बदलत आहेत, तर कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि ब्रँड इंटरॅक्शनद्वारे सुद्धा पर्सनलाइज टच देऊन रेव्होल्युशनलाइज करत आहेत. उदाहरणार्थ, भारतात 2022च्या व्हॅलेंटाईन्स डेवर कॅडबरी डेअरी मिल्क सिल्कने हाऊ फार विल यू गो टू मेक देम ब्लश लॉन्च केले, जे लव्ह बर्डसाठी ऑगमेंटेड रियालिटी टेक्नॉलॉजी ड्रायव्हन ॲड कॅम्पेन सुरू केलं होतं, ज्यामध्ये लव्ह बर्ड्स एकमेकांना सिक्रेट लव्ह नोट्स देऊ शकतात, ज्याला कोणतेही न्यूजपेपर ॲड, होर्डिंग किंवा बिलबोर्डला आपल्या मोबाईलद्वारे स्कॅन करून इमर्सिव्ह वर्ल्ड ऑफ ऑगमेंटेड रियालिटी मध्ये बघता येऊ शकतं. एवढंच नाही तर या कॅम्पेनमध्ये एका लकी कपलला चंद्रावर डेटसाठी देखील पाठवण्यात आलं होतं. खरं तर हा चंद्र मेटावर्समध्ये आहे आणि ही व्हर्च्युअल डेट व्हर्च्युअल मूनवर अरेंज करण्यात आली होती. भारतात ऑगमेंटेड रियालिटी आणि मेटावर्सला मर्ज करणारा हा पहिला ॲड कॅम्पेन होता. आता तर ही सुरुवात आहे. मेटावर्समध्ये तर अशी हायपर पर्सनलाइज ॲडची सुनामी येणार आहे जी ॲडव्हर्टायझिंगची दुनिया बदलून ठेवणार आहे. जगातील मोठ्या मोठ्या कंपनीज या मेटावर्सला घेऊन फार एक्सायटेड आहे. फेसबुक बद्दल बोलायचे झाले तर झुकरबर्गने तर ह्याचे नाव बदलून मेटा ठेवले आहेत. असं म्हटलं जातं की येणाऱ्या डेकेडमध्ये फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी ही पूर्णपणे मेटावर्स कंपनीमध्ये ट्रान्सफॉर्म होऊन जाईल. फेसबुक किंवा मेटा प्लॅटफॉर्म्स आपल्या सबसिडरी रियालिटी लॅब्सच्या थ्रू AR आणि VR ग्लासेस डेव्हलप करत आहेत, ज्यामुळे फिजिकल वर्ल्ड आणि डिजिटल वर्ल्डला मिळून एक डिजिटल रियालिटी क्रिएट करण्यात येईल, ज्यामुळे ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंगसाठी एक सर्वात मोठा नवीन एव्हेन्यू ओपन होणार आहे. मेटाप्रमाणेच मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल मध्ये सुद्धा अफोर्डेबल AR किंवा VR ग्लासेसला मार्केटमध्ये लॉन्च करण्याची रेस लागली आहे. आणि खेळ हा फक्त चष्म्याचा नाही आहे. ह्या सर्व कंपनीज आपल्या मेटावर्स सुद्धा लॉन्च करणार आहेत. ज्याचा चष्मा आणि मेटावर्स मार्केटमध्ये हिट झाला तर समजून जा की त्यावर ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी पैशांचा पाऊस पाडतील. यामध्ये काही शंका नाही. फक्त टेक कंपनीजच नाही तर ऑटोमोबाईल पासून फॅशन इंडस्ट्री पर्यंत सर्व मोठ्या कंपनीज या मेटावर्समध्ये आपले ब्रँडिंग करतील. ह्युंडाय, डिझनी, ॲमेझॉन, गुची, लुई विटॉन, कोका-कोला, रिलायन्स, इन्फोसिस, सॅमसंग, नायकी सारख्या बऱ्याच कंपनीज मेटावर्समध्ये आपल्या ब्रँडिंगवर 24/7 काम करत आहेत. कारण एका स्टडीनुसार 2026 पर्यंत जगातील 25% लोक डेली ॲटलीस्ट 1 तास मेटावर्समध्ये स्पेंड करतील. येणाऱ्या काळात वर्क, शॉपिंग, एज्युकेशन, सोशल फंक्शन आणि एंटरटेनमेंट सर्व काही मेटावर्समध्ये होणार. इन शॉर्ट, जसजसे मेटावर्समध्ये लोक ॲड होतील तसतसे ब्रँड आपले ॲड्स त्या ठिकाणी ॲड करत जातील.
कोणत्याही ब्रँड्स किंवा बिझनेसला Web3 ची फ्युचरिस्टिक वेव्हला राईड करून आपली जागा बनवायची असेल तर त्यांना टेक सॅव्ही बनून मेटावर्स ब्रँडिंग आणि ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या सोबत आपले पाऊल पुढे घेऊन जावे लागेल. नाहीतर ते ब्रँड आणि कंपनी कुठे हरवतील ह्याचा पत्ता कोणालाही लागणार नाही. आजच्या या एपिसोडमध्ये बस एवढंच. मेटावर्स बाबत अजून बरेच एक्साइटिंग अपडेट्स घेऊन मी तुमची क्रिप्टो दोस्त अँड होस्ट वैभवी सावंत तुमच्या भेटीला पुन्हा येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल. हम ही जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड NFTs म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे. नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी NFT ची नवीन लिस्ट. आता मी तुम्हाला अशा 3 NFTs बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल. चला तर मग सुरू करूया. तर या टॉप 3 क्रेझी NFTच्या लिस्टमध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सॉल या नावाची NFT. म्हणजेच तुमच्या आत्म्याची NFT. नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात. आता NFTs वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा NFTच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं NFTच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन बन शेक या नावाच्या डच स्टुडंटवर NFTचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच NFT मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या भाईने जगातील सर्वात मोठी NFT मार्केट प्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची NFTला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या NFTला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला NFTच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयाने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या NFTची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या NFTची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या NFT सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला NFTचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी NFT आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाईप NFT साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या NFTचे नाव आहे इनर ब्युटी म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची NFT. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच NFT बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेसवर 28 मार्च 2022ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच NFT रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक NFT बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा NFTला विकत सुद्धा घेत आहेत.
खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला NFT बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड NFTचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या NFTला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंडे बाबा आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची NFT कितीमध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची NFT आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटीमध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी NFT लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या NFT साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या NFTचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची JPEG इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल NFT लॉन्च केलं गेलं होतं. बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन जाणण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव! आम्हाला जर साधं किचनमध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी NFTs. अशाच प्रकारच्या अतरंगी NFTची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV. मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people. Thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with
latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin, once said, "If you don't believe it or don't get it, I don't have the time to convince you." Looks like the same is going to be true for Indian government, as the stance that government has taken so far is very unwelcoming. And what Satoshi Nakamoto said, looks like the exchanges are following the same path but omitting the option out to convince the government further and shifting their bases to other countries. That's something to think about. Hello and welcome to the viewers of Crypto TV. I am your crypto host Parvati Nirban, and today we are having a guest on the show of Crypto Masters, who is closely connected to exchanges in India and is a founder of a crypto payment gateway company known as BitBatua. Hello and welcome to our today's episode of Crypto Master, Mr. Lakshman. How are you doing? I'm doing well. Thank you, Parvati, for having me here. So let's begin, right? Sure. As we all know, the tussle that is going on due to the regulatory issue that the crypto world is facing in India, and additionally the exchanges are having a very tough time when the market is bearish. We all know the shadow ban and the difficulty that all of us are facing. So P2P is the only solution left for us? Yes, I think primarily this is the only solution and option left for end consumers and exchanges to accept UPI and give the crypto to users. So P2P is the only option. Okay. And you know that the ease of UPI based payment transfer is not there in P2P transfer, right? Yet people are willing to do it, as currently there is no other option available. What do you have to say about that? They can actually make UPI transaction, but not to the exchange UPI. So in the P2P, what happens? The people can make UPI to the users, the UPI payment, right? Right. They can still use the UPI. Right. So because you are a payment gateway in yourself, so how do you actually explain this situation and how can we better this? No, we are not a P2P, exchange provider. We are helping businesses and individuals, getting paid in cryptocurrencies. But I'm explaining you situation, based on the regulations issues and the things coming from the government side. Right. The cryptocurrency exchanges in India, I think they are exploring P2P options to allow their users to buy cryptocurrencies. Right. So how exactly BitBatua is functioning? Like, is it the same how every other P2P transfer is happening, or is there any difference, or is there any ease of transfer in comparison to the exchanges, what they are offering with their own, wallets and with their own P2P transfers? Right. So the first difference with, in BitBatua is we are not allowing people to buy cryptocurrency. So that means we don't have a UPI support as of now. People can use our gateway to accept payment in cryptocurrency. So it will be crypto to crypto, not fiat to crypto. Exactly. So the fiat option is not available with us. The region is saying government is not allowing, the RBI is not allowing. So what is your stance and what is your take in the same case? Are you also considering to move out or shift base in case the regulatory, doesn't come in the way which is, supporting crypto exchanges or payment gateways at the same time? So yes, until the regulators will be going out, right? We are also exploring options of setting up a base in different country. I would say Dubai. We're thinking of Dubai. So let's see. Okay. So if the regulatories are not actually supporting, so we see a lot of crypto-based company going out of India, right? That is the future. Exactly. So the clarity is not for startups like us. We want to register this platform in India, but there are no regulations how we can get the license for this crypto payment gateway. But I think we hopefully we can get the same from other countries like Dubai.
Okay, so as you said that P2P transfer is the only option as of now, and we are waiting for the regulatories to, you know, come on board and see what happens. But at the same time, right now, because this is the only option left, how safe and secure is this option? Like, how safe is the payment transfer that happens? Like, because people are using, these URLs, and then they are transferring. And that's how then the money is converted into the crypto, whatever the crypto coin is available in the particular exchange. So how safe, because it is via happening, it's not directly transferring. So there are a lot of issues already when it comes to discomfort. But there is another worry when it comes to safety and security of the transfer that is happening. So what do you have to say about that? Right. So let's break this, this answer into two parts. The first answer is this: the people are making UPI transaction to the other person, right? So that is secure, which is happening on a banking network. Right. And another person that has to is supposed to send a crypto back to the person who made a UPI is also secure, because that will be happening on a blockchain network. But this P2P is not safe because there is no guarantee, right? There is a breach of trust. There may be a breach of trust. Let's say I made a UPI, but what if the person in front of me is not going to send me cryptocurrency? So in this case, I think exchanges will also not do much help in this. So this is not safe, I would say. Okay. So how people are planning to deal with this issue in case the regulatory comes otherwise? See, the thing is, people, they will be using P2P as long as, there will be, the issues from government side coming from, like regarding the regulatory and taxes. People will be using, P2P transactions, but they are not safe, right? Right. See, why am I asking this question is because, see, end of the day, there are people who have already invested in crypto. There are people whose money is already lying because this suddenly happened. And for this entire situation to shift and to become this to be absolutely prohibited, like you cannot do any transaction, that is a change of scenario. So if that happens, fine, we will see if that is going to happen. But at present, when the things are already in between, then how people will deal with this kind of risk, which is already involved in this transfer, right? Yes, I have identified two kind of people. The one who is holding cryptocurrencies like Luna and Dogecoins. They're not sure about what is the future of these currencies, right? So they are going to sell. They are finding different alternatives to sell anyhow. And at the other end, the people who are really curious about buying cryptocurrencies, maybe because of the FOMO, right? They are going to buy cryptocurrencies. Let's say I just need to buy it for 100 rupees or buy it for 1,000 rupees, try it out and explore this option, right? So they are buying cryptocurrency using P2P method. But I believe the people who are real investor are not going to use P2P. They are going to hold the cryptocurrencies and they will be waiting for the government. They will be waiting for the regulators to come out. If they have to move the funds, then I think they will be using the foreign exchanges to move the cryptocurrencies. Okay. They will always have option to withdraw funds in foreign currency, right? So foreign exchanges, they are they have the withdrawals enabled for foreign currencies. Then that is the loss of India in such scenario, actually. Exactly. The India, the income tax department will be definitely, they have put a 30% tax, but they are not sure about it. This is a loss of Indian income tax, right? Yes. So, as we all know that 1% TDS is already levied at source and which is having a lot of technical challenges. So if the exchanges have to incorporate in case this 1% TDS deduction at source, in case the regulatory come, in the favor of exchanges, but still these 1% TDS is a big problem because they need to rebuild or reform the current infrastructure as it will not comply with 1% TDS, isn't it? What do you have to say about that?
Yes, exactly. They are facing challenges because they have built their system in such a way, they have architecture of their, applications in a different way. Now, in order to incorporate the 1% TDS, they have to, modify the existing application layer and the architecture of their, entire system. So that is a big challenge for them from moving from one system to the another one. Right. But this 1% TDS, I think it is going to be mandatory from the government side. They are not going to, put any relaxation on it. So the applications like, cryptocurrency exchanges and I think the platform like us, Crypto Payment Gateway, they are going to implement it. But I believe that this will not go far. Governments, they have to, sit together with the crypto players, crypto, industry, and then come out with another solution. I think there could be a solution. But I want to cut you here. You know about the Bangalore meeting that happened. It is for the same reason that they wanted to actually discuss and come out with a plan, but actually nothing came out of that whole discussion. And government was disappointed. The exchanges people were very disappointed. Regulatory people, consultants, whoever was there, everybody was technically disappointed at the end of it. So it's not looking like the things are actually shaping in the right way, right? No, see, the thing is, when industry is sitting with government, right, the only agenda of putting a TDS is to trace the movement of money, right? That can be achieved if they sit together with the industry players. They will have, we can trace the Bitcoin, we can trace any cryptocurrency, right? The thing is, they will have to, listen to the industry and then bring a mutual solution which can benefit the industry and government as well. So the movement of money can be traced, right, without TDS. TDS, I think, is not mandatory in that case. So they will have to come up with a solution, the mutual solution. So you think they have applied 1% TDS only to track the money? Exactly. So TDS is to trace the movement of funds. Okay, so despite the regulatory issue, more and more exchanges are still coming alive, and now the economy is moving towards decentralized infrastructure, like you just mentioned about the traceability, so which is centralization, and we are talking about decentralization. Exchanges have to list various crypto tokens, currencies in the form, and also they have to work on the payment gateways. So you do exchange development, you do coin development. So what are the challenges you face in this case, and what is the role of BitButwa in that? Sure. The problem that that is coming in front of us is I think over the period of 6 months we are seeing there is a new token, new blockchain in the industry. Let's take an example of Ethereum, Polygon, and similar blockchains which runs on EVM, right? So they support Solidity as a programming language for smart contracts to develop the tokens, right? So we have the resources in Solidity. Now let's say the new blockchain, which is Solana, right, that doesn't support the Solidity. So in that case, we have a challenge of switching from one technology to another technology. Hiring resources for a different technology is again a challenge. So this is, as the industry grows, right, the technology is also changing. So this is a change from switching from one technology to another tech stack. So this is a bigger challenge. But I think, we will have to, keep moving. So that is the issue of interoperability, if I understand it correctly, right? Right. Which itself is a big issue, right? Exactly. And so the problems will arise, like auditing a smart contract written in Solidity, is something we have resources, but auditing a smart contract which was written in written for a blockchain, a Solana blockchain, right, would be difficult for the resources who have been working in Solidity. So every time we have to look for new resources, they have experience, and that creates the demand in this, industry, and which again increase the cost. Understood.
So I have, because you talked about the interoperability and how the difficulty from moving from one chain to another chain and the functioning of it is, and the auditing of these smart contracts, how difficult it is, you just explained. The vulnerability also comes at the same time in these junctions of interoperability, right? And the hacks actually are happening in such spaces. We all know about the hacks that happened, and the number of hacks happened in 2022 is pretty high, and the amount that has been stolen is also pretty high compared to 2021. So I have a list of hacks that happened when the exchange wallet was hacked. For example, Ronin network hack that happened very recently, then Poly network last year, then KuCoin hack happened in 2020. So which means the exchange wallets in this case, particularly, like if we start talking about the exchange, so exchange wallets are also very vulnerable. So if we discuss this in parts, the first part is how vulnerable is this and how to secure the exchange wallets. Like to start with wallets, and then we can talk about the chains, because there are various hacks happened at the chain level and then happened at the exchange level. Right. So there are, two types of exchanges: the centralized exchanges and decentralized exchanges. Right. So for the centralized exchanges, their responsibilities is to, make the wallets secure, right? So they also need to secure the infrastructure, whereby they also need to educate their customer. However, we have seen that these exchanges, they have, different level of securities implemented. For example, two-factor authentication, right? When user withdraw the funds, they need to provide the OTP. So these kind of security layers they already built, but we need to educate the users more towards it. And the centralized exchanges, they have to secure the wallets, and they have to adopt the cold wallet for this also. While we talk about decentralized exchanges, right, where the end consumers, end users, they store the private keys. They have the 100% ownership of their wallets. They control that, so they have to be very careful, store the keys safely. If they think like they can't store the keys safely, they can opt for a paper wallet, or they can they can also opt for different key recovery services. So the key point is to take care of the private key is the primary, must be the primary goal here. In decentralized exchanges. In decentralized exchanges. So then it becomes the responsibility of the consumer. Right. So the responsibility of consumer is high in case of decentralized exchanges. Okay. And when it comes to centralized, because there are two-factor authentication, all these things happens, right? Whether they use email IDs and whether they use numbers, whatever the ways have been developed. So what about that then? Yeah. So these centralized exchanges, they must add more security layers to their infrastructure. Let's say add IP whitelisting, add address whitelisting, right? If we, as a centralized exchange, if we had a feature like where user can whitelist the address, the chances of losing funds will be less. I would be sending, transfer to the whitelisted address and from a whitelisted IP. So these kind of security layers, centralized exchanges has to explore and implement. How does that function? The whitelisting of these IP, and how so tough IP, or easy it is? Right. So whitelisting IP is like the internet you're using, right? So once you whitelisted your IP, that means the exchange will allow transfer only if that is coming from a whitelisted IP. Okay. If any transfer is coming from a different internet IP, will be banned. It will not be allowed. But isn't it there are risks involved with whitelisting the IP as well? So that is why I'm saying while whitelisting the IP, the exchange will ask for a two-factor kind of a SMS, OTP, and all. So once that is done, that means the original user, genuine user, has done that. So next time it actually increase the security. So this is better than what decentralized exchanges are following, is what you're saying, is it?
No, I'm not saying, if centralized exchanges at these security layers would be called as better exchanges than the decentralized one. Decentralized have their different benefits. More right? secured? If I add a point to that, are they more secured? See, the thing is, decentralized exchanges, I would say, are secured, yes, because the user, controls their funds 100%, right? But then there are different challenges in the decentralized exchanges that runs on a smart contract. Then the issues, vulnerabilities from smart contracts, will become the challenge, right? So the decentralized exchanges have their different challenges. Yes, because see, why am I asking this question is all these hacks that have happened, it's not that in the case of decentralized one, it's only that the key has been shared and then the hack has happened. No, that's not the case, right? The hacks have happened otherwise, and that's the reason why I'm asking you this question, because it's not only about, okay, all these users have lost their keys or they have shared the keys and that's why the hack has happened. No, the hacks have happened for other reasons and various reasons, right? So that depends, whether the hack was, the hack happened on a centralized exchange or happened on a DeFi network or DeFi protocol, right? If that happened on a DeFi protocol, then it must be because of, vulnerabilities present in the smart contract. So that is the other point. Smart contract, was not audited properly. It was not securely written. So there are different cases of it. Right. So it's not only the fault lies in the wallet of the decentralized exchanges. It is lying elsewhere, right? Exactly. Okay, fine. And what are the vulnerabilities in smart contracts? Can you just elaborate few? So there are vulnerabilities like, re-entrancy, denial of service, front running, just to name a few, right? These are all, vulnerabilities which the smart contract developer has to take care while writing a smart contract. So there are two things that they can primarily do. One is secure writing, second, auditing the smart contract. So, by doing these two things and following all the, best practices, I think is the way forward. Yeah, this was fantastic. So I will end our conversation here because you've already given us so much of pointers about how this can be secured, how the exchanges can do, and yes, we are waiting for the regulatories to happen. Thank you so much for coming on board and giving your time. Thank you once again. Thank you for having me here. It was such a pleasure talking to you. Same here. This was all from my side on today's episode. For more technical discussion, expert views and current crypto scenario in India and globally, don't forget to watch Crypto Masters with me, Parvati Nirvan. Keep watching and keep enhancing your knowledge of crypto only on Crypto TV. Bye-bye. बारह साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। नमस्कार, मी वैभवी सावंत पुन्हा एकदा आपला शो क्रिप्टोची गपशप मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। तर मित्रांनो, मागील एपिसोड मध्ये आपण जाणून घेतलं की स्टेबल कॉइन म्हणजे काय, ते कशा प्रकारे काम करते आणि त्याचे प्रकार कोणते। तर आज आपण चर्चा करणार आहोत टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। त्या अगोदर आपल्या माहितीसाठी रशियाने युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी आपली लढाई तीव्र करत असतानाच क्रिप्टोकरन्सीची किंमत ग्रो होताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे एकूण क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप हे $2 ट्रिलियन ओलांडले आहे। आता पाहूयात टॉप 5 स्टेबल कॉइन्स बद्दल। तर सर्वात प्रथम स्टेबल कॉइन आहे तेथर। तेथर हे 2014 मध्ये रिअल कॉइन म्हणून लॉन्च केलेले पहिले स्टेबल कॉइन होते।
तेथर हे क्रिप्टो मार्केटमध्ये सर्वात मोठे आणि सर्वात प्रसिद्ध स्टेबल कॉइन आहे, ज्याचे एकूण मार्केट कॅप $77.5 बिलियन एवढे आहे. तेथर 428 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांना वापरण्यासाठी सर्वात जास्त प्रमाणात उपलब्ध असलेले स्टेबल कॉइन म्हणून ओळखलं जातं. तेथरची उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि मार्केट लीडरचा दर्जा असूनही वारंवार होणाऱ्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमुळे आणि ऑडिट नाकारल्यामुळे तेथरला बऱ्याच लीगल सिक्युरिटीला समोर जावे लागत आहे. तेथरला $41 मिलियन एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि न्यूयॉर्कमध्ये सराव करण्यास बंदीही घातली गेली. जरी या निष्कर्षाचा तेथरच्या क्रिप्टो मार्केटमधील दैनंदिन कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नसला तरीही गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात सावधगिरी बाळगून तेथरशी संपर्क केला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे USD कॉइन म्हणजेच USDC. USDC कॉइन 2018 मध्ये कॉइनबेसद्वारे सादर केले गेले होते, जे जगातील पहिले पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज आहेत. USDC सध्या मार्केट कॅपनुसार दुसरा सर्वात मोठा स्टेबल कॉइन आहे. त्याचे मूल्य $42.1 बिलियन आहे. USDC 294 एक्सचेंजेसवर उपलब्ध आहे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहे आणि अधिक व्यापकपणे उपलब्ध आहे. दरम्यान फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि रेग्युलेटर सोबत सुद्धा USDC काम करत आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे बायनान्स USD म्हणजेच BUSD. BUSD हे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंज बायनान्सने 2019 मध्ये लॉन्च केले होते. मार्केट कॅप सह BUSD सध्या तिसऱ्या नंबरवर असून $14.3 बिलियन एवढे आहेत, जे केवळ 103 एक्सचेंजवर उपलब्ध असून BUSD त्याच्या कॉम्पिटिटर पेक्षा लेस ॲसेसिबल आहे. BUSDच्या युजर्सना बायनान्सवर शून्य शुल्क ट्रेडिंग आणि कन्व्हर्शन प्रवेश मिळतो आणि त्याचे स्टेबल कॉइन्स लेंडिंग सर्व्हिसमध्ये जमा करू शकतात, ज्यात वार्षिक 15% पर्यंत उत्पन्न मिळतो. सुरक्षितेचा प्रश्न येतो तेव्हा गुंतवणूकदारही निश्चित राहू शकतात, कारण BUSD मासिक ऑडिट्स प्रकाशित करते आणि जे वॉल स्ट्रीट रेग्युलेटर्सनी मंजूर केलेल्या 3 स्टेबल कॉइन पैकी एक आहे. चौथ्या क्रमांकावर आहे टेरा USD म्हणजेच UST. टेरा हे ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क आहे, जे लुना टोकनद्वारे गव्हर्न्ड डिसेंट्रलाइज अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइनचा सेट ऑफर करते. कॉइन मार्केट कॅपच्या डेटानुसार मार्चच्या सुरुवातीस लुना $90 चा खाली ट्रेड करत होता, परंतु 29 मार्च पहाटे आशिया वेळेनुसार लुना $106.14 चा नवीन सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. टेरा लुनाची भक्कम कामगिरी शक्यतो युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू करण्यासाठी रशियन सेनेने प्रवेश केल्यापासून जागतिक बाजारपेठेला घेरलेल्या अनसर्टनिटीतून येते. अखेरीस 5व्या क्रमांकावर आहे डाय. डाय हे सर्वात लोकप्रिय कोलॅटरलाइज स्टेबल कॉइन आहे आणि मार्केट कॅपनुसार एकूण 5व्या क्रमांकावर आहे. त्याचे मूल्य सध्या $9 बिलियन आहे. डाय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि 221 वेगवेगळ्या एक्सचेंजेसवर प्रवेश केला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चरली डाय इतर स्टेबल कॉइन पेक्षा कितीतरी जास्त तांत्रिक आहे. USDT सारख्या US डॉलर्सद्वारे थेट पाठिंबा मिळवण्याऐवजी डाय ETH सारख्या क्रिप्टो मालमत्ता लॉकअप करण्यासाठी आणि त्या कोलॅटरलवर आधारित टोकन तयार करण्यासाठी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरते. हे मेकर प्रोटोकॉलचे उत्पादन आहे, जे इथेरियम ब्लॉकचेनवर चालते. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की आपल्याला स्टेबल कॉइन बद्दल संपूर्ण माहितीही कळलीच असेल. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा आणि शेअर करा. क्रिप्टोची गपशप या शो मध्ये मी वैभवी सावंत तुर्तास इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो TV.
एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है। NFT मार्केटप्लेसेस का सबसे रिलायबल नाम OpenSea, जो फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। लेकिन कब तक? OpenSea को जोरदार मात देकर नंबर 1 के इस टाइटल को हथियाने की फिराक में है एक नहीं बल्कि 5 दमदार दावेदार, जो OpenSea के पैरों तले जमीन कब खिसका दे कोई कह नहीं सकता। OpenSea पर एक और फ्रॉड और खेल खत्म, टॉप पोजीशन गई हाथ से। OpenSea एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर अब तक 1.4 मिलियन वॉलेट्स के थ्रू NFTs ट्रेड हुई हैं। इसकी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है $23.5 बिलियन, यानी इसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर DappRadar से करीब $5 बिलियन ज्यादा। लेकिन OpenSea जितनी अपनी कामयाबी के लिए सुर्खियों में है, उतनी ही चर्चा है इसकी खामियों की। OpenSea पर इन तमाम गड़बड़ियों की शुरुआत हुई 2020 में, जब OpenSea ने अपने यूजर्स को बगैर अप्रूवल के फ्री NFT मिंट करने की इजाजत दी, जिसके चलते OpenSea पर न्यूली मिंट की गई NFTs में से 80% आर्ट फेक और स्पैम साबित हुआ। ये बात OpenSea ने खुद कबूली। वैसे OpenSea ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बचाने के लिए अपने यूजर्स का दिल भी कई बार जीता है, जैसे कि इसी साल जनवरी में OpenSea ने अपने यूजर्स को $1.8 मिलियन रीइंबर्स किए, क्योंकि यूजर्स ने OpenSea पर चल रही इन्हीं गड़बड़ियों के चलते गलती से अपने NFTs रियल वैल्यू से बेहद कम कीमत पर बेच दी थी। इतना ही नहीं, एक वॉलेट ने OpenSea पर एक बग को एक्सप्लॉइट करके $800,000 कमाए और फिर बोर्ड एप की 3 अल्ट्रा एक्सक्लूसिव NFTs रीसेल की। डिस्पाइट ऑल दीज ग्लिचेस, OpenSea की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि 2020 में $95 मिलियन की सेल से 2021 में सीधे $25 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कुछ भी कहो, नंबर 1 पोजीशन होती तो बेवफा है, तभी तो इस पोजीशन पर फिलहाल 5 उभरती मार्केटप्लेसेस की नजर है। कौन सी है ये मार्केटप्लेसेस? चलिए बताते हैं आपको। नंबर 1 पर है Coinbase। 2012 में लॉन्च हुई Coinbase 89 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। Coinbase अब जल्द अपनी NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करने की तैयारी में है। जनवरी 2021 में ही Coinbase पर रजिस्टर्ड वेटलिस्ट थी 1.1 मिलियन पीपल, जबकि OpenSea के एक्टिव यूजर्स हैं 1 मिलियन। Coinbase NFT पीयर टू पीयर होगी और इनिशियली इथेरियम ब्लॉकचेन पर होगी, लेकिन आगे चलकर कई मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करेगी। Coinbase ने ऑलरेडी लेजी लायंस एंड डेड फेलास के साथ पार्टनरशिप कर ली है। Coinbase क्रिप्टो एक्सचेंज का मानना है कि वो अपने NFT मार्केटप्लेस के थ्रू अपनी ईयरली रेवेन्यू में ओवर $1.26 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं। भाई वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है FTX NFTs। पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुई FTX NFT मार्केटप्लेस, लेकिन ये Coinbase मार्केटप्लेस से काफी अलग है। ये पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स को अपने एसेट की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उनका तमाम डेटा FTX नेटवर्क पर रिकॉर्डेड और स्टोर्ड है। साथ ही मार्केटप्लेस सोलाना पर है, ना कि इथेरियम पर। NFT मार्केटप्लेस में सोलाना की हवा चल रही है और बहुत सी NFT मार्केटप्लेसेस अब सोलाना पर स्विच कर रही हैं। OpenSea 2.5% फीस चार्ज करता है, जबकि FTX NFT मार्केटप्लेस सिर्फ 2% फीस ही चार्ज करता है। इस मार्केटप्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट alluring एस्पेक्ट है इसकी पेरेंट कंपनी। सैम बैंकमैन-फ्राइड ओन्ड FTX क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसकी वैल्यूएशन इस साल ओवर $32 बिलियन हो गई है। So as far as legitimacy, security or fraudulent free activity is concerned, FTX NFT marketplace is a very trusted option. लंबी रेस का घोड़ा है,
कब आगे निकल जाए कोई कह नहीं सकता। इस लिस्ट में अगला नाम है एवरग्रो कॉइन NFT मार्केटप्लेस का। एवरग्रो कॉइन लेकर आ रहा है BNB चेन पर अपनी नई NFT मार्केटप्लेस जो ऑफर करेगी एक नया प्रोटोकॉल और वो है NFT लेंडिंग। इसकी मदद से NFT ओनर्स अपनी NFT को गिरवी रखकर किसी क्रिप्टो करेंसी में लोन ले पाएंगे और उसके जरिए कई DeFi प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट कमा पाएंगे। NFT लेंडिंग की बदौलत NFT ओनर्स अपने डिजिटल एसेट को बिना बेचे उससे पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। और क्योंकि एवरग्रो NFT मार्केटप्लेस BNB चेन पर है तो उन्हें इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद मार्केटप्लेसेस पर चार्ज की जा रही गैस फीस के मुकाबले यहाँ काफी कम गैस फीस चुकानी होगी। सितंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद अब तक एवरग्रो कॉइन ने अपने होल्डर्स को ओवर $35.5 मिलियन चुकाए हैं। ऑल्दो ओपनसी के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, पर यू नेवर नो कब ये मिलियंस बिलियंस में बदल जाए। सो कीप एन आई आउट फॉर एवरग्रो कॉइन NFT मार्केटप्लेस। और चलिए इस लिस्ट में अगला नाम है रेडिबल का। शुरुआती दिनों में रेडिबल ने मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम में ओपनसी को कई बार कड़ी मात दी, लेकिन 2021 में आए NFT बूम की बाढ़ को रेडिबल संभाल नहीं पाया। खैर, हाल फिलहाल में ओपनसी पर छाए काले बादलों का फायदा रेडिबल ने खूब उठाया। एक से बढ़कर एक यूटिलिटीज ऑफर करके रेडिबल ने साबित कर दिया कि ओपनसी को सबसे बड़ा खतरा रेडिबल से ही है। हाल ही में रेडिबल ने रारी नाम से अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च करके एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है, क्योंकि ओपनसी अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। और इस लिस्ट में 5वां नाम है जोरा। ओपनसी के कंपेटिटर्स में एक नाम जोरा का भी है। अब आप कहेंगे जोरा ये कौन सी NFT मार्केटप्लेस है, इसका नाम तो कभी नहीं सुना। जी हाँ, इस मार्केटप्लेस के ज्यादा चर्चे नहीं हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही डैपरैडर की टॉप 25 मार्केटप्लेस बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन कुछ वजनदार NFTs हैं इस परमिशनलेस ऑन चेन प्लेटफॉर्म की झोली में। आप जानकर हैरान होंगे कि प्लीजर डाओ ने $4 मिलियन में ओरिजिनल डोज मीम NFT जोरा पर ही मिंट की थी। जोरा के कई फायदे हैं। एक तो जीरो फी फॉर लिस्टिंग, बाइंग और सेलिंग, और उससे बड़ा फायदा आर्टिस्ट अपने आर्ट का प्राइस खुद चुन सकते हैं और आर्ट रीसेल पर रॉयल्टीज भी मिलती है। बेशक ओपनसी ट्रेड और वॉल्यूम के मामले में लार्जेस्ट NFT मार्केटप्लेस है, लेकिन ओपनसी के फास्ट एक्सपेंशन का खामियाजा उसकी सिक्योरिटी को उठाना पड़ा। अगर जल्द ओपनसी ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद एरर्स को दूर नहीं किया तो उसका नंबर 1 का ताज छिनते देर नहीं लगेगी। होप यू लाइक द स्टोरी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मी संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीव्हीच्या या अजब गजब दुनियेत आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत, जे थेट त्या क्रिप्टो करन्सी बाबत आहे जी तुम्हाला, मला आणि अगदी संपूर्ण जगाला माहित आहे। ती म्हणजे बिटकॉइन क्रिप्टो करन्सी, ज्याला डिजिटल गोल्ड सुद्धा म्हटलं जातं। पण या बिटकॉइनचे मूळ क्रिएटर नेमकं कोण असू शकेल याची उत्सुकता नक्कीच तुम्हाला लागली असणार। मला एक सांगा, तुम्ही कधी सातोशी नाकामोटो बाबत ऐकलाय का? आपल्यापैकी बहुतेक जणांना सातोशी नाकामोटो बद्दल माहीतच असेल, पण काही जणांना सातोशी नाकामोटो हे काय आहे याबद्दल माहिती नसणार। मी सांगतो, सातोशी नाकामोटो हेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत। पण सातोशी नाकामोटोच्या मागे नक्की तो कोण व्यक्ती आहे ज्याने सातोशी नाकामोटो या नावाच्या माध्यमातून जगाला बिटकॉइनचे क्रेज लावले आहे? मित्रांनो, सातोशी नाकामोटो या नावाच्या पाठी खूप मोठा झोल आहे। जगातला सर्वात मोठा क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनच्या व्हाईट पेपरच्या अनुसार सातोशी नाकामोटो हे बिटकॉइनच्या क्रिएटरचे नाव आहे।
परंतु या नावाच्या पाठीमागे असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा इतिहास हा आजही जगातील टॉप मोस्ट मिस्ट्री आहे. अजूनही कोणाला माहित नाहीये की सातोशी नाकामोटो हे एका व्यक्तीचं नाव आहे की एका ग्रुप ऑफ युजर्सचे नाव आहे. 21व्या शतकाच्या या टेक्नॉलॉजीच्या दुनियेत स्वतःच्या आयडेंटिटीला सिक्रेट ठेवणं ही काही साधी गोष्ट नाहीये. सातोशी नाकामोटो या नावामुळे लोकांमध्ये हा संभ्रम होता की हे नाव जॅपनीज असू शकतं, पण त्यांच्या रायटिंगमध्ये इंग्लिशचे कमांड पाहून लोकांना वाटलं ते जॅपनीज नसून एक नेटिव्ह इंग्लिश स्पीकिंग व्यक्ती असणार. जगभरातील संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर सातोशी नाकामोटो हे नाव अखेरीस फ्लोरिडाच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात पोहोचलंय. कारवाई सुद्धा झाली आणि अमेरिकन कोर्टानं डिसिजन सुद्धा दिलं आणि अखेरीस जगाच्या समोर पहिल्यांदा सातोशी नाकामोटोच्या पाठीमागे असलेला मिस्टेरियस चेहरा हा जगाच्या समोर आलाय. पण या केस नंतर बिटकॉइनच्या रिअल क्रिएटरची मिस्ट्री सॉल्व्ह झाली की नाही हे जाणून घेण्यासाठी तयार व्हा. या केसमध्ये एका बाजूला आहे ऑस्ट्रेलियाचे कम्प्युटर सायंटिस्ट क्रेग राईट, ज्यांनी बिटकॉइनचे सोल क्रिएटर सातोशी नाकामोटो असल्याचा क्लेम केलाय, आणि दुसऱ्या बाजूला आहे आयरा क्लेमन, ज्यांनी दावा केलाय की 2013 मध्ये स्वर्गवासी झालेले त्यांचे मोठे बंधू डेव्हिड क्लेमन, जे एक कम्प्युटर सिक्युरिटी एक्सपर्ट सुद्धा होते, त्यांनी क्रेग राईट सोबत मिळून बिटकॉइनला क्रिएट आणि माइन केलं होतं. म्हणजेच डेव्हिडच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबानं क्रेग राईटच्या 1.1 मिलियन बिटकॉइन्सवर 50% क्लेम केला होता, ज्याची अंदाजे मार्केट व्हॅल्यू $57 बिलियन म्हणजेच $5,700 करोड एवढी आहे. या डॉलर्सच्या आजच्या प्राइसनुसार कन्वर्ट केलं तर एवढे शून्य ऍड होतील की अक्षरशः कॅल्क्युलेटर छोटं पडेल. आजच्या आर्थिक तंगीमुळे आपण फुकटचे 5 रुपये पण सोडत नाही, मग क्रेग राईट $5,700 करोड कसे सोडतील? त्यांनी कोर्टात स्पष्टपणे सांगितलं की मीच बिटकॉइनचा सोल क्रिएटर आहे, पण असे कोणतेच कागदपत्र नाही आहेत की जे प्रूव्ह करू शकेल की त्यांची आणि डेव्हिड सोबत कोणत्याही प्रकारची पार्टनरशिप प्रूव्ह करू शकेल. कोर्टानं सुद्धा या केसमध्ये जरा वेगळ्या पद्धतीने जजमेंट दिलं. पहिलं कोर्टाने क्लेमन फॅमिलीद्वारा क्रेगवर लावलेले सर्व क्लेम्स रिजेक्ट केले. सोबत कोर्टानं हेही म्हटलं की क्रेग राईट सातोशी नाकामोटो आहे की नाही याचे कोर्टाला काहीही लेणं देणं नाहीये. परंतु कोर्टाने क्लेमन फॅमिलीला निराश देखील केलं नाही. फ्लोरिडाच्या ज्युरीने क्रेग राईटवर अवैधपणे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी घेतल्यामुळे $100 मिलियन म्हणजेच $10 करोड दंड ठोठावला आणि हा आदेश सुद्धा दिला की ही अमाऊंट क्रेग राईट आणि स्वर्गीय डेव्हिड क्लेमन द्वारा फाउंडेड कंपनी WNK इन्फो डिफेन्स रिसर्च LLC थ्रू क्लेमन फॅमिलीला दिली जावी. पण मित्रांनो, $5,700 करोड मधून क्रेग राईटला फक्त $10 करोड देणं हे त्याच्यासाठी जड नव्हतं. इथे क्रेग राईटची तर लॉटरीच लागली. त्यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाला आपली जीतच मानली. त्यांना वाटलं की कोर्टाने इनडायरेक्टली डिक्लेअर केलं की तेच बिटकॉइनचे वन अँड ओनली क्रिएटर आहेत. क्लेम हा आयरा क्लेमनने केला होता, म्हणून त्याचे भाऊ डेव्हिड क्लेमन हेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत याला प्रूव्ह करण्याचे बर्डन ही त्यांच्यावर होतं. पण अखेरीस ते कोर्टात प्रूव्ह करू शकले नाहीत. हरता हरता क्लेमन फॅमिलीचे वकील फ्रीडमॅनने ज्युरीला सांगितलं की डेव्हिडच्या मृत्यूपूर्वी क्रेग राईटने त्यांच्यासमोर कबूल केलं होतं की त्यांनी आणि डेव्हिड क्लेमन या दोघांनी एकत्र मिळून बिटकॉइनला क्रिएट आणि मिंट केलं होतं. डेव्हिडच्या मृत्यूनंतर क्रेग राईटने खोटं बोलून फ्रॉड करून क्लेमनच्या फॅमिलीला त्यांचा हक्क हा द्यायचा नव्हता. जर का क्रेग राईटला कोर्टाने सांगितलं असतं की त्याने प्रूव्ह करून दाखवा की तोच सातोशी नाकामोटो आहे तर गोष्ट थोडी वेगळी असली असती. परंतु या कोर्ट केस नंतर सुद्धा काही लोकांना वाटतंय की क्रेग राईट हा एक नंबरचा फेकूचंद आहे, म्हणजेच बिटकॉइनचा क्रिएटर सातोशी नाकामोटो नाही आहे. फ्लोरिडा कोर्टाचे निर्णय भले क्रेग राईटच्या बाजूने आला असेल, परंतु जनतेच्या कोर्टात क्रेग राईटला फेकूचंदच मानलं जात आहे. लोकांना अजूनही असंच वाटतंय की रिअल सातोशी नाकामोटोची आयडेंटिटी अजूनही एक मिस्ट्रीज आहे. दरम्यान हल्लीच टेस्लाचे क्रिएटर बिलियनियर एलॉन मस्क यांनी या मिस्ट्रीमध्ये स्वतःची एक थिअरी ऍड केली आहे. त्यांच्यामध्ये क्रिप्टोग्राफर आणि कम्प्युटर सायंटिस्ट निक झॅबोच सातोशी नाकामोटो म्हणजेच बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत. कारण बिटकॉइनची व्हाईट पेपरची रायटिंग आणि निक झॅबोच्या रायटिंगमध्ये खूप सिमिलॅरिटी आहे. पण ऑफिशियली निक झॅबोने सातोशी नाकामोटो होण्याचा क्लेम हा डिनाय केलेला आहे. मुळात आता सातोशी नाकामोटोची मिस्ट्री कोण आणि कधी सॉल्व्ह होणार कुणास ठाऊक. असो, पण अशाच इंटरेस्टिंग स्टोरीज घेऊन मी पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही.
आज मी तुमच्याशी पोल्काडॉट बद्दल बोलणार आहे. पोल्काडॉट अनेक पोस्ट बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सीज प्रमाणे टोकन आहे जे एक्सचेंजेस आणि डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल द्वारे खरेदी किंवा विकले जाऊ शकते. पोल्काडॉट गुंतवणूकदारांकडून इंटरेस्ट मिळवत आहे कारण ते अधिक इंटरॅक्टिव्ह आहे. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Moving to an upgrade, taking blockchain ahead. It's Ethereum 2.0. It's Ethereum 2.0. Yes, it's Ethereum 2.0, an upgrade to current Ethereum blockchain technology. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host and crypto dose Parvati Nirban, aka Paro. And today's episode is all about the blueprint of Serenity. Yes, it is Serenity. Serenity is the new name of the Ethereum upgrade to 2.0. Ethereum 2.0, also known as ETH2 or Serenity, is the long-awaited final upgrade to the Ethereum blockchain network. The overall goal of the ETH2 update is to increase the performance of the network. Questions like what is blockchain and why would we want to use it will eventually transform into questions like why isn't blockchain being used in this case or that case? Why so? Well, at present, the Ethereum 1.0 network is not robust enough to handle the future demand for blockchain-based technology. Problems with scalability and usability prevent Ethereum from being completely viable alternative. Imagine going to a local marketplace in a regular day scenario. You take a considerable time to do shopping from local vendors, right? Now imagine if it rains at peak rush hours. Then it's almost impossible to finish shopping in the same time, and also it is very difficult to get as many things due to the traffic being jammed, etc, etc. Same thing happened with CryptoKitties app, which was launched on Ethereum 1.0. The transaction fees on the network was initially low, but as the application gained popularity and became a wild success, it became too expensive for people to continue using the app. It became like a market being jammed due to rain, clogged and whatnot. CryptoKitties was an experimental app built on the Ethereum network and launched in 2017. This app allowed users to create and trade unique digital kittens. Within its first week after launching, CryptoKitties went viral and clogged the Ethereum network with a huge number of transactions. And the transaction fees to send some CryptoKitties hit a whopping 6 figures. Can you imagine spending lakhs of rupees just to transfer a digital cat on a computer network? That's just insane, right? The current Ethereum platform manages this transaction fees to a low amount. But about 15 transactions per second being processed is not enough. So, with the Ethereum 2.0 update, it would potentially process tens of thousands of transactions per second. Really, that's just like dream come true. So, how is Ethereum upgrade will land us to such a high number of transactions? Well, answer to that question is Beacon Chain. Woo. Well, this means something's gonna have a lighthouse effect, which means Beacon Chain will have a lighthouse effect. Well, we were talking about the number of transactions. So, which means the number of transactions per second will have a lighthouse effect? That is going to be amazing because it's going to solve so many problems regarding speed with which current Ethereum platform or rather the blockchain technology is working. So what exactly is this Beacon Chain? Let's try and understand it. The Beacon Chain is basically the phase 0 stage of Ethereum 2.0 and has connection with existing Ethereum 1.0 blockchain network, which means
even though Beacon Chain is an entirely new and separate chain that is being developed, it still operates with the same Ethereum ecosystem and acts as a bridge that will allow the transfers of Ether and other digital assets from 1.0 network to 2.0. To simply understand this, it's like how you would do a new iOS upgrade on your iPhone. Yep, it is going to be as simple as that. Amazing, right? It is going to be an amazing upgrade. And in the next episode, we will get into the details of how exactly the Beacon Chain works, which is the algorithm it is being built on. For now, I am your host Parvati Nirban signing off. Gonna say goodbye, take care, and keep enriching yourself with crypto awareness. See you very soon. Till then, keep watching Crypto TV. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्ही मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आजकाल जिथे बघावं तिथे सध्या एनएफटीची चर्चा सुरू आहे. ज्याला बघावं तो एनएफटी बनवतोय आणि त्याची खरेदी विक्री सुद्धा करतोय. खरं तर सेलिब्रिटी यातून करोडोंची कमाई करतायत. जर तुम्ही असा विचार करत असाल की एनएफटी बनवणं हे काही रॉकेट सायन्स वगैरे आहे, त्यातून कमाई करणं खूप अवघड आहे, खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, खूप टेक्निकल आहे, तर मित्रांनो रिलॅक्स व्हा, काळजी करू नका. यापैकी असं काहीच नाहीये. यासाठी फक्त थोडं टॅलेंट हवं, थोडं ज्ञान, थोडं नशीब सुद्धा गरजेचं आहे. नशीब यासाठी की जेणेकरून तुमचे आर्ट हे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल. चला आता आपण जास्त वेळ न घेता मी तुम्हाला थेट एनएफटी बनवण्याचा अगदी सोपा मार्ग सांगतो. स्टेप नंबर 1. सर्वप्रथम तुम्हाला एनएफटी नेमकी कोणत्या वस्तूची बनवायची आहे ते ठरवायचं आहे. आणि ते काहीही असू शकतं. कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्युझिक, संग्रहित केलेले व्हिडिओ गेम्स, कोणते मीम्स, गिफ्ट, अहो अगदी ट्वीट सुद्धा. बस एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की ते रेअर आणि युनिक असणं गरजेचं आहे. कारण यामुळे तुम्हाला तुमच्या एनएफटीची किंमत मिळेल आणि हो, तुमच्याकडे त्याचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट सुद्धा असणं गरजेचं आहे. अन्यथा तुम्ही कायदेशीर अडचणी सुद्धा येऊ शकता. स्टेप नंबर 2. एकदा का तुमची डिजिटल ॲसेट निवडली की मग त्यास एनएफटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला ठरवावं लागेल की तुमच्या एनएफटीसाठी तुम्हाला कोणते ब्लॉकचेन वापरायचे आहे. सध्या एनएफटी आर्टिस्ट आणि क्रिएटर्स मध्ये इथेरियम हे सर्वात लोकप्रिय ब्लॉकचेन आहे. या व्यतिरिक्त जसे बाकी पॉप्युलर पर्याय सुद्धा आहेत, जसे की टेझॉस, पोल्काडॉट, कॉस्मॉस आणि बायनान्स स्मार्ट चेन. स्टेप नंबर 3. जर तुमच्याकडे डिजिटल वॉलेट नसेल तर तुम्हाला तुमचा एनएफटी तयार करण्यासाठी अगोदर डिजिटल वॉलेट तयार करावं लागेल. कारण की तुमच्या इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुम्हाला क्रिप्टो करन्सीची आवश्यकता असणार आहे. आणि या वॉलेटद्वारे तुम्ही तुमच्या डिजिटल ॲसेटला ॲक्सेस करू शकाल. कॉइनबेस, वझिरेक्स, झेपपे ही काही लोकप्रिय अशी भारतीय एनएफटी वॉलेट आहेत. तर दुसरीकडे मेटामास्क, मॅथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट ही जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी वॉलेट्स आहेत. मुळात तुमच्या वॉलेट्समध्ये काही क्रिप्टो करन्सी असणं गरजेचं आहे. बहुतेक एनएफटी प्लॅटफॉर्म हे इथर नावाच्या क्रिप्टो करन्सी स्वीकारतात, जी इथेरियम ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्मची क्रिप्टो करन्सी आहे. तुमच्याकडे इतर कोणतीही क्रिप्टो करन्सी असल्यास ती तुमच्या डिजिटल वॉलेटशी कनेक्ट करा की जेणेकरून तुम्ही एनएफटी तयार करण्यासाठी आणि त्याची विक्री करण्यासाठी वापरू शकाल. स्टेप नंबर 4. एकदा का जर तुमचे डिजिटल वॉलेट बनले आणि तुमच्याकडे क्रिप्टो करन्सी देखील आहे, तर आता तुम्ही एनएफटी तयार करण्यासाठी आणि त्याची विक्री करण्यासाठी पूर्णपणे तयार झालात. बस आता एक डिटेल रिसर्च करून सर्वोत्तम अशी एनएफटी मार्केटप्लेस निवडा. वझिरेक्स, कॉलेजियन, कॅलामिंट, बियॉन्ड लाईफ.क्लब सारखे अनेक मार्केट प्लेसेस सध्या भारतात उपलब्ध आहेत, ज्यावर गॅस फीज ही जास्त लागत नाही. वझिरेक्स पर ट्रान्झॅक्शन $1 गॅस फी चार्ज करतं, तर कॉलेजियन हे 5% गॅस फी चार्ज करतं. तर तेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वात लोकप्रिय असणारं मार्केट प्लेस ओपन सीची गॅस फी ही $100 ते $150 घरात आहे. ओपन सी शिवाय एक्झी, लार्वा लॅब्स, क्रिप्टोपंक्स, NBA टॉप शॉट, रॅरिबल ही काही सर्वोत्तम मार्केट प्लेस आहेत. परंतु तुम्हाला तुमच्या एनएफटीच्या हिशोबानं
मार्केट प्लेस निवडावं लागेल. उदाहरणार्थ गेम NFT साठी एक्झी मार्केट प्लेस आहे, तर बास्केटबॉल फोकस NFT साठी NBA टॉप शॉट नावाचं मार्केट प्लेस आहे. हे लक्षात घेणं देखील महत्त्वाचं आहे की काही मार्केट प्लेसची आपली क्रिप्टो करन्सी सुद्धा असते आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर जे रेअर असतात त्याचाच वापर होत असतो. NFT मार्केट प्लेस निवडल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या डिजिटल वॉलेटशी जुडणं हे आवश्यक असतं की जेणेकरून तुम्ही NFT मिंटिंगसाठी आवश्यक असे शुल्क भरू शकाल. स्टेप नंबर 5. आता तुम्ही तुमच्या NFTला अपलोड करण्यासाठी पूर्णपणे तयार झालात. तुम्ही सिलेक्ट केलेल्या NFTला आता मार्केट प्लेस हे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप गाईड करेल की NFT ही कशा प्रकारे अपलोड करायची आहे आणि या प्रोसेस मार्फत तुम्ही तुमची NFT फाईल म्हणजेच PNG, GIF, MP3 यापैकी कोणतीही किंवा अजून अशी कोणती फाईल टाईप जी त्यास मार्केटेबल NFT मध्ये कन्वर्ट करू शकेल. आता सर्वात शेवटची स्टेप नंबर 6. तुमच्या NFTला मिंट करण्यासाठी या फायनल स्टेपवर तुम्हाला फक्त हे डिसाईड करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या NFTला कशा प्रकारे मॉनिटाईज कराल. यासाठी सुद्धा तुमच्याकडे 3 ऑप्शन आहेत. एक फिक्स प्राइस, तुम्ही एक फिक्स प्राइस डिसाईड करू शकता. यामध्ये जो पहिला व्यक्ती ती प्राइस देण्यासाठी तयार होईल तोच पहिला बायर बनेल. सेकंड आहे टाइम ऑप्शन. टाइम ऑप्शनच्या माध्यमातून ऑडियन्सला बीट करण्यासाठी थोडा वेळ मिळतो की जेणेकरून ते डिसाईड करू शकतात की त्याला नेमकं किती अमाऊंटवर बीट करायचं आहे. आणि 3 नंबर अनलिमिटेड ऑप्शन. या प्रकारच्या ऑप्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारची टाइम लिमिट नसते. जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ऑप्शनला एंड करू शकता. मित्रांनो, काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे की जसं आपल्या NFTची मिनिमम प्राइस सेट करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात लॉस होणार नाही. सोबत त्यावर रॉयल्टी ही जरूर ठेवा की जेणेकरून तुमची NFT कोणत्याही सेकंडरी मार्केटमध्ये रिसेल झाली तर त्याचा फायदा हा तुम्हाला मिळतच राहील. मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्हाला माहीतच पडलं असेल की NFT ही कशा प्रकारे क्रिएट आणि सेल करता येते. NFT बाय करण्याची प्रोसेस सुद्धा सिमिलरच आहे. त्यासाठी सर्वात पहिलं एक डिजिटल वॉलेट बनवा, नंतर त्या वॉलेटला फंडिंग करा, त्यानंतर बेस्ट मार्केट प्लेसची निवड करा, वॉलेटला त्या मार्केट प्लेस सोबत कनेक्ट करा, त्यानंतर जी NFT तुम्हाला विकत घ्यायची आहे त्यासाठी बीड सबमिट करा आणि बस आता तुम्ही तुमची आवडती NFT खरेदी करू शकता. मित्रांनो, मला विश्वास आहे की तुम्हाला आता NFT बद्दल प्रत्येक गोष्ट माहिती पडली असेल. मग वाट कसली बघताय? आपले आर्ट क्रिएट करा आणि बिंदास उतरा NFTच्या मार्केटमध्ये. कुणास ठाऊक बिग प्रमाणे तुमची NFT देखील करोडो रुपये कमवेल. क्रिप्टोच्या दुनियेतील अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओज अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी मी म्हणजे संदीप कसालकरच्या स्टोरीज आवर्जून पहा. आजची स्टोरी कशी वाटली याच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर द्या. तोपर्यंत मी संदीप कसालकर तुर्तास इथेच थांबतो. पाहत रहा क्रिप्टो TV. वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ. देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी माइंड.
Today, we're extremely happy to have with us Mr. Ajay Pathak. Well, tell me something. There's so much buzz in the air about this blockchain technology. What is this technology all about? If you have a bird's eye view of what blockchain is, it looks very technical. It is trying to rewrite the history by the way we are writing our ledgers. And that is what blockchain is actually doing at this point of time. क्रिप्टो करेंसी आज के दौर में दुनिया भर में मौजूद इन्वेस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हाल के समय में इसका इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल से उबरने के लिए भी किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो से जुड़े कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल और इम्पैक्टफुल रियल लाइफ इंसिडेंट्स और मूवमेंट की जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 20 साल का एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी जिसे रशियन इन्वेजन के चलते महज एक यूएसबी ड्राइव लेकर, जिसमें सिर्फ $2000 के बिटकॉइन थे, अपना देश छोड़ने का कदम उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, उसी की तरह कई लोगों को जब अपना देश इमरजेंसी में छोड़ना पड़ा, तब पेन ड्राइव और कोल्ड वॉलेट में स्टोर्ड क्रिप्टो ही उनके लिए उम्मीद का सहारा बने। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है अफगानिस्तान की रहने वाली एक टेक कंपनी की सीईओ रोया महबूब का। पिछले साल तालिबान द्वारा देश पर कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई थी रोया, वो भी ऐसे समय पर जब उनकी कंपनी में काम करने वाली अफगानी महिलाओं के पास ना तो बाहर जाकर काम करने का अधिकार था और ना ही बैंक अकाउंट का एक्सेस। ऐसे में इस मुश्किल की घड़ी में इन अफगानी महिलाओं का सहारा बना क्रिप्टो। रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन में तनख्वाह देकर उनकी मदद की। क्रिप्टो का रियल लाइफ ऑल्टरिंग यूज केस रशियन इन्वेजन के टाइम पर पूरी दुनिया को समझ आया, जब चारों तरफ वॉर का माहौल है, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स बंद हैं, एटीएम्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं, लोकल करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट डाउन है, ट्रेडिशनल और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स डाउन है। तब यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया भर के लोगों ने क्रिप्टो में डोनेशंस भेजी। According to Digital Transformation Deputy Ministry of Ukraine, Mr. Alex Bornyakov, यूक्रेन को अब तक करीब $100 मिलियन की क्रिप्टो डोनेशन मिल चुकी है, जिसका उपयोग वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइट विजन गॉगल्स, फूड सप्लाई और हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। यूक्रेनियन गवर्नमेंट बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, पोल्काडॉट और डोजकॉइन को बतौर क्रिप्टो डोनेशंस अपना रही है, जबकि कुछ नॉन प्रॉफिट और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कम बैक अलाइव, यूक्रेन डाओ, एंडाउमेंट और यहाँ तक कि कीव इंडिपेंडेंट भी क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही है। लोग क्रिप्टो डोनेशंस का उपयोग वॉर टॉर्न कंट्रीज और नेचुरल कैलामिटी से पीड़ित लोगों की मदद करने के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोरोना पैंडेमिक जैसी मुश्किल की घड़ी में अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो अर्थ की 6% सरफेस को कवर करने वाले ब्राजीलियन अमेज़न जंगल को डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर से बचाने के लिए 1987 में स्थापित द रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन ने क्रिप्टो कम्युनिटी की मदद से $100 मिलियन का क्रिप्टो डोनेशन एक्वायर किया, जिसका उपयोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेव द चिल्ड्रन दुनिया का पहला इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने फिलीपींस में टाइफून हयान से आई तबाही के बाद 2013 से बिटकॉइन को डोनेशन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इस तरह से पिछले साल इस ऑर्गेनाइजेशन ने #HoldHope कैंपेन के जरिए $5 मिलियन से ज्यादा डोनेशंस हासिल किए, जिसका उपयोग यूक्रेन के वॉर टॉर्न इलाके के बच्चों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक के दौरान इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने $1.5 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की, जिसमें कोविड-19 रिलीफ फंड के रूप में इंडिया को भी $1 बिलियन का डोनेशन मिला। लेकिन जहां माया यानी क्रिप्टो है, वहां माया जाल भला कैसे ना हो। रिसेंटली ऐसा भी कई केसेस में सामने आया है, जहां स्कैमर्स ने फेक क्रिप्टो डोनेशंस, वेबसाइट और एडवर्टाइजिंग के जरिए यूक्रेन के नाम पर लोगों को लूटा। इतना ही नहीं, पैंडेमिक के दौरान भी डार्क वेब पर कई फेक कोविड-19 चैरिटीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घोटाला किया,
सो किसी भी चैरिटी या एनजीओ को क्रिप्टो डोनेट करने से पहले उस एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स थरोली चेक जरूर करें। बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग यूएसए क्रिप्टो में डोनेशंस देने पर डोनर्स को टैक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्रिप्टो डोनेशंस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन होप इन फ्यूचर इंडिया में फिएट करेंसी की तरह क्रिप्टो डोनेशंस में भी टैक्स इंसेंटिव मिले ताकि और ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स क्रिप्टो डोनेशंस के थ्रू जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने आए और कदम बढ़ाए। लेट्स होप क्रिप्टो अडॉप्शन के साथ साथ क्रिप्टो डोनेशन का रेट भी बढ़ता रहे और क्रिप्टो का उपयोग सिर्फ बेटर बैंक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेटर इंक्लूसिव सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए भी किया जाए। आई होप हमारी स्पेशल स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरीज देखना ना भूलिए। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। साल की उम्र में आप और हमने क्या किया होगा? खेलकूद, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सी शरारतें। जो मुकाम हम 14 साल की रिगरस स्कूलिंग, फिर कॉलेज और मास्टर्स में रट्टाफिकेशन और फाइनली जॉब के स्ट्रेस के बाद भी हासिल नहीं कर पाते, वो कामयाबी लंदन में रहने वाले बेन्यामिन अहमद ने महज 12 साल की उम्र में खुद अकेले अपने दम पर अचीव की है। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अब क्रिप्टो स्कैमर्स का जाल भारत समेत राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक गिरोह जो क्रिप्टो के माध्यम से स्कैम कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। ये गिरोह लोगों को ऑनलाइन लोन्स का वादा करता है और क्रिप्टो में निवेश करने के लिए वो धन का उपयोग करता है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 4 लोगों को एक गिरोह को ऑनलाइन लोन की सुविधा के बहाने लोगों को धोखा देने और विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त फंड का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान दीपक पटवा, सुनील कुमार खटीक, देव किशन और सुरेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस मामले की शिकायत पीड़ितों में से एक ने की थी, जिसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था, लाइट योर अप्लाइड लोन इज अप्रूव्ड, यू कैन चूज लोन लिमिट रेंज फ्रॉम ₹2 लाख, प्लीज लॉग इन टू ऐप। मतलब आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आप 2 लाख रुपए तक की लोन लिमिट चुन सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। पीड़ित व्यक्ति ने इस गिरोह के झांसे में आकर लिंक को ओपन कर अपनी बेसिक डिटेल्स अपलोड की। इसके तुरंत बाद उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें उन्हें लोन अमाउंट का 5% एडवांस रूप से जमा करने के लिए कहा गया, जो कि कंपनी के नियमों के अनुसार बाद में वापस कर दिया जाएगा, ऐसे कहा गया। 3 ट्रांजैक्शंस में कुल 40,000 रुपए जमा करने के बाद उसने व्हाट्सएप पर जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चलता है कि यह अमाउंट मध्य प्रदेश के नीमच जिले के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। आगे ये भी पता चला कि 2 दिनों के भीतर कथित खाते में 75 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर कर दिए गए थे और उस पैसों का उपयोग करके विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस अपराध में कुछ सस्पेक्ट्स को चिन्हित किया गया और उन पर तकनीकी निगरानी की गई। इसके बाद वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सक्रिय पाए गए। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में छापेमारी की गई और तकनीकी विश्लेषण के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर चारों आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यूट्यूब के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी का विचार आया था। वे टेलीग्राम ऐप पर कुछ चाइनीज नागरिकों के संपर्क में आए जो ऑनलाइन लोन की सुविधा के बहाने निर्दोष लोगों को ठगते थे। वे बैंक अकाउंट्स की खरीद करते थे और अकाउंट्स ओनर्स को 1.5% का भुगतान करके रजिस्टर सिम कार्ड और आगे टेलीग्राम के माध्यम से धोखा देने वालों को प्रदान करते थे।
गहरी जांच से पता चला कि आरोपी ने यूपीआई के माध्यम से अलग अलग बैंक खातों में ठगी का पैसा प्राप्त किया और फिर बाइनांस क्रिप्टो एक्सचेंज पर उस पैसे से USDT खरीदकर इसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी दीपक पटवा को USDT में कमीशन मिलता था और बाद में हवाला के जरिए अपने खातों में उसे रिडीम करता था। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह भी पता चला है कि कथित व्हाट्सएप नंबर का IP एड्रेस चाइना का था। उस नंबर से संवाद करने के लिए दीपक चाइनीज भाषा में प्राप्त संदेश का हिंदी में अनुवाद गूगल ट्रांसलेटर की मदद से करता था। अपराध में इस्तेमाल किए गए 15 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड के साथ डोंगल, लैपटॉप, टैबलेट और 20,000 रुपए का अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और पीड़ितों की पहचान की जा रही है। तो दोस्तों, दुनिया में जितने प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज है उतने प्रकार के क्रिप्टो क्राइम्स और स्कैम्स हो रहे हैं और दुर्भाग्य से आगे भी होते रहेंगे। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे स्कैमस्टर्स को तो पकड़कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन बेहतर तो ये होगा कि ऐसे स्कैमस्टर्स के जाल में कोई भी विक्टिम ना फंसे और ये बिल्कुल मुमकिन है। इसे आप और हम मिलकर पॉसिबल बना सकते हैं। इस डेली ऑनलाइन लोन स्कैम के सारे विक्टिम इस स्कैम से बच सकते थे अगर वो फॉरवर्डेड मैसेज में आई लिंक पर क्लिक करके फेक लोन पाने के झांसे में न आते। तो मैंने क्रिप्टो क्राइम्स के कई एपिसोड्स में कई बार कहा है और आज भी दोहराऊंगा कि नो मैटर व्हाट, फॉरवर्डेड मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, ईमेल्स, टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में आई हुई लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपके क्लिक करने से कोई शातिर हैकर आपका अकाउंट जीरो कर सकता है या फिर इस केस की तरह आपको फेक लोन देने के प्रलोभन में फंसाकर आपसे पैसे निकलवा सकता है। अगर आप भी अपने ऑनलाइन बिहेवियर में जैसे मैंने कहा वैसे थोड़ी सावधानी बरते, स्पैम मेल्स और मैसेजेस की लिंक पर क्लिक न करें, तो बाय डिफॉल्ट आप कई क्रिप्टो स्कैम्स और क्राइम्स के विक्टिम बनने से बच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो स्कैम्स और क्राइम से जुड़ी स्टोरीज के साथ मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टो करन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे। पण क्रिप्टो करन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीने हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार।
ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे. हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल. याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल. मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन ॲक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या ॲक्सेप्टन्सला गती येणार आहे. आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदल्यात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते. एक नया स्कैम फिलहाल क्रिप्टो की दुनिया में अपने पैर पसार रहा है. इस तरह के स्कैम में ज्यादातर टेक सेवी इंडिविजुअल्स यानी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले व्यक्ति को टारगेट किया जाता है. बता दें कि इन मैलिशियस प्लेयर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कैम की टेक्निक को पिग स्लॉटरिंग के रूप में जाना जाता है. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पिछले 1 साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी. उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी. लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है.
दरअसल NFT की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस OpenSea पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी NFTs मिंट करने की कन्वीनियंस थी, लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है OpenSea और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक NFT कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, OpenSea ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग NFT टूल्स के तहत लॉन्च की गई NFTs में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। OpenSea ही नहीं, और भी कई NFT मार्केट प्लेसेस हैं जो स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि DeviantArt ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म LooksRare पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में NFT को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस NFT की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप Beeple को तो जानते ही हैं, जिनकी NFT Every Day is the First 5000 Days ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट NFT कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली Beeple के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन NFTs 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% NFT ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% NFTs को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन NFTs की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। NFT की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छूमंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स NFT प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है NFT की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो NFT फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथेबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली NFT के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथेबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस NFT के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये NFT रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlyNFT नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को-फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक JPEG इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि
काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं, तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल NFT की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथिरियम बद्दल जाणून घेऊया। इथिरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथिरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच। इथिरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे। गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत। इथिरियम हे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क आहे, ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो। इथिरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे। हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते। हे ॲप्लिकेशन इथिरियम नेटवर्कवर चालवता येतात। इथिरियम आर्किटेक्चरचे दोन पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी आणि इथिरियम ब्लॉकचेन। इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटेरिन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते। तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला। ब्युटेरिनला गणितात रस आहे। त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते। इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाराशिवाय। हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे, जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात। इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत। वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच। उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो। इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात। इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात
आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात, कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है. आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी. हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है, राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है. बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है. अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस. यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा. अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए. रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो. इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला. इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है. थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है. वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम. अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस. ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है. इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है. एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा. इतना ही नहीं, इथीरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे. इथीरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी. इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है. 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथीरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको. हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथीरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है.
वेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे, अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं, हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you
More crazy coins with Kanav. Welcome to the world of crypto. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। माइंड। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This result